हेलो गाइस व्हाट्स अप देयर वेलकम टू आवर चैनल फुटबॉल फैंटेसी और आज प्रीमियर लीग रिटर्न हो रहा है एंड अच्छा लग रहा है टू वॉच प्रीमियर लीग गेम्स बैक एंड इंटरेस्टिंग गेम्स वी सॉ कपल ऑफ गेम्स earlier today and interesting results. So, kuch very predictable ones, some of them not so predictable, but yes, the real two games, the two important games start today, start now, in 15 minutes, Liverpool versus Aston Villa at Villa Park, and later we have the late night kickoff between Arsenal and West Ham. So, interesting games. Mshe is here. Hola says Mshe. Hola, my friend. Thank you for joining the stream. And we're just about 15 minutes away from the game to begin. Let's quickly run through the lineup. Lineup to run kar dete hain. Aston Villa with an interesting 4-4-2. Seems Watkins. Hold on. I think there's some change here. Yeah. So it's Watkins and Bundia as two upfront strikers. The back four is Digne, Mings, Konsa, and Young. Goalkeeper is also in the midfield is four-man midfield. Luis Kamara occupying the central positions, and McGinn and Leon Bailey will be on the wings. So I think that will be more or less 4-3-3. ऐसा लग रहा है मुझे. I think it will be Bailey, Watkins, and Bundia up front, and then Luis Kamara and McGinn the middle three, and then the back four. So लग तो ऐसा रहा है कि ऐसा होगा. यहाँ पे सब जगह 4-4-2 दिख रहा है, but I think more or less we have 4-4-3-3 formation. That's exactly what I feel. ब्रेंडन रॉजर्स श्रद्धांजलि स्ट्रीम, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसके बारे में बात करेंगे हम. लेस्टर सिटी हार चुकी है और एक इम्पोर्टेंट गेम एंड उनका पोजीशन प्रीमियर लीग टेबल में बहुत ही बुरा लग रहा है. इट्स नॉट लुकिंग ऑल दैट गुड. दे करंटली सिटिंग 13th, with 17 points. And I think it'll be very difficult for Rogers to continue if the results don't improve. But for now, they are 13th, with the 17 points. They had some few games, but now they've lost again a big game. But मुझे लगता है इतना जल्दी तो नहीं होगा क्योंकि श्रद्धांजलि because he's been with Leicester for a very very long time. The kickoff about to happen in 11 minutes and 44 seconds. So yes, important games and मजा तो बहुत आने वाला है. I want a Villa win today. I remember a couple of years back, Villa smashed Liverpool. But yes, never underestimate Liverpool. They are the same team that they were last season. They have injuries and suspensions, and Sadio Mane left them. But yes, they are fighting. They're fighting. They beat Man City. So don't count them out yet. You never know what Liverpool side you're expecting today. So let me brush to the Liverpool lineup. It's 4-3-3. That's the favorite formation for Jurgen Klopp. And Alisson Becker is a goalkeeper as expected. Trent Alexander-Arnold and Robertson occupying the wing-back positions. He's got Matip and Van Dijk as the centre-backs. We've got the middle three of Thiago, Fabinho, Henderson. There's experience, a lot of experience midfielder is. So expect more promising performances. And the up front is Darwin Nunes, Oxlade-Chamberlain, and Mo Salah. So it is going to be a tough game. Liverpool are going to be go out for everything because उनके पास experience है. I understand that Luis Diaz नहीं है and Firmino start नहीं कर रहा है. He's injured and they have a couple of injuries. Jota is not available till February, but yes, this is a very good side. They've got Fabio Carvalho on the bench. They've got Naby Keita. They've got Harvey Elliott. So they've got some options on the bench as well. But I think this is a strong Liverpool side. I know Chamberlain hasn't played all that many games, but then yes, the remaining all the 9 players are very experienced. They played a lot of games this season, and they know what Klopp is expecting from them in this game. Yes, it will be the first game after the international break. तो थोड़ा you know शेक डाउन दिख सकता है बट अब तक मैं अगर रिजल्ट्स देखूं तो मोस्ट ऑफ देम वेर जो हमने एक्सपेक्ट किए थे वही रिजल्ट्स है ऐसा नहीं कि कुछ रिजल्ट्स कुछ डिफिकल्ट रहे ब्रेंटफोर्ड टॉटनहम यस 2-2 draw but then they were playing at Brentford so maybe that advantage went to them and but Tottenham did fight back well 2-2 से 2-0 से 2-2 हो गया था so yes and what's up my buddy कैसा है तू हाय दिव्या, हाउ आर यू? कैसा है मेरे भाई? हाय अमशे. awesome Hello to yes all of yes our MJ is also viewers. here Yes. So, looking forward to this yes match here. And you are wearing a very interesting jersey today. Can you tell us about that, Divya?
It's one of my favorite jerseys. It's not because it belongs to a particular country or like I like the shade and the pattern and everything. The Nigerian national team jersey. Ach- Gifted to me by one of my very good friends. Especially got from UK for me. So I'll special connection to this jersey. I really like this Agreem bhai gift jersey. from UK. Agreem नहीं bhai नहीं gifted नहीं you. नहीं अग्री भाई नहीं Don Yes, Prashant, MJ. please accept my kind greetings. Yes, MJ. Your greetings are accepted gracefully. Yeah. So okay. Yes. Well, nice to know that it is a good jersey, no doubt. I mean, it's a Nigerian jersey. Yes, it's very it's very catchy. You know. So yeah. It is, All right. yes. So how like what are we talking about at this point? I see you were talking about the squad, right? About the lineups. Absolutely, yes, yes. I've, a lot of people, are saying that Liverpool may not be the same team, today, and they have been disappointing this season. There have been ups and downs, and they are not all the team they were last season. तो ऐसा बहुत लोग बोल रहे हैं, but मुझे लग रहा है if you look at the lineup, Prashant, बहुत experience in midfield में Fabinho, Hmm. Henderson, and Thiago Alcantara, and then yes, they don't have Diogo Jota, they don't have Firmino, they don't have Luis Diaz, but I think Nunes, Salah and Chamberlain look a decent front three एंड आपको बैक फोर तो उनका फेवरेट है ही तो मुझे लगता है Uh, कि लिवरपूल जीतेगा बट बहुत लोग बोल रहे हैं कि लिवरपूल कैन may or may not be able to pick all 3 points. What are your thoughts on this? well, अगर Steven Gerrard होता तो Liverpool may have picked up all 3 points, but because we no longer have Steven Gerrard at Aston Villa, maybe Uh, Liverpool will do better. So maybe Aston Villa will put up a fight here, and yeah, that is where I think a lot of the people are saying that that Aston Villa now have a chance. I think they have a decent lineup. They can cause an upset. The game is at Villa Park, so maybe they do have a chance. But it's a fresh season. It's almost like a fresh season because of the gap that the World Cup had. So I'm not really sure hmm, where this will go. But on paper, yes, of course, Liverpool are the stronger side of the two, and they should hmm, win it quite comfortably. As you mentioned कि भाई फ्रंट थ्री भी अच्छा खासा है, न्यूनेस है, सलाह है, चेम्बरलेन है, hmm, मिडफील्ड भी मस्त है एकदम, डिफेंडर्स तो उनके जाने माने हैं ही सारे. So on paper Aston Villa definitely do not look like they are winning it, but let's see. So M भाई बोलता है Almiron for Ballon d'Or. Oh yes, he's Miguel having a Almiron. fantastic season यार Very मतलब good season. the very left off before the international break, he started again. He's banged in another goal, especially after that Jack Grealish tweet. पता नहीं इसको क्या हो गया है एकदम pump up हो गया Miguel Almiron and he's banging goals left right and center and very left off before the international break he exactly started back and Newcastle are flying high. But Newcastle is the team to watch out this season. Yeah, If I look at the starting lineup, they don't have you know. Big names, huge names. They have Karian Trippier, they have Botman, they have Guimaraes, Almiron is doing well. It's an okay team, but the way they are playing, I think after Arsenal and Man City, they look the third best team right now. And I think if they go one on one with Arsenal, they might even beat them. That's how you remember they went to Etihad and got a point, which is a yes, very difficult thing to do. So you got to admire and appreciate, the manager who's been fantastic. What a recruitment it has been to get yeah, a manager of this caliber. And we all thought that Eddie Howe may not live up to the expectation, but he's yeah. proving everyone wrong. And then, and Well, again, like I said, हाँ बोल क्या बोल रहा है सॉरी, कंटिन्यू कंटिन्यू प्लीज, नहीं बोल 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 फिनिश योर थॉट. हाँ, मैं यही बोल रहा था कि मतलब हाँ यार, लाइक फॉर एडी हाउ व्हेन ही वाज रिक्रूटेड एट न्यूकासल, एवरीवन वाज लाइक के मतलब चलो बॉर्नमouth में तो ही डिड ऑल राइट, बट दिस इज अ बिग हम्म क्लब, विल ही क्लिक अगेन, और specifically because he is a British manager, will he be like another one of those managers who is just hyped up and doesn't actually live up to the hype? But करेक्ट for करेक्ट him, जैसे अभी फॉर एग्जांपल ग्राम पॉटर का एग्जांपल है, राइट, मेनी पीपल आर सेइंग दैट ही इज नॉट डूइंग वेरी वेल एट चेल्सी. चेल्सी उसका करेक्ट there is also a case to be made for him over there, but then again, as of now Chelsea aren't doing well, simple as that, if you just judge him on the basis of the results. So compared to that, if you see how Newcastle are doing with them, they have not exactly
It's not like they have gone all Paris Saint-Germain or Man City with their spending. They have actually still been very sensible in what they have bought, and Hmm. it's like, they just wanted to move one level up from the relegation zone. And we were expecting them. I personally was expecting them to at least be in the battle for mid-table positions, but they have gone up beyond that as well. And that is because of the manager, because of his style, because of his gameplay. So yeah, definite credit for him there. Mm, absolutely. And overall, every Newcastle player has given in their best. MCS City in for Almiron Grealish swap. Yeah, definitely. Uh, But to be very honest, Almiron will, like a player like Almiron with the type of season he is having, I won't be surprised if he's linked with Real Madrid or Barca very soon. I mean, because once any player does well, he is linked with Real Madrid or Barca. That's like a sign that हाँ भाई ये बंदा अच्छा कर रहा है. So that's my point behind saying कि he will be linked with them soon. uh, वैसे so yeah, well I can see कि the teams, the both the teams are lined up. मतलब stay ground correct. पे खड़े हैं, Mm. but we will now have to get used to the fact that there will be no national anthem played before these matches जो World Cup में हो रहा था. उससे थोड़ा आदत लगेगा. प्रीमियर लीग में तो कोई भी एंथम नहीं होता. एटलीस्ट चैंपियंस लीग में चैंपियंस लीग का एंथम होगा. सो दैट विल बी आल्सो समथिंग व्हिच वी कैन, मतलब उसको तो बहुत टाइम है. चैंपियंस लीग तो फरवरी में है. सो हाँ, सॉरी बट बारसा के पास गांड धोने के पैसे नहीं है. हाँ, लेकिन बारसा के पास गांड मराने के पैसे है. यस, ही इज एब्सोल्युटली राइट. लेकिन बारसा के पास गांड धोने के पैसे नहीं, लेकिन गांड मराने के पैसे है. इस तभी तो लेवेंडोस्की वगैरह आ गए. लेवेंडोस्की आया, रफिनिया आया, और apparently Hmm. they are seeing Frankie De Jong as a long term successor to Sergio Busquets. मतलब फ्रैंकी de Jong को पैसे अरे भाई वो अभी तक नहीं दे रहे थे. ट्विटर पे हाँ. ट्विटर पे मैनेजिंग बादशाह का पेज मत पढ़ो भाई, वो बहुत ही मतलब मॉकरी है वो पेज, कुछ भी लिखता है। एक ट्वीट में लिखते हैं कि फ्रैंकी डियोंग नहीं, राफिनिया इज द नेक्स्ट बिग थिंग इन बार्सिलोना। दूसरे ट्वीट में आता है कि बार्सिलोना प्लानिंग टू सेल राफिनिया इन समर। तो यार ये बहुत ही विचित्र विचित्र ट्वीट्स आते हैं। तो डोंट आई डोंट थिंक वी शुड बी फोकसिंग ऑन, बट यस, टॉकिंग आई एम अबाउट नॉट बारसा फॉर फोकसिंग द ऑन फर्स्ट दैट. टाइम। या मतलब तो नहीं, मैं जो आई बोल रहा था एम उसके आई हिसाब से नहीं एम बोल रहा. हाँ, ओ मुझे जो ओके ओके ये हाँ मुझे मतलब जो ये इन्फॉर्मेशन मिला, मैंने कहीं और पढ़ा था दैट दे आर अच्छा। लुकिंग एट हिम एज लॉन्ग टर्म सक्सेसर फॉर बुस्केट्स. तो इसलिए वो लोग उसको हम्म जाने नहीं देंगे. सो उसमें ये लिखा था हम्म कि एरिक टेन हाग्स परस्यूट हिट्स अनदर रोड ब्लॉक. मैं बोला ओके फाइन. कुटिन्हो के कुश्ते पूरे नहीं हुए और वो भाई अभी ब्राजील शिफ्ट हो रहा है. हे भगवान. अच्छा, वो ब्राजील Aston शिफ्ट Villa हो are रहा है. planning to sell him off. Aston Villa are planning to अरे sell him. They are अरे open रे रे. to offers for Felipe Coutinho. अरे तो भाई क्यों, क्या जेरार्ड हुआ? था तब तक था उसका। He is not maybe he's not in new managers long term success vision, so लॉन्ग टर्म maybe प्लान. हाँ, तो इसलिए लॉन्ग टर्म प्लान में नहीं होगा वो। एंड अच्छा है, अच्छा हम्म. है। आई मीन मुझे तो थोड़ा हाँ. ओवररेटेड लगता है। ही वाज गुड एट लिवरपूल हाँ. बट नेवर हाँ. क्लिक्ड एट बारसा, एंड आई थिंक ही हाँ. लॉस्ट हिज टच द प्लेयर दैट ही वाज अर्लियर। ठीक है यार, Yeah. अभी He देखते was हैं हाउ दैट doing, he प्लान्स did आउट all टू right बी। at Bayern. बायर्न में हम्म, ठीक ठाक किया, बारसा के अगेंस्ट ही ठीक था एक स्कोर किया. साल सो चैंपियंस लीग जीता, चैंपियंस लीग हाँ. जीत के आया मिडिल। हाँ. वही. मेडल्स तो सारे कलेक्ट कर लिए भाई ने. सो ही डजंट रियली हैव टू मेनी रिग्रेट्स देयर. अभी अगर ब्राजील जाना तो जा भी सकता है. सो हाँ. So I can see the new manager Unai Emery on camera. Like he was just there a while ago on camera. So उसने वही गुड इवनिंग करके भगा दिया होगा पुटकुटिन्हो को. गेम्स अबाउट अच्छा टू ये बिगिन ब्रो। फटाफट मैच शुरू होने से पहले तेरे प्रेडिक्शंस क्या लगते हैं तेरे को? व्हाट आर योर प्रेडिक्शंस, योर थॉट्स? um, I think Liverpool will win this, maybe 2-1. So 2-1 for नहीं, Liverpool. ये पॉलिटिक्स है. एमसीए से ये कहीं पॉलिटिक्स फ्री है। में ना फ्रैंकी चला जाए डियोंग अगले कई फिल्म ट्रांसफर विंडो में, ऐसे इसलिए कि अभी अभी पापा पापा लैपोर्ता। लापोर्ता ये सारे श्रेष्ठ है. हाँ मे बी.
यूनाइटेड को तो वैसे भी कोई भी बना के ज्यादा पैसे ऐड ही सकता है उन लोग से. हाय अग्रीम. Hi everyone. Hi Agremba Prashant. is Hi here. Divya. Yes. Yeah. What's up? What's up? So About to Bro, start. Match about to start of the joint gear. And Nabi just yes, when yes. they have taken the knee. yes. You know the best player is missing Ash. in today's game. You know who's the best player? Philip Coutinho. Who? Emily freaking Martinez, guys. Ah, Divo Martinez Martinez. is amazing. अर्जेंटीना के Yes. तो भी सब प्लेयर मिस ही करेंगे अभी तो टाइम नहीं है. वेंदिया है ना. Yeah. When I mean I don't think Vendia was Buendia, on But yeah. duty. Bundia was not a part of the World Cup. हाँ, yeah, he Yeah. wasn't on duty, but हाँ Vendia is there. Hi I MJ. guess मार्टिनो इसको थोड़ा टाइम दिया है. Ronaldo. ड्रिपनाल्डो. ये एमशे. मतलब हम लोग एक बार मेंशन नहीं करते अग्रीम तुमको, बट अग्रीम ऑलवेज मेंशंस ड्रिपनाल्डो. Yes, डॉन अग्रीम. Ronaldo. एमशे always mentions it. So you know And he's a very quick uh, shoot there. Hmm. हाँ. Hmm. So हाँ, yeah, the game has started. So Dibu. okay. मेसी का Hmm. हैंगओवर नहीं Messi उतरा का. अब तक. Hmm. Uh, अब कैसे so उतरेगा भाई? कैसे उतरेगा वो भी है. एंड बाय द वे गाइस, एक चीज तो है लाइक मे बी बिकॉज Hmm. हम लोग आज वी आर इन दिस एज जहाँ पे टेक्नोलॉजी इज लाइक इट इज मेकिंग द वर्ल्ड अ स्मॉलर प्लेस. बट the, I want to ask this to the two of you and Msha also and all of our viewers, of course. Okay, how did you, like any Argentina supporters, how did you feel winning this? I mean, watching this experience, watching Argentina win and watching the reaction, how it was in Argentina. Because although I'm not even Argentine, right? None of us are. But when Mhm. I saw the celebration video, there's one particular clip. There are two or three clips which are, which were viral and they were circulated on social Yeah, media, right? About the that's celebrations true. in Buenos Aires. And although like I don't follow Argentina much, of course, but I follow news, right? So news में मैंने बहुत सुना था that the kind of hardships that Argentina are facing even today on a daily basis. और वो सब के बीच में the way they celebrated this, it was like I could Yeah, actually I got goosebumps watching how they were celebrating it. So how did you that's guys true. feel about that? Like while the match is on, I would just like to hear about that from both of you. Divya, you want to say या मैं पहले बोलूं? हाँ बोले बोले आप पहले बाद में बोलता हूँ. मैं यार I mean like can I mean I just want each and every one of you to imagine, going trophyless for the last 28 years and coming in the finals every bloody year and not winning it. How does that feel? They were there in finals every year, like No, uh, no, no. I'm saying एवरी like टाइम. imagine 2014 में थे हाँ. 14, 2014 में 15, थे. 16, 2004, 2007, हाँ. ओके, वो कोपा 2007 अमेरिका का. also. कोपा Yeah, अमेरिका. 2005 कोपा अमेरिका. 2005 Confederations भी हारे थे वो लोग फाइनल अगेंस्ट ब्राजील. हारे दो लोग. Can या you imagine हाँ that? हाँ हाँ. ओ राइट राइट. वो है Imagine फुटबॉल losing फाइनल्स के seven बाद. finals. Imagine losing seven finals. How does that feel? या It feels absolutely bad, right? या But this is a आई नो. long standing victory हाँ. for Argentina. Obviously it Yeah, is a long yeah, standing victory. Yes, yeah, agree. So just before Divya answers, I would like to add to that. K, there is one of the chants that I saw. So उसमें वो लोग बोलते हैं that for all these years we lost these many finals, but finally at yeah, the Maracana we won. So that is referring to the Copa America last year. And yeah, then they are like, okay, we can see Diego blessing Lionel from the sky. Oh my God. मतलब वो लोग जो बोलते हैं ना, जिस तरह से वो लोग बोलते हैं, it is very beautiful. They are like, we can yeah, see Diego and Tota. I don't know who Tota is, but Diego and Tota blessing Messi from the sky. And this time I want a third World Cup. And now that they've got it, so yeah. that is like wait. So even in that song they mentioned like so many finals that they have lost. So yeah, Divya. Yeah, I mean, fantastic reaction. The country that loves ball, it's a religion in that country, that game itself. Yeah, Mm, And, to yeah. win it after such a long time, and, it was a, a proper, a legendary, win because last time around, Diego Maradona won it. And it's a goal for Liverpool. Liverpool have scored a It goal. is. Yes, Oh. it is Mo Salah.
Fantastic Oh free wow. kick, and then nicely done by Darwin Núñez to put it in, and then Salah had to Hmm. finish it. Fantastic goal. मेरा भी अभी तक does not what you call updated. Yeah, मेरे इसमें भी अब तक it's not there. Okay, I think now it's there. Okay, yeah, I see it. Mo Salah has scored. Yes. कॉर्नर था, Okay. कॉर्नर को क्लियर नहीं किया बराबर से, हाँ. एंड देन इट वेंट टू, हु डिड गो टू, आई थिंक इट वेंट टू Hmm. It Good went. ट्रेंट ball. हु Yeah, switched it and then he nicely to put it back in. Good He ball. put Timber it to, back into the Yeah. yeah, box, right? Yeah. fantastic, brilliant, brilliant, absolutely brilliant. Hmm. Who's that number 26 guy? Robertson. Robertson Robertson. Yeah. cross, and Salah with a tap in. Okay, So so Premier League is back, and so is Mo Salah scoring goals. Yes, yes. in the goal was interrupted by my answer. Yeah. So yeah, a country which loves football considers the game as a religion to win after such a long time, and was like last time it was won by Diego Maradona and now by Lionel Messi itself is some status. And I remember agreeing by saying it, and I've read a lot of people on Twitter saying the same thing. It was like how Sachin Tendulkar lost a World Cup in 2004 and then to win it after 7 years. Exactly the same thing has happened. So, yes, it's a beautiful feeling, and everyone is passionate about that game. The way they celebrated that victory, yes, some people thought a little bit over the top by celebrations by Emiliano Martinez, but it's okay. These things always happen when you won the World Cup. You not just won any other trophy, any small, Carabao Cup or any small trophy. It's a Yeah. World Cup, and it's an achievement. And they Hmm. all those players who performed on the pitch have made the country proud, and it's a once in a lifetime, situation. So Moment. everybody was celebrating, and if you look at that Buenos Aires Yeah. video where the entire crowd is in the middle of city, celebrating. So again, mm, a country that loves football, and it treats the game like a religion itself. So you are going to expect that kind of, when Yeah. you win the World Cup, you're going to expect that kind of stage and in the city. So I wasn't surprised, but then yes, it was brilliant. Not just the World Cup and the players, the way they played, but also the celebrations and back in Buenos Aires, how people were reacting and celebrating. So it was good. It was really good. Yeah, maybe I'm an Argentina supporter or a fan. I'm not specific. I'm not never liked them, but then yes, me and Agrimba both watched that game together. We know they deserve that victory. The way they played Yeah. together as a team, especially in that Yeah. midfield, how they were performing, Yeah. moving the ball quickly. For the first 75 minutes, they looked unbeatable. And if it weren't for Kylian Mbappe, they would have easily won that game in 90 minutes. So yeah, you Yeah. know, deserved victory, and I thought makes football much more interesting. And the next World Cup will have a lot of improvements, and it's been played in a different continent. But yes, a lot of people didn't like the World Cup, but ठीक है यार, अच्छा ending अच्छा था, and Hmm. हाँ, That was full of so surprises, though. full of It was full surprises, of surprises. of course, full of Yeah. surprises. Refereeing decisions And was poor. respectable. I think FIFA Hmm. will have to work on Hmm. that. Very poor Yeah. refereeing decisions. In fact, final maybe the first penalty which Argentina won, that wasn't a penalty. It was a poor, Hmm. decision which was not even checked by VR. So these things have to be improved because today's game also, I think Tottenham and Brentford, couple of decisions were very, horrendous by referee, Yeah. and referees just can't Yeah. get away with this, because they need to be protected. They're spoiling the entire season, not just spoiling the World Cup. Now it's just spoiling the Premier League season. A a win of 3 points can matter a lot towards the end. Maybe not for the That's true. middle table team, but for the relegation battling team, for the team that is looking to get into the Champions League or the Europa League, for the team that is looking to win the title, it any small एक ही point भी matter करता है. तो refereeing decisions Hmm. पूरा season को हिला सकते हैं. And I think the authorities have got to do something about this. ठीक है, अच्छा है, That's true. रेफरीज को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, बट यार बहुत ज्यादा ब्लंडर हो रहा है. एंड वीआर Hmm. को हम लाए थे ताकि डिसीजन इंप्रूव कर सके, बट ये तो और ही बुरे होते जा Yeah. रहे हैं. लिवरपूल अगेन Hmm. हियर with a good chance, but somehow will I get away. Hmm. हाँ, तो प्रशांत, Well, yeah. अब So thank you for that, for a very detailed answer. Actually, like you mentioned about the penalty, there were a lot of people who were like,
they were trying to trend a hashtag saying कि भाई hashtag rigged for Messi. I'm like, देखो ऐसा तो मतलब it's not fair to say that. ऐसा तो that's like Hmm. a very simplified way of saying things. I Yeah. mean, पॉलिटिक्स के हिसाब से आई मीन बोल सकते कि हाँ इसको ये फेवर मिला, वो फेवर मिला, कि ये उसके पीछे पॉलिटिक्स था, ये प्लान था, बट देन ओवरऑल सी जो गेम था वी सॉ इट एंड इट वाज जेन्युइन इनफ, सो आई डोंट थिंक इट Yeah. वाज यार दैट्स यार रियली अगर ऐसा इनकरेक्ट. रिग्ड होता, अगर ऐसा रिग्ड होता तो why did Croatia beat what do you call Brazil? Brazil had हाँ what do you call Neymar ना, तो Neymar plays for Qatar PSG. हाँ मतलब ये क्या लॉजिक हुआ यार? I don't understand this nonsense. हाँ, वो भी है एग्जैक्टली exactly. अगर उतना ही होता तो Yeah. ये Yeah. अर्जेंटीना फ्रांस के बदले ब्राजील अर्जेंटीना ही होता, बिकॉज ब्राजील Exactly. अर्जेंटीना नहीं फाइनल नहीं वुड नहीं हैव नहीं, बीन लाइक. अगर रिग यार अगर you know रिग्ड होना होता तो अगर रिग्ड होना होता तो हम्म पोर्चुगल अर्जेंटीना फाइनल होता. हाँ रोनाल्डो वर्सेस यस मेसी फाइनल एग्जैक्टली. होता, यार हाँ क्योंकि या अर्जेंटीना बोल रिग ज्यादा कर सकता स्पेक्टेटरशिप, है, रिग ज्यादा करना. व्यूअरशिप. हाँ एंड हाँ रिग्ड, एग्जैक्टली. तो रिग तो यार नहीं था, बट अर्जेंटीना यस रिग कर सकता है क्या? लॉट ऑफ डिसीजंस भाई वेंट इन वो, अर्जेंटीना's फेवर. हाँ, हाँ क्या बोल रहे हो अग्रिम भाई? हाँ, सॉरी सॉरी अग्रिम मैं क्या बोल रहा बोल हूँ रहा है? अर्जेंटीना रिग कर सकता है. Looking at the हाँ economy, do you think that country हाँ can rig what do you call a FIFA tournament? Are you kidding with me? नहीं यार, तो रिग तो नहीं था, रिग तो ये ज्यादा ज्यादा हो गया. यू कैन नॉट Yeah, टेक then अवे अ डिजर्विंगली yeah, विक्ट्री. जिस तरह से खेले वो लोग, दे वर सुपर्ब. दैट मिडफील्ड में, अगर मैं को बार बार बोल रहा था, डिपॉल, yeah, मैकेलिस्टर एंड yeah, एंडो फर्नांडिस, क्या मतलब क्या yeah. कॉम्बिनेशन था. द वे दे वर Cara, मूविंग cara, द बॉल, yeah, इट वाज यू नो क्या साइड था वो. एंड फ्रांस वर पैथेटिक, वेरी पुअर. आई इफ इट वाज नॉट फॉर एक्चुअली. किलियन एम्बापे, वो लोग 90 मिनट में जीत जाते वो लोग. हाँ द yeah, थिंग वाज के 90 मिनट्स में चलो फिर भी लाइक इनिशियली दे वर गुड, बट जो सब्स्टिट्यूशंस किए देशम्प ने, तो उसमें बेसिकली ये हुआ कि दे पूरा जो मिडफील्ड था वो हट गया था. मिडफील्ड में आई थिंक इफ हम्म आई एम नॉट रॉन्ग चुआमेनी ही था अकेला, बाकी hmm. सारे हम्म. फॉरवर्ड्स थे. Rabiot, फोर फॉरवर्ड्स Rabiot वर था. देयर. हाँ चुआमेनी Yeah, एंड रैबियो वर नहीं देयर, नहीं नहीं, बट वो वो लोगों ने दोनों ही किसको थे. निकाला था? आई थिंक जीरू को निकाला था और Griezmann, डेम्बेले को Griezmann. निकाला था. नहीं अच्छा नहीं, ग्रीजमैन को भी डेम्बेले निकाला. डेम्बेले. हाँ, हाँ, हम्म. तो बट ग्रीजमैन को भी निकाला ना बाद में, हाफ टाइम के बाद. बाद में निकाला, वो तो बाद में निकाला. बट हाँ, Yeah. रेग्ड फाइनल्स में भी लोग पोर्चुगल को इंक्लूड नहीं कर रहे. दैट्स Yeah, I was, like very, what do you call, turned off by Pepe and what do you call Bruno Fernandes. They play for like high elite football clubs and they speak like this. I mean, हम्म. like this is nonsense. एक्चुअली. Yeah, yeah. अभी ये अगर क्या पांच क्या अर्जेंटीनियन, मैडम. वो he made that क्या बोल रहे statement हैं ना Bruno Fernandes. हाँ क्या कि बोला? पोर्चुगल, अर्जेंटीना अर्जेंटीना के लिए ये रेफरीज. तो एक्चुअली पोर्चुगल मोरक्को के मैच में an Argentine referee was officiating the match, so they were हाँ not happy राइट. about it. Yeah, yeah. So हाँ या वो उन लोगों ने वो दे मेड अरे हिम शो ओ आउट ऑफ माय दैट. गॉड, क्या मिस किया है, क्या मिस क्या किया है बात मतलब. अभी देखिए लियोन बेली का मिस, इट वाज अ टैप इन. इट वाज अ टैप इन, मतलब ये तो फर्नांडो टोरेस से भी गंदा वाला मिस है. क्या बात कर रहे हैं? देख देख, लेट अभी मी आएगा, सी. देखा मस्त क्रॉस था. सुपर क्रॉस था. आई थिंक एशलियन का कौन क्रॉस था, किसका था, बंडिया का था, बट कौन बहुत ही कौन गंदा. कौन नुनियज मिस किया क्या? नहीं नहीं, ये लियोन बेली. लियोन बेली, हाँ अच्छा. मेरे स्क्रीन पे तो अभी उनाई एमरी है, बट या नाउ आई सी द मिस. ठीक है हम्म. तो द क्रॉस कम्स इन फ्रॉम द लेफ्ट और मतलब उड़ा ही दिया सीधा. ही डिड नॉट इवन हिट दैट. वही ना, यही बोल रहा है ब्रूनो ना? बहुत रोता है. आफ्टर एवरी फाउल ही विल गो क्राइंग टू द लेफ्ट. हम्म. आई देखो यार वो मुझे अच्छा ब्रूनो. लगता है वो. ही हाँ डज ब्रूनो दैट. मुझे ही हाँ इज, वही. आई लाइक हिम व्हेन ही डज हाँ दैट. एग्जैक्टली. बेली यूनाइटेड वाला नहीं भाई, लियोन लियोन बेली, एरिक बेली नहीं, लियोन बेली. हाँ ये ये बाय वो बाई विद डबल एल है. दिस इज बेली हाँ विद ये एल ई. बेली, हाँ भाई, वो हाँ भाई है, ये बेली हाँ है, करेक्ट. बाइले, हाँ बाइया. बाइले, बाइलामोस. तो यस, 15 बाय. मिनट्स, एस्टन विला हाँ. nil, लिवरपूल 1. And there's already been quite a lot of action in the 15 minutes so far. Yeah, it has So been, it has अच्छा been. खासा Liverpool looking ये really start good. हुआ. Liverpool बहुत अच्छा खेल रहा है. They're looking really good. हाँ, off हाँ to a good start. Yes, Aston Villa under pressure और
I mean, I'm actually I haven't seen. I think this is the first time I'm seeing Aston Villa with under Unai Emery, if I'm not wrong. Like मैंने United के against क्या देखा बात था. कर रहा है बे? मैनचेस्टर को हराया था हमको, हाँ। हाँ वही, ऐसे हाँ मत कर। यूनाइटेड के अगेंस्ट ये देखा था. मेमोरेबल गेम याद है क्या? बट हमने वॉच अलोंग किया था, हमने वॉच हाँ अलोंग किया था। एग्जैक्टली, हमने वॉच अलोंग किया था. दैट वाज हिज फर्स्ट गेम. या नो बट या that was his first game. But uske baad, like that was, we could not have considered that, right? Because that was his first game. That's what I'm saying. So uske baad, team भी settled हुआ. So this is like the first time I am watching them play under, like, after properly having settled under Emery. Or maybe they are not settled under him still, because दे आर नॉट, उन्होंने या World या बट Cup देन या इट्स ही break इज अ हुआ गुड था. मैनेजर, इट्स अ नाइस। नहीं, क्रॉस नहीं था। इगालो और हाँ, CR38। Lord Heskey. The answer is लॉर्ड Lord एस्की, नो Heskey. नो, लॉर्ड हाँ, लॉर्ड लॉर्ड बेंटनर, लॉर्ड बेंटनर। Lord Ben. Yes, हाँ, Lord Bender is also रॉनी there. शुड Yes. हैव नेवर डन दैट मॉर्गन इंटरव्यू। ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं, अभी कर दैट्स दिया ट्रू। तो कर दिया उसने। हाँ, नहीं जो करना तो यार होने नहीं चाहिए पियर्स था, बहुत मॉर्गन, कुछ उसे करना नहीं चाहिए। पियर्स होने को मॉर्गन कौन ऐसा टाल अजीब सकता है. आदमी है भाई। फाइनल्स के हाँ, टाइम पे पियर्स मॉर्गन पता है क्या बोल रहा था? बोलता है कि सच प्लेयर्स आर नॉट फीलिंग वेल बिकॉज उनके खाने में पॉइजन मिला दिया है। मतलब यार ये क्या बेवकूफ आदमी है यार। अरे वो पर्पसली करता है, ही डज इट पर्पसली। आई मीन, आई थिंक आई नो ही हैड अ इतना वेरी नॉनसेंस, बैड, उसने इतना वीरेंद्र नॉनसेंस। सहवाग के साथ बहुत ही गंदा ये किया था उसने। एंड में हाँ, वीरेंद्र सहवाग ने उसको बुली किया और उसने वीरेंद्र सहवाग को ब्लॉक कर दिया ट्विटर से। हाँ, यस, हाँ, वो है वो बाद में, वो उसके बाद से लेकिन वो इंडियन से पंगा नहीं लेता ट्विटर नहीं पे. लेता, नहीं लेता। हाँ, मेसी बिकॉज विल इंडिया गो वाले तो क्राइंग, हा बराबर हा हा। बजा देते उसको. मैं, दिस इज व्हाट ही सेड, मेसी विल गो क्राइंग। ये उसने बोला था उसने, बस। ये छोटे वो नहीं हाँ, क्या, 18-19 साल वाले बच्चे होते हैं जो जो अभी अभी फुटबॉल रियलाइज करते होते हैं, रोनाल्डो और मेसी के फैंस, वो बात करते हैं ना कि हाँ, रोनाल्डो विल गो क्राइंग, मेसी विल गो, वैसे बात कर रहा था वो। हाँ, दैट्स ट्रू। अरे एक्चुअली. he does it properly to get a reaction and another Liverpool chance and Aston Villa हाँ, का डिफेंस भाई, मतलब बहुत ही आउट ऑफ द कंप्लीटली आउट ऑफ प्लेस लग रहा है, जैसे ऑफ साइड है, पर ठीक है। दैट्स ट्रू। विला का डिफेंस बहुत ही गंदा लग रहा है। पता नहीं यूनाइटेड अच्छा. के सामने उनको कौन सी माता आ गई थी उनमें, जो इतना अच्छा खेल रहे थे इतना, पर आज तो बहुत ही गंदा खेल रहा है। कंप्लीट डिफेंस को रिप कर रहा है लिवरपूल। हाँ, मतलब एक्चुअली दे आर कितना कितना गोइंग. प्रॉब्लम हो जाएगा ना, लाइक इफ एस्टन विला गोज डाउन ऑन द रेलेगेशन डीबो मार्टिनेज भी जाएगा सामने। मतलब क्या कॉम्बिनेशन रहेगा ना, वर्ल्ड कप विनिंग प्लेयर गोइंग डाउन इन द गेटिंग रेलेगेशन रेलीगेटेड. बैटल। Virender Sehwag with his 23 word vocabulary sat down Piers Morgan. Yes, he did. Yes, He did. He did हाँ, sit down Piers Morgan. हाँ, मैं आज ही All एक्चुअली, right. बिकॉज मैंने वो रोनाल्डो का इंटरव्यू मैंने देखा ना यूट्यूब पे, तो Hmm. उसके बाद से मुझे सजेशन आते रहता है कि पियर्स मॉर्गन और Hmm. किस किस को, मतलब अगर जो इंटरव्यूज लेता है वो. Hmm. सो ही इज अरे वो एन बुली आर्सेनल है फैन, वो, so ही इज वेरी बुलिश कि बुलिश, आर्सेनल बहुत विल बुलिश। विन द प्रीमियर लीग. ये उसका 2023 Hmm. का प्रेडिक्शन है And then कि ये and वाला you जो know, ऑनवर्ड सीजन है वो आर्सेनल जीतेगा. हाँ हाँ, and this is, he didn't just support Ronaldo when Aubameyang का भी situation हुआ था. Most of the हाँ, sensible Arsenal fans, who would हाँ, support, who are actually Arsenal fans and you knew our हम्म। club is always bigger than the player. He supported Aubameyang. He said that Arteta was wrong to, sit down Aubameyang हाँ, on the bench नीचे. or to suspend him. Arteta was wrong. That's how an idiot he is. So and अग्रिम हाँ, भाई का तो एक्सपीरियंस भी है उसका। अग्रिम भाई ने इंस्टा पे अपना पोस्ट डाला था and he actually saw that Piers या Morgan actually saw Agrim bhai's या Insta story in fact. या कॉल्ड हिम आउट फॉर हिज हिपोक्रेसी ना, इतना बकवास क्या करता है ना। हाँ, एक्चुअली वही. नहीं, वो तो करता ही है, अरे बहुत वो बकवास पर्पसली करता है. करता So, है, he is just आई trying मीन to get a उसका, reaction of people, या get हाँ, more, you know, you know, more clicks to his या interviews and या everything. वो purposely या करता है, he's हाँ. bullish, and then या and बट any उसका उसका मैं बोलूं, आई मीन So उसका, basically, आई टेल we यू can वन say थिंग। that he's like the British version of Arnab Goswami, or maybe the British version of या Ravish Kumar. अरे Whichever नहीं one पता you उसका, prefer. मैं उसका एक ही चीज बोलता हूँ, हिज पॉलिटिकल हाँ, व्यूज आर लाइक ऑन पॉइंट, बट हिज लाइक हाँ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पोर्ट्स इज जीरो। हाँ, दैट इज द yeah. ओनली डिफरेंस। या हाँ, वो तो है, वो बात है. देयर इज या लाइक अ वेरी, मतलब एक उसका वायरल वीडियो है wherein he is meeting eating meat in front of a vegan activist, a which was very vegetarian, या funny. या No, purpose. not वो vegetarian, सही है। vegan. या Vegan, वो vegan, Yeah, सही है। sorry, vegan. yeah. हाँ, और Goal, वो another अच्छा goal, करता है, हाँ. Another goal, goal. हाँ goal, Oh,
Yeah. वाह मतलब offside, it's offside, offside. ओ अच्छा But भाई विला हम्म, विला की डिफेंडिंग बहुत ही घटिया, एकदम घटिया डिफेंडिंग है विला की। हम्म they are getting exposed a lot by Liverpool I या guess लिवरपूल का अरे प्रेसिंग काफी मतलब अच्छा है कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं, क्या चल रहा है पता नहीं। मतलब उठ के आ गया मैच खेलने में, ऐसा लग रहा है एस्टन विला। हाँ अग्रिम भाई पुट हिम ऑन गन पॉइंट से them shit. हम्म, अग्रिम भाई है ना यूके में तो यूके जाके कर सकता है ऐसा वेरी पॉसिबल या नहीं बट वो बट जर्नलिस्ट का तो आप लोग को पता ही रहता है ना, जर्नलिस्ट का काम ही होता है लाइक टू पिस हाँ ऑफ पीपल. वो अगर उसका रोनाल्डो वाला इंटरव्यू भी देखेंगे ना सो ही इज हम्म, बेसिकली ट्राइंग टू ही इज ट्राइंग टू ट्रिगर एन आंसर फ्रॉम रोनाल्डो थ्रू आउट द या इंटरव्यू पूरा इंटरव्यू यही चीज है लाइक ही इज ट्राइंग टू एंटागनाइज हिम टू द पॉइंट कि ही सेज समथिंग एंड रोनाल्डो सेड समथिंग बिकॉज उसको भी सब बोलना ही था सो Yeah, मे you know बी for the बिकॉज first Ronaldo time. हाँ is Hmm. posted him maybe in the because spot, na, Ronaldo United. was already in that state or and Yeah. maybe because Piers Morgan ने उसका इंटरव्यू लिया he might have उसके सवालों से he has maybe made it worse than it actually was meant to be but Ronaldo has not helped his cause either at the same time तो वो Hmm. भी बोल सकता That's है and true. it's हाँ तो लाइक बहुत लोग अभी जो नॉन स्पोर्ट्स वाले चैनल है लाइक वो लोग भी अभी बोल रहे हैं दैट द डिबेट इज सेटल्ड एंड इट्स मतलब I believe it must be very hard for Ronaldo to be living this moment Hmm. मतलब Yeah. वियॉन जैसा चैनल है वियॉन पता है दिव्या तुमको Hmm. हमारे व्यूअर्स को शायद पता होगा तो वियॉन इज लाइक इट्स नॉट सो मच इनटू स्पोर्ट्स बट वो लोग ने भी एक स्पेशल एपिसोड किया सेगमेंट किया एंड दे सेड कि भाई नाउ द डिबेट इज सेटल्ड बिकॉज मेसी तो वर्ल्ड कप जीत गया अगर वर्ल्ड कप जीत गया है तो सामने रोनाल्डो यही वर्ल्ड कप में ही कुड नॉट इवन मेक इट और ही इज नॉट इवन इन अ क्लब राइट नाउ ही इज अ फ्री एजेंट एंड नो वन इवन वांट्स टू Hmm. साइन हिम तो ऑन दैट बेसिस वी कैन से दैट द डिबेट इज सेटल्ड बट वी लीव इट अप टू यू ऐसी बात है वो तो अब फीफा भी किया ना. ऐसे क्या फीफा also did the same thing ना. अरे वो व्हाट बचकांडे हो फुटबॉल ब्रो। में. फीफा फीफा जैसे वो दूसरा हाँ ESPN है वो सब। अरे ये सब चीजों हाँ की मतलब पॉइंट ही नहीं है। हाँ लियोनेल मेसी वाज एग्जैक्टली फैंटास्टिक इन वर्ल्ड कप। रोनाल्डो ने मतलब कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं था। एंड पीपल फॉरगेट दैट रोनाल्डो इज 38, लियोनेल मेसी इज 35 36। थर्टी तो फाइव वो थर्टी सब फाइव Yeah. ये सब डिबेट करने की जरूरत ही नहीं यार। हाँ अर्जेंटीना won the एक्चुअली World Cup. Bro, they were brilliant, Hmm. fantastic. They deserve that win. It was an eye opener for that Hmm. Saudi Arabia game, and then they pulled up their socks. They played Yeah. together as a team. But deserve क्या है ये Yeah. तो मतलब Yeah. अगर if you look हाँ at that context ना तो मतलब और किलियन एम्बापे already won the एम्बापे वर्सेस हालैंड because हालैंड कभी वर्ल्ड कप में मुझे लगता नहीं खेलेगा। कभी नहीं जीतेगा हाँ मु- खेलेगा भी नहीं जी एक्चुअली खेलेगा भी मुश्किल है। मतलब एक गलती से हाँ आ गया तो आ गया नॉर्वे का भी। सो यू हाँ कांट वो जस्ट कंपेयर टू प्लेयर्स एंड से वन एज वन ऑन द बेसिस ऑफ Yeah. वर्ल्ड कप। सो हाँ वैसे तो रोनाल्डो कितना वही चैंपियंस लीग जीत गया, इसका मतलब ये है कि हाँ रोनाल्डो इज अ एग्जैक्टली और बेटर बेटर दूसरी क्लब चीज ये फुटबॉल प्लेयर देन। ये तो सब हाँ मतलब फालतू और बातें हैं दूसरा कि ये है जो कि लोग जो लोगों को फुटबॉल के बारे में पता नहीं होता ना वो लोग वो सडनली लोग ऐसी वर्ल्ड कप बातें मालूम है करते इधर सब उड़ जाते हैं वर्ल्ड कप के टाइम। हाँ हमको हाँ अभी फुटबॉल देखना है, हमको कूल लगना है, तो वो ऐसे डिबेट करते हैं। हाँ सॉरी प्रशांत, यू आर अरे सेइंग हाँ समथिंग। या एग्जैक्टली नो यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट सो एटलीस्ट जो मैंने वियॉन वाला एपिसोड देखा दे सेड समथिंग हम्म सेंसिबल इन द सेंस दैट कि हम्म वो लोग ने बोला कि इट इज स्टिल invalid to compare generations because is he better, is he actually the goat, like maybe he's better than Ronaldo but is he still the goat because पहले और मैराडोना का नाम आता है फिर सो पहले तो चलो Hmm. अरे मैराडोना तो एक एक वर्ल्ड कप जीता बट उसके क्लब में उसका ज्यादा सक्सेस था नहीं क्लब लेवल पे और दूसरा वो Hmm. उसने बोला पहले का तो पहले को तो के साथ अगर कंपेयर कर रहे हैं पहले तो भाई तीन वर्ल्ड कप जीता है और उसमें से तो दो बैक टू बैक जीता है सो इट्स नॉट अ हम्म फेयर कंपैरिजन फिर वो लोग ने तो एटलीस्ट बोला कि मे बी इट इज नॉट फेयर टू कंपेयर प्लेयर्स बट उसने वर्ल्ड मेसी ने वर्ल्ड कप जीत लिया एंड इन द करंट जनरेशन ही कैन से दैट ही इज वन ऑफ द बेस्ट in terms of the Hmm. trophies won not that he is Hmm. necessarily better than Ronaldo नहीं, but अगर आर्ग्यूमेंट करना भी है, आई मीन देन फुल फ्लेजेड आर्ग्यूमेंट करो ना, फुल फ्लेजेड आर्ग्यूमेंट करो, हाँ exactly so या पुट लाइक anyway रोनी एरिक बिकॉज टेनाक की बराबर की मार दी रोनी। रोनी ETH की बराबर की मार दी। हाँ वो बेकार में मार दी, सॉरी बेकार में मार दी। टॉकिंग हाँ अबाउट रोनाल्डो वही इंटरव्यू जरूरत नहीं थी। हाँ सॉल्ट बे घुस सॉल्ट पे कैसे घुस कैसे कैसे गया गया अंदर अंदर। हाँ मतलब इज बैंड फॉर लाइफ.
Yeah, he is he's not banned. He's banned for banned. life. He is officially. अच्छा Yeah, मुझे फीफा पता ने नहीं he's एक्शन था। तो, banned from आई every एम नॉट श्योर tournament. वेदर बैन है कि नहीं, बट फीफा एक्शन तो लेने वाला था, मुझे पता है। हाँ ये मुझे ये मैंने पढ़ा था कि वो यूएस वालों ने डाला कि सॉल्ट बे इज बैंड फ्रॉम द यूएस मेजर कप। अभी सॉल्ट बे वहां पे जाने भी नहीं वाला था। सो मतलब वो कंपटीशन में तो कोई भी मतलब देखता नहीं है, उसमें बैन करके क्या ही मतलब है। बट अनलेस अबे फीफा ऑफिशियली से अबे समथिंग क्या आज भी है आई वुड यार ये। बिलीव। हाँ अबे क्या कर हाँ रहा था वर्ल्ड कप के ऊपर? हाँ नमक हाँ स्वाद अनुसार कर रहा हाँ है। हाँ ना नमक स्वाद अनुसार। एग्जैक्टली क्या मतलब। और कोई रीजन नहीं था उसके वहां होने अबे का। वो एंटर कैसे क्या? आई एम स्टिल अनेबल टू अंडरस्टैंड। क्या बोला, क्या मैं मेसी का भाई हूँ? क्या बोल के मैं मेसी का भाई हूँ? बहुत सालों ऐसा से देखा बोला। है मैंने। हाँ, अगर बोला भी होगा। क्या पता। हाँ यार क्या ही पता। अरे बट आई डोंट नो वो अंदर कैसे घुसा। मुझे लग रहा है कि ये मतलब वन एंगल विच आई एम थिंकिंग अबाउट कि शायद ऐसा हुआ होगा कि सॉल्वे वर्ल्ड फेमस है ना, इज ऑलरेडी वायरल। और या क्या बोलते हैं रिलेटेबिलिटी और पीआर के हिसाब से चलो उसको एक बार वो लोग वहां लेके आए रहेंगे, लाइक बिकॉज टर्की मिडिल ईस्ट इस्लामिक नेशंस एंड ऑल ऑफ दैट। तो वो हिसाब से या ऐसे सॉल्वे को ऐसे काफी वो लोग ऐसे प्रमोट करते हैं, करते हैं। ऐसे हाँ ऐसे हाँ ऐसे 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 बस। तो ठीक है चलो उस हिसाब से भी मैं मानता हूँ कि पीआर एंगल के हिसाब से चलो ये बंदा वायरल है, वर्ल्ड फेमस है, फाइन। बट वर्ल्ड कप ट्रॉफी हाथ लगाने दिया उसको भाई, ये क्या है? लाइक बेसिकली व्हाट हैपेंड इज अ मीम again, a meme quote unquote touched a world cup trophy just because अब एक बंदा मीम्स की वजह से फेमस हुआ, उसको वर्ल्ड कप ट्रॉफी छूने मिल गई। मतलब अग्री दिव्या, तुम लोग अगर मीम्स बन जाओ तो मे बी यू कैन ऑल्सो टच अ वर्ल्ड कप ट्रॉफी टुमारो। वो कौन था वो बंदा के लैंड करा दे, मुझे लैंड करा दे भाई, 100-200 ज्यादा नहीं, ही कैन ऑल्सो सौ ही सौ कैन रुपए ले ऑल्सो ले लेकिन टुमारो। हाँ एग्जैक्टली, मे बी वो हाँ भी भाई। कल उठ के वर्ल्ड कप ट्रॉफी को छू जाएगा। यू डोंट इवन नीड टू भाई बी अ फुटबॉलर टू गेट टू टच द ट्रॉफी। हाँ क्या बोल रहा है अग्री। क्या आदमी है भाई। मैं बोल रहा था हाँ भाई। कल तो मैं कोई मैक्रोन के साथ उतर गया नीचे। हाँ मैक्रोन के साथ उतर गया नीचे, बट मैक्रोन इज अ लीडर ऑफ अ अबे स्टेट। मैक्रोन को भी कैसे अलाउ किया भाई? नहीं नहीं मतलब वो इवन इट इज मैक्रोन लाइक, को अलाउड है। लीडर्स ऑफ स्टेट्स वो अबे जो, अलाउड है एज पर फीफा रूल्स। सो दे यस कतर का जो नो, एमीर यार था दिस ही इज वाज आल्सो देयर। नॉनसेंस। यस, सो व्हाटएवर इट नहीं इज, बट वो यू रूल हैव द है। प्रेसिडेंट ऑफ, क्या टू अलाउ प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री ऑन द ग्राउंड हाँ विद द प्लेयर्स। वो तो अरे ही वाज देयर एज अ डिग्नेटरी डूड। वो तो मतलब प्रॉपर अरे लीडर है यार वो फ्रांस का, और एंड फ्रांस फॉर प्लेइंग सो दैट मेक्स सेंस एक बार। और फीफा का रूल है कि दे कैन टच जो मतलब ऐसे लीडर्स वगैरह है, दे कैन स्टिल पार्टिसिपेट इन द हाँ देख हेड ऑफ स्टेट अलाउड जो हेड ऑफ स्टेट अलाउड, एमशे या भी बोल रहा है। सो ऑन दैट बेसिस इट इज फाइन एंड दैट्स एक्सेप्टेबल। बट सॉल्ट बे का क्या है, क्या लेना देना है भाई? वो तो टर्की का भी उसका हेड ऑफ स्टेट रेस्टोरेंट भी नहीं है। ओवर हाइप्ड है, उसका रेस्टोरेंट भी ओवर हाँ हाइप्ड है, बोला होगा भाई, एक्सपेंसिव। मैं तेरे को क्या स्टेक्स फॉर लाइफ खिलाऊंगा स्वाद हाँ अनुसार। स्वाद अनुसार हाँ वही। सो भाई कल कल तो मैं भाई, कल कल मैं हाँ अगर पीएम ऑफिस चले जाऊंगा, बोले वो मोदी जी मेरे को अपनी कुर्सी पे बैठ रहा है, बैठने देगा क्या मोदी जी मेरे को? अबे क्या लोग हैं भाई। अब सीधा अमित शाह के बोलेगा, ए ए सफेद कपड़ा ए। सफेद कपड़ा। अबे क्या लोग है भाई। हाँ वही ना यार। अबे उसको, यार उसको एंट्री कर रहे हैं यार, मेरे को समझ भी नहीं आ रहा अभी तक। क्या क्या I'm still unable to like comprehend and fathom this fact, थर्ड में आके भाई अर्जेंटीना का विक्ट्री मतलब मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस भाई छीन रहा है भाई। हाँ वही मतलब ये दिस इज अगर हिंदी में बोलने चाहे जाए तो दिस इज लिटरली हाँ, दैट मोमेंट, वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना टाइप ऑफ अब्दुल्ला मोमेंट। अब्दुल्ला दीवाना। दीवाना। हाँ मतलब यार उसका कुछ लेना देना नहीं यार। मतलब अगर वो टर्की का भी हेड ऑफ स्टेट होता, कुछ होता तो एक बार समझ लेते। बट दिस इज वेरी एम्बैरेसिंग मतलब एक्चुअली में बहुत या गंदी चीज हुई ये।
बट एंड अर्जेंटीना प्लेयर्स को क्या ही लग रहा होगा कि यार हम लोग यहाँ वर्ल्ड कप जीते, ये चूतिया कौन है, इसको वर्ल्ड कप का हाँ ट्रॉफी लेके बस फोटो लेना वर्ल्ड कप के साथ। अबे लिटरली ऐसे ही ये था। ठीक है। अबे मतलब हाँ दीज वर लाइक वेरी सिविलाइज्ड अर्जेंटीनियन प्लेयर्स भाई। अगर पुराना कोई हाँ स्क्वाड रहता ना, बोलता है अबे साले हाथ क्या हाँ लगा रखा है, निकल यहाँ से। हाँ। नहीं, मेसी ने भी बेसिकली उसको इग्नोर किया, इग्नोर ही किया ना। दैट इज वन ऑफ द थिंग्स व्हिच वेंट फेमस, मैं राइट? वही ही बोल रहा हूँ ना, ब्लैंक्ड हिम। अगर ये मैराडोना और उसका पुराना टीम रहता ना, एंड दे वुड हैव वन द वर्ल्ड कप राइट नाउ, इतने जूते हाँ मारता ना इसने। हाँ एक्चुअली। सॉल्ट बेस से भाई उसको सीधा पहुंचा देता टर्न की हाँ विद वही वन फाइट। एक्चुअली। और उसके इवन डिस्पाइट दैट, उसके जो फोटोज है, जो मैंने दूसरे फोटोज हम्म। देखा, मतलब वो तो ऐसे बिहेव कर रहा है भाई, उसी ने वर्ल्ड कप जीता, वो फाइनल विनिंग पेनल्टी उसने ही मारी हो। हाँ मतलब एक्चुअली बहुत ही वियर्ड मोमेंट था, एंड अर्जेंटीनियंस को तो गुस्सा आया ही होगा कि भाई ये कहाँ से आ हाँ। गया ये भेंचोद। ये हाँ नामकुल नामकुल हाँ गधा इंसर्ट कहाँ से आ गया भाई। हाँ एग्जैक्टली। तुम्हें हाँ क्या सो आदमी है भाई, सही भाई। एनीवे द स्कोर इज स्टिल 1-0 टू लिवरपूल। लिवरपूल आर हम्म। डोमिनेटिंग भाई, वो बात तो है। सॉल्व भी एक्सपेक्टेड They're मेसी playing टू good लॉग football. इट। भाई क्या पता, अगर वो हो जाता तो फिर भाई दोनों जेल में, कतार Hmm. एनीवे बट ओवरऑल तो वर्ल्ड कप अच्छा था। वर्ल्ड कप in terms of what happened on the pitch was very nice, and या भाई अभी अभी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से तो ऑब्वियसली देयर इज नो डाउट इट वाज ऑर्गेनाइज्ड वेरी वेल। ये सब लफड़े थे जो भी सोशल वगैरह इश्यूज हुए थे, बट ओवरऑल इट वाज गुड। रोमेरो के छोटे बच्चे को ट्रॉफी नहीं छूने दिया साले ने। कौन? सॉल्ट पे? पता उनको नहीं। भी नमक नमक स्वाद अनुसार कर दिया। हाँ वही। आई डोंट नो, अबे क्या है मतलब यार। हाँ सो अबे क्या है यार। मीम को भाई वर्ल्ड कप छूने दे रहा है यार। हाँ वही ना। यही चीज है, लाइक यही सोच के मुझे भी हंसी आ रही कि a meme has touched the world cup। मतलब दिव्या, you understand the power of memes, I have no memes की words. शक्ति। I'm speechless. I'm speechless. It's actually very funny, yeah। and मतलब फीफा के लेजिटिमेसी पे सवाल आ जाता है। अभी पूछ रहे थे। हाँ 33 अभी minutes into 20 the game. अभी 2024 में अभी दे विल डिसाइड द 2030 वर्ल्ड कप ना, कौन हु विल होस्ट। Yeah, yeah. यस बोल रहे सो हैं सऊदी मोस्ट लाइकली। Are you नहीं, देर आर kidding me? लाइक Are you नहीं kidding नहीं, me? Oh, सऊदी नॉट seriously, पॉसिबल, no, इट नहीं होना है. लॉजिकली नहीं Shouldn't be नहीं there. होना चाहिए। अरे बोलेंगे वेयर सऊदी इज इन द मेसी, सेंस, वेयर इज मेसी, वेयर इज मेसी। हाँ नहीं नहीं, साले बाय द वर्ल्ड कप वे जीत गया है वो। सऊदी का बिड, मतलब द रीजन इट इज फेवर्ड बाय मेनी पीपल, बहुत लोग बोल रहे हैं कि इट विल बी अ गुड आइडिया बिकॉज नॉट बिकॉज ऑफ सऊदी। सऊदी का जॉइंट बिड है, पता? एंड इट्स अ I आई think मीन joint bid. इट्स अ जॉइंट बिड विद इजिप्ट एंड ग्रीस। सो वो तीनों Yeah. लाइक रेड सी में दे आर लाइक आजू बाजू। तो Mm-hmm. अगर वो वर्ल्ड कप होता है, इट विल बी द फर्स्ट ट्रांसकॉन्टिनेंटल वर्ल्ड कप, अफ्रीका एशिया यूरोप। बट Correct. the problem there lies again with the weather। सऊदी में भी या अगर वर्ल्ड कप करना है तो जून जुलाई में नहीं होगा, दिसंबर दिसंबर में ही दिसंबर। रखना होगा, विच इज फक्ड अप। जबकि या ओके लिवरपूल, अच्छा लिवरपूल हैड अ चांस, ओके। जबकि जो दूसरे बिड्स है, द मोस्ट लॉजिकल बिड एज ऑफ नाउ फॉर द 2030 वर्ल्ड कप एंड इवन द व्हाट 2034 वर्ल्ड कप, वो दोनों वर्ल्ड कप के लिए लॉजिकल बिड मुझे साउथ अमेरिकन टीम्स का लगा। लाइक वो लोग यूरुग्वाई अर्जेंटीना में दे उन लोग का कंबाइंड बिड है। स्पेन पोर्टुगल का बिड अच्छा था but you until they understand added the Ukraine logic into it। behind, 2030 World Cup going to South America, Yes, right? of course, because the first World Cup was held there, Yeah, or obviously that yeah. makes a lot of And sense। Argentina and Uruguay were like the finalists, no, back then, हाँ 1930 में. राइट, हाँ Yeah, एग्जैक्टली। सो दैट मेक्स अ yeah. लॉट ऑफ सेंस। मतलब कि वो दैट वर्ल्ड कप हैपेंस है एंड इट विल बी वेरी सिंबॉलिक इन दैट मैनर एज वेल। That's true. Hmm. सो Mhm. वो चलेगा एक बार। स्पेन पोर्टुगल का बिड भी मुझे अच्छा लगा, बट देन अब वो लोग ने यूक्रेन को ऐड कर दिया, जस्ट फॉर दिस। मतलब मतलब कोई लेना देना ही नहीं, कहाँ कोई लेना देना यूक्रेन, नहीं। कहाँ स्पेन, हाँ पोर्चुगल, एग्जैक्टली। वो जस्ट पुतिन बोलेगा दया की बीच.
आओ, हाँ पुतिन बोलेगा हम, हाँ हम तुम्हारा हाँ स्वागत करेंगे, आओ हाँ, हम लेके आओ तुम्हारा बस स्वागत करेंगे वही। साला मतलब हमको सैंक्शन किया था ना तुमने। हाँ, मतलब बेसिकली अगर देखो जब कतर को बिड मिला था तभी यूएस की हटी थी। अब अगर यूक्रेन को जाएगा हम्म। तो फीफा रशिया को मतलब ट्रिगर करेगा और फिर रशिया वाले वाट लगाएंगे फीफा की, जैसे यूएस ने लगाई थी। सो हाँ, एनीवे, सो आई होप दैट डजंट हैपन। तो इट्स ट्वेंटी 34 में आई हूँ। थिंक बिड यहाँ पे आई थिंक यूरुग्वे अर्जेंटीना है, देयर इज अ बिड फ्रॉम इंग्लैंड एज वेल, देन देयर इज अ हम्म, बिड हाँ जॉइंट बिड बिटवीन स्पेन एंड पोर्चुगल. So हाँ, तो Yeki and उसमें the other यूक्रेन one है, which Prashant spoke about, the हाँ या Egypt, सऊदी, इजिप्ट एंड Saudi ग्रीस। Arabia and the Greece. Yeah. So I think it will be most probably Uruguay, Argentina. मुझे लगता है कि वो बहुत सेंस बनता है, शायद वही होगा. Let's see. हम्म, Because और आई थिंक then उनका थोड़ा तीन टिकट वर्ल्ड चैलेंज भी कप होता है ना थोड़ा। then तीन वर्ल्ड कप ऐसे हो जाएंगे जो वर्ल्ड कप बैक टू बैक, मतलब एक भी इसमें से यूरोप में नहीं है. नहीं तो मैंने अभी तक देखा है कि ऑल्टरनेट वर्ल्ड कप शायद यूरोप में होते हैं, ऐसा कुछ है. नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो अभी रशिया में हुआ था, सो 2022 इज इन कतर एंड देन बाद में यूएस में होगा एंड उसके बाद ये जो है वो साउथ अमेरिका में होगा, राइट? अभी हम्म. सो अभी क्या बोलते हैं, इससे पहले भी ऐसा हुआ है दैट ये आउटसाइड यूरोप हुआ है, लाइक 2006 हम्म में जर्मनी में हुआ, उसके बाद 2010 हम्म. साउथ अफ्रीका एंड 2014 South ब्राजील। Africa and Brazil, yeah. South Africa and Brazil, too correct. Brazil, yeah, yeah, हाँ, सो yeah, वो yeah. हुआ था I और agree, agree, यू नो agree. Yeah, एज द you're right, गेम you're right. Yeah. ग्लोबलाइजेस मोर वो होगा, बट द प्रॉब्लम इज Hmm. के यूरोप में बैक टू बैक नहीं होगा, बट टेक्निकली अमेरिका में बैक टू बैक वर्ल्ड कप्स हो जाएंगे बिकॉज 26 तो नॉर्थ अमेरिका में हो रहा है। Hmm. सो उसके बाद Hmm. अगर Hmm. 30 को वो लोग डायरेक्टली साउथ में डाल रहे हैं देन दैट इज लाइक अगेन सेम कॉन्टिनेंट में हो रहा है। सो डैमेज कंट्रोल करने के लिए मेसी का स्टोरी डालते हैं इंस्टा पे कि वो और पॉग्बा आया था खाना खाने. हाँ 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 हाँ, हाँ, ये सॉल्ट पे हाँ, मतलब सीरियसली। एनीवे, इंडिया शुड इंडिया होस्ट शुड इंग्लैंड। होस्ट इंग्लैंड वर्सेस स्पेन एट घाटकोपर पर जिम खाना. हु सेज नो? यस। गोल गोल. लिवरपूल गोल. वर्जिल वैन डाइक. वर्जिन वैन लिवरपूल गोल. वर्जिल वैन डाइक हेडर. आई थिंक हेडर था ये. हेडर था। मेरा भी ध्यान कमेंट्स में था तो मैंने देखा नहीं. लेट्स चेक द रिप्ले. अच्छा हाँ, Yes, कम मेरे it's इसमें 2 तो 0 गोल to अभी तक Liverpool. आया भी नहीं है। लाइक इज वर्जिन वैन डाइक। एनीवन सेव ममरा? नहीं भाई, क्या तू खा एंजॉय खा कर. रहा है? हेडर नहीं है, सेम वॉली ममरा है। खा रहे हो. सेव ममरा बॉली है क्या? हाँ, बॉली बॉली है. अच्छा बॉली. वॉली है। मेरा अभी तक नाइस वन है. बहुत बना ही नहीं डिफिकल्ट है। एंगल था. डिफिकल्ट एंगल था ये. विद सो मेनी प्लेयर्स. नाइस गोल. वेरी नाइस गोल. मेरा अभी तक ये बता ही नहीं रहा है। नहीं नहीं, मेरा तो पहुंच गया। अगर हम फॉरवर्ड कर, यू माइट बी एबल टू फॉरवर्ड योर स्ट्रीम, अरे मैं हॉटस्टार पे ही देख रहा हूँ। इसलिए बोल रहा हूँ फॉरवर्ड करना स्ट्रीम को। हम्म 38 minutes into the game, Aston Villa nil, Liverpool 2, and Liverpool looking very comfortable. And unlike the previous games, they've been really good playing together as a team. And you know, ऐसा लगा कि after this break थोड़ा उनका rhythm disturb हो जाएगा, but नहीं, they are right there. And they the fourth place के तो बहुत बड़ा फाइट होने वाला है. मुझे तो अभी जैसे हो रहा है ऐसा लग रहा है कि आर्सेनल, सिटी और न्यूकासल टॉप 3 ऑक्यूपाई करेंगे. एंड इट विल बी बिटवीन. Fantastic ball there. Yeah, it will be between Tottenham, United, Liverpool and Chelsea maybe. तो ये चार टीम में से कोई एक टीम फोर्थ प्लेस ऑक्यूपाई करेगा, बट अदरवाइज टॉप 3 तो मुझे ये लग रहा है कंफर्टेबल बिटवीन न्यू कासल, मैन सिटी एंड आर्सेनल. बहुत ही सुपर खेल रहा है, बट यू नेवर नो. अभी भी बहुत हाफ सीजन भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हमने देखा है हम्म, इन द पास्ट के बहुत जनवरी में बहुत कुछ चेंजेस होते हैं. तो लेट्स सी. हम्म Let's hope ऐसा कुछ हो, because right now Arsenal and Man City are looking favorites, and then Newcastle just behind them, and then we got Spurs, United, Liverpool and Chelsea. तो या यार सो हमने बहुत कुछ. हाँ बोल बोल.
हाँ, सो अभी तक तो लाइक क्या बोलते हैं, बेसिकली अभी तो हम दिसंबर में हैं, जनवरी भी अब एक बार चालू हो जाए उसके बाद भी द मेन पार्ट इज ऑब्वियसली व्हेन यूरोपियन कॉम्पिटिशंस विल रिज्यूम, राइट? तो वो या दैट विल बी लाइक द, बोलते हैं ना, द बिजनेस एंड ऑफ द सीजन, और तभी पता करेक्ट चलेगा कि एक्चुअल में क्या है। सो वो टाइम पे एडवांटेज तो न्यूकासल को होगा, बिकॉज आई डोंट थिंक दे आर इन्वॉल्व इन एनी कंपटीशन, so they will यूरोपियन have a गेम्स major करेक्ट advantage. um, Even if you say कि Chelsea and Spurs वगैरह, वो लोग भी इन्वॉल्व है, they are still involved in these चैंपियंस लीग competitions, में right? करेक्ट Champions League दे में आर है, दे आर right? So they have that, Newcastle don't. So वो सब एडवांटेजेस तो न्यूकासल को ही है। सो ऑन दोस टर्म्स प्योरली वो लोग तो आराम से अगर वो लोग एफए कप और लीग कप में भी है फॉर होंगे, आई डोंट नो इफ दे आर देयर एग्जैक्टली, बट वो नहीं दे नहीं कैन लीग एक्चुअली कप में नॉट तो निकल गए, लीग कप से हाँ निकल गए। एफए कप का मुझे हाँ पता नहीं है, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, बट हम्म they can actually afford to not focus on the cup competition and just focus purely on the league. They are in that type of a हम्म situation. जबकि हम्म यूनाइटेड बोलो, ये सब चेल्सी स्पर्स, सबके पास दूसरे Hmm. कॉम्पिटिशंस है। Yeah. एंड यूनाइटेड तो भाई दे विल बी फेसिंग बार्सिलोना, जो ऑल्दो ऑन पेपर अभी वो बार्सिलोना ये नहीं है, बट स्टिल Hmm. इट इज स्टिल अ यूरोपियन गेम, तो दे वुड हैव टू स्टिल, मतलब दे हैव बाय द टू वे टेक इट न्यूकासल सीरियसली। न्यूकासल आर स्टिल देयर इन द ईएफएल कप Carabao कप जो बोल रहे हैं न्यूकासल आर स्टिल देयर अच्छा। दे विल बी फेसिंग लेस्टर तो ओ, क्वार्टर जैसे हमने बात कर दी तो बोल देता क्वार्टर फाइनल्स है बिटवीन न्यूकासल लेस्टर साउथहैम्पटन मैन सिटी नॉटिंघम फॉरेस्ट वुल्व्स एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड चार्ल्टन 10th जनवरी को है ओ, the quarterfinals. So yes, and then there will be semi-finals and finals. So yes, last four, 8 teams in Newcastle are one of them. Man City are one of them, and Manchester United are one of them. So three favorite teams to win the EFL Cup. The cup that has been dominated by Man City over the past few years. They've been continuously winning it and they are still there in the hunt. They beat Liverpool on Friday, and they yeah, will look to win this again. So Man City clear favorites, but yes, new Prashant rightly said they don't have the European challenge with them. Less number of games compared to their competitors in Arsenal, Man City, Liverpool, United, Tottenham, Chelsea. ये लोग सबके पास यूरोपियन गेम्स है बट न्यू कासल के पास नहीं है तो उनके पास वो एडवांटेज है बट अगेन if you look at the wider aspect it's not just the European games. You'll have those injuries and suspensions coming in. Big players missing out due to long-term injuries. So that will happen because now between now and month of May, there'll be a lot of games. So because they have to cover for the missed time, and we will have 3 games every week. So that is going to take a lot of heat and pressure of the play on the players, and some of them may feel you know उनको थोड़ा डिफिकल्ट पड़े हफ्ते में 3 बार खेलने को स्पेशली those who have participated in the World Cup and played till the semi-finals and finals, those players will feel the fatigue. So let's see which team suffers the most. But as of now, तो मुझे आज का फिक्चर्स देख के लग रहा नहीं किसी भी टीम को इतना फर्क पड़ा है सब अपने फॉर्म में ही है जिस तरह से जो फॉर्म छोड़ के गए थे वर्ल्ड कप के पहले एवरीबडी hmm. इज इन दैट सेम काइंड ऑफ फॉर्म Uh, yeah, actually. So that has not, maybe because they were already somewhere in that momentum, or although हम लोग वर्ल्ड कप कर रहे हैं, but remember कि वर्ल्ड कप is basically at most कितना मैचेस होता है, 7 मैचेस, right? Majority, करेक्ट मतलब करेक्ट मैक्सिमम जो एकदम टीम कैन प्ले इज 7 मैचेस। सो काफी Hmm. सारी टीम्स ने तो 3 या 4 मैचेस ही खेले, सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक मतलब उतनी बड़ी बात नहीं है इन टर्म्स ऑफ द मोमेंटम, तो इसलिए आई डोंट थिंक वो हिसाब से बहुत प्लेयर्स को फर्क पड़ा होगा। हाँ, ये है कि एक छोटा सा ब्रेक जिन लोग को मिला है, दे विल बी फ्रेशर, दोस प्लेयर्स विल बी फ्रेशर, सो दैट इज द ओनली डिफरेंस दैट आई सी। बट ऐसा कुछ अब तक अपसेट तो हुआ नहीं है किसी भी, लाइक अब तक जितने भी रिजल्ट्स हमने देखे, आई हैव नॉट सीन एनी अपसेट इन एनी ऑफ देम, एंड आई डोंट एक्सपेक्ट टू। लेट्स सी आई मीन अभी तो कितना 15 मैचेस हुए 15-16 मैचेस हुए तो इट्स गोइंग टू बी अ बिग सीजन लेट्स सी who can No, keep the I'm talking momentum. about, Hmm, yeah, yes, of hmm. course, but I'm talking about Yeah, the next few weeks, like the if yeah. impact of the No, World I Cup, understand. right? I understand. Mm, Yeah. yeah, so Completely understand. as you Yeah. mentioned that कोई भी टीम का फॉर्म ऐसा कोई बदला बदला नहीं लग रहा,
So I'm just Correct, putting correct. that into the perspective of the numbers, Mm-hmm. that Mm-hmm. even like at most any team would have just played 7 matches at the World Cup, and that is mainly, only Argentine and French players who would have played that. So Correct, correct. um, yeah, so that's my point. So World Cup at Gakko पर जिमखाना, Pedri taking a throwing and people screaming, air lamp फेंक तेरे कुतरे so Good one, so good Ghat one. Copper Turf, they will all the players will be paying like about 300 rupees per head contribution. 3 और minutes वही extra तो time. बट यार हाँ एक चीज मिस कर रहा हूँ यार मैं वर्ल्ड कप का, वो क्या एडेड टाइम इंजरी टाइम जो 8-9 मिनट का होता था अभी नहीं है, वो 2-3 मिनट का ही है. हाँ वही 8 minutes, 9 minutes या 11 minutes अबे क्या पका इंजरी पका टाइम. दिया था भाई वो, वर्ल्ड कप तो पूरा पका दिया था उन्होंने इंजरी टाइम पे. हाँ. एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि उसमें लॉजिक क्या था. लाइक अचानक से ही 10 मिनट 8 मिनट, क्या ही ये ट्रेंड था. लाइक वेयर इज ये द टीम ट्रेंड नहीं कमिंग था. फ्रॉम. It was decided by the head of referees, our या very बट beloved व्हाई. Periologi Colina, जो इटालियन रेफरी था, one of the best हाँ. referees. डिसाइड किया था कि नो, देयर वोंट बी अ सेकंड वेस्टेड इन द गेम. तो एक भी सेकंड वेस्ट किया, दे विल हैव टू पुट इट इन द इंजरी टाइम. वी डोंट वांट टू वेस्ट अ सेकंड ऑफ द वर्ल्ड कप. तो they said that players think they can get away with wasting time and all those tactics, but it won't happen. हम्म, So that was the basic idea of Perilogi Colina, a famous Italian referee, who is now अच्छा head of referees. तो वो उसका आइडिया था ये. So free kick there, and अच्छा. सो what a सो miss by Darwin अच्छा ओके. Núñez. सो मेरे इसमें तो अभी फ्री किक लिया भी नहीं है उसने, बट नाउ आई नो अभी दैट लेगा ही डार्विन देखना. मिस्ड. न्यूनेस क्या प्लेयर है हाँ. यार. बट हाँ, आई वाज सेइंग दिव्या, अगर ऐसा ही है तो यू नो इट्स गुड के एथलेटिको मैड्रिड आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन एनी हराम बॉल. फीफा टूर्नामेंट. हाँ. हराम बॉल, हराम बॉल. हराम बॉल. हाँ वही. वरना मतलब 30 25 30 मिनट्स तो सिर्फ एट टाइम का हो जाता था. हाँ. मैं बोला ना, अगर दिस अर्जेंटीनियन स्क्वाड वाज मैनेज्ड बाय व्हाट यू कॉल डिएगो सिमियोने, भाई हाँ. चांस ही नहीं था फ्रांस का टू स्कोर. क्यों? 11 वाई प्लेयर्स डू भाई से? इनसाइड, 11 प्लेयर्स इनसाइड द बॉक्स, भाई कहाँ से स्कोर करेगा मेरे को बता दे. हराम बॉल, वही बोल रहा हूँ ना. हाँ बट एथलेटिको के अगेंस्ट भी स्कोर तो कर ही लेते हैं ना लोग. सो हाँ बट प्लेयर्स भी देख लेना. हाँ वो भी है. हाँ उसके पास यहाँ पे प्लेयर्स ज्यादा अच्छे थे, बट सिमियोनी इफ ही एवर कोचेज द नेशनल टीम, वो यूरुग्वाई का एक के लिए मुझे परफेक्ट लग रहा है फॉर सम रीजन. आई डोंट थिंक ही विल कोच नहीं यार, अर्जेंटीना. अर्जेंटीना जॉब ले सकता है वो, और प्रोबब्ली कैन नहीं. टेक द इंटर जॉब ले विच No, सकता वन? I don't think so. कौन सा जॉब? है. इंटर बिकॉज ही वाज एन Inter, एक्स हाँ, सेंटर Inter, प्लेयर. हाँ Inter is इंटर ले always a सकता है. possibility. Inter is हाँ always a possibility, but इंटर Argentina, I और don't think so. लाजियो है, बट अर्जेंटीना आई डोंट थिंक ही विल गो. या आई मीन इफ ही डज टेक अ नेशनल टीम पोचेटिनो जॉब, आई थिंक पोचेटिनो ही को तो विल मेरे को टेक नहीं लग रहा है मिलेगा. यूरुग्वाई. पोचेटिनो इज पोचेटिनो नॉट को लाइक, कौन? वेयर? आई डोंट थिंक ही Argentina, Argentina coach. अर्जेंटीना. He's an अच्छा हाँ. Argentine, Pochettino. हाँ. हाँ नहीं अर्जेंटीना का पॉसिबल. तो आई मीन ये जो कोच है, आई डोंट थिंक ही हैज रिजाइंड, राइट? तो नहीं ब्राजील का. रिजाइन नहीं, No, अगर no, he अगर hasn't. पॉसिबली, अगर इफ दे हाँ वांट टू लाइक रिप्लेस दे कैन गेट दिस गाय ना. ऑलरेडी लाइक इनका सेकंड टीम जो है, मतलब अंडर 20 का, इट इज मैनेज बाय हाँ माशेरानो. तो माशेरानो कैन गेट द मेन स्क्वाड. हाँ. सो ये क्या बोलता है, मैंने ये ब्राजील के लिए आज पढ़ा कि इनिशियली पहले पेप का बहुत नाम चल रहा था. नाउ ऑल ऑफ अ सडन दे आर सेइंग कि जिडान को लेंगे, बिकॉज जिडान वाज वेटिंग फॉर द फ्रांस जॉब, बट देशॉम्प इज नॉट स्टेपिंग डाउन, सो नाउ ही माइट जस्ट गो टू ब्राजील. सो क्या पता. Hmm. मैं तो मोरिनियो का नाम सुना था अभी. मोरिनो इज फॉर Mourinho is पोर्टुगल. for Portugal. Portugal. हाँ. Mourinho is Portugal. नहीं, हाँ. ब्राजील में भी आया है. आई वाज नहीं नहीं, कंसीडरिंग हिज नेम. मैंने नहीं सुना नहीं, I ब्राजील में. don't think. बट It's half time. मोरिनो फॉर 2 minutes ब्राजील विल for बी Liverpool. हॉरिबल. Vinicius is left back. Vinicius and Rodrigo as left Hmm. back. Left back, right back. लेफ्ट भाई बैक राइट बैक. कोई गोल नहीं वही. मारेगा. MJ says, MJ says, I feel Barca will lose against United. I hope that happens. Hmm. Yeah, he Mm, has also said Eric Xavi Ten, versus Xavi PH. versus Eric Ten Hag, haram ball Haram classico. ball classico. दोनों हाँ भागेंगे United and Barcelona. Pochettino for England job.
अरे इंग्लैंड तो हाँ, अब गैरेथ साउथगेट ही है. that is the No, no, rumor that it's I Gareth also heard. Southgate. No, no, no. हाँ, Gareth Southgate is going to continue. हाँ, So नहीं, अगर ये इतना पोचेटिनो जल्दी को उसे जॉब मिला तो आई डोंट थिंक पोचेटिनो इज नॉट अ like a good manager to manage a great squad. No. हाँ. Exactly. He is मतलब Zidane का जो ब्राजील का लिंक है that is understandable because Zidane is like a man manager. तो he just Hmm. manages the players and tries Yeah. to get the best out of them. तो वो and knockouts के लिए he is perfect like for Copa America, World Cups and all. Knockout Yeah. टूर्नामेंट में उसका रिकॉर्ड अच्छा है. That makes sense. पेप को भी चलो एक बार मान सकते हैं कि नेशनल मैंने टीम के हिसाब से. मैंने सुना था ब्राजील के लिए कार्लो एंसोलोटी. That's what I heard. हाँ, that was But yeah, yeah. I Brazil is remember not. we had मैं discussed बोलूँ, that. but हाँ, Brazil actually पता है is not meant for those that haram ball. What do you call? Uh, because Ancelotti is a very conservative sort of a manager. नहीं. वो बोलेगा भाई एंचेलोटी पीछे कैन अटैक. पीछे. नहीं नहीं, हाँ, Look at but it. एंचेलोटी बहुत कैन अटैक. डायरेक्ट है. बहुत डायरेक्ट है. बहुत हाँ, डायरेक्ट है. but एग्जैक्टली. या थोड़ा I when feel he has a conservative approach मेरे हिसाब से तो. नहीं, इट नहीं, I mean, डिपेंड्स लाइक it एंचेलोटी इज game to मोर game लाइक है. हाँ, गेम Sometimes टू गेम. sometimes every team needs to have that approach at times because हाँ, when you have a team who is much more stronger than you in terms of squad, you will turn to that approach. Game to game है. Otherwise, Ancelotti का approach तो बहुत direct है. I've seen वो Real Madrid हाँ. the way he plays. So अच्छा, the it's thing good. No, with it's not the thing with conservative. with Ancelotti is कि he can play what like however it is required. मतलब मुझे याद है कि मिलान में उसका मिलान टीम when they used to attack वो लोग करते थे और कभी कभार अरे एकदम superb था. पकाओ भी खेलते Defense थे. भी करते थे. हाँ, हाँ. डिफेंड भी करते थे लाइक वो जो चैंपियंस लीग फाइनल था उन लोग का यूवे के अगेंस्ट. ओ माय गॉड, इतना पकाऊ फाइनल था वो. सो वो लोग वैसे भी खेल सकते हैं. हाँ, Penalties में they won. Yeah, I know. हाँ, Yeah. एग्जैक्टली. सो वो भी वैसा कर सकता है तो बट इज लाइक अभी गॉट वेरी सिमिलर फुटबॉल स्टाइल ना इसका. अटैक. क्या नाम है इसका? He was very influenced by this Italian coach ना. I अरिगो forget साची. his name. अरिगो साची. Aragosati. हाँ, Aragosati. अरिगो साची He बट was that देन AC वही Milan तो वाला एकदम डायरेक्ट that है player वो. ना, that हाँ, had हाँ. beaten Barcelona 4-0, Cruyff's dream team. I don't remember exactly but हाँ, I that was think Arrigo Sacchi. But that was or as it a was coach. Hoem or Fabio Capello, either of them. दोनों में से कोई तो था. कैपेलो तो I'm not sure. जो टीम एसी मिलान और यूवेंटस का मैच जो रेफर कर रहा था प्रशांत, उसमें मिलान का मैनेजर एंसेलोटी था. आई थिंक यूवेंटस का मैनेजर कैपेलो था. राइट नहीं, प्रशांत? If I'm not नहीं. नहीं, कैपेलो आई It थिंक was this यूवेंटस. guy. No, तब भी वो वाले फाइनल में it was this guy. लिप्पी, मार्चेलो लिप्पी. हाँ, तब मार्सेलो भी लिपि. करेक्ट करेक्ट हाँ, करेक्ट. यस यस यस. तो तब भी वो मैनेजर था उन करेक्ट. लोग का. So हाँ. Anyway, But वही मैं so सोचता हूँ at times, like how that squad never managed to win that Champions League. भाई इतने तगड़े players थे भाई, मतलब Juventus were like far better squad than AC Milan. नहीं वो भाई, तो एसी मिलान भी बहुत सही यूवे था. का यूवे मतलब एसी लाइक हाँ मिलान भी बहुत चैंपियंस. सही नहीं था. हाँ, नहीं, AC वही. Milan was good, but that US squad had Nedved and what हाँ, क्या नाम है इसका, डेल Trezeguet and पियरो. this guy ना क्या, Del डेल Piero, पियरो हाँ, भाई. हाँ, बट that team. मिलान का भी बहुत सही था. दे हैड सेडॉफ, दे शेवचेंको. हैड हाँ, हम्म, शेवचेंको, पियरलो, फिर वो क्या Pirlo. नाम उसका और एक था काका. मिडफील्डर. दे हैड अ स्क्वाड. काफू. कक्का तो था ही. कफू, दे हैड हम्म, गटुसो, जिनारो सीडोफ. गटुसो था. that is so हाँ. गेटूसो. सेडॉफ हाँ, था, क्लैरेंस सेडॉफ. एंड देन दे हैड दिस फुल बैक्स. काफू था. एंड देन दे हैड हम्म, मार्डिनी, नेस्टा, बुफॉन एज द हम्म. कीपर. यूवेंटस का बुफॉन था. मिलान का कीपर कौन था तभी? काफू. काफू, यस. तो उनका I स्क्वाड तो think सुपर था. हरनान. नहीं, काफू Cannavaro was था not a ना, keeper. Cannavaro was मतलब their ये player ना. काफू वाज दी राइट बैक. कीपर का नाम हाँ, क्या था? डीडा. आई थिंक डीडा, राइट? Dida, डीडा. ब्राजीलियन Dida. गोलकीपर था डीडा. यस Yep. यस. Yeah. स्ट्राइकर उनके हर्नान क्रेस्पो और शेवचेंको थे. एंड देन देयर वाज आल्सो Hmm. दिस गाय इंजागी, फिलिपो इंजागी. Inzaghi. हाँ, Pipo. Pipo Inzaghi. Yes. Guys, what do you So think about Dibu Martinez? You think he deserved the Golden Glove? Emi I thought he Hernandez, did. Emi Martinez. एमी मार्टिनेज, Yeah. यस यस. Hmm. या आई थॉट ही डिड. हाँ, ही डिड. yeah. लोग बोल रहे थे Yeah. वो क्रोएशिया गोलकीपर, बट गोल्डन Hmm. ग्लव शुड गो टू मार्टिनेज बिकॉज he saved them in two penalty shootouts. It's not just the Hmm. final one. If you look at the Yeah. Holland, Netherlands, Argentina, they also went to penalty shootout, and he Yeah. was the hero of that penalty And shootout. that So, final save, I, 128th hmm, minute save हाँ. against correct, the final Colomboani. save, yes, yes.
भाई correct, बट correct. मुझे तो उसका वो फोटो बहुत आइकॉनिक लगा जो उसका फेमस हुआ है वो और हैंड ग्लव के साथ करके सो बिकॉज सिंपली बिकॉज वो एक बहुत एक तो वो कतार में हो रहा था तो लोग बोल रहे थे कि एकदम कंजर्वेटिव है ये है वो भाई कुछ या फर्क ही नहीं पड़ता भाई को भाई ने जाके कर दिया या उसको फर्क ही नहीं पड़ा। हाँ सो एंड बिकॉज इवन दो ये कतर है बट वो लोग ने भी मतलब कुछ किया नहीं उसको ऑब्वियसली स्टार है क्यों या करेंगे दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। सो FA भी ओके like आई मैं जस्ट बर्बाद होना चाहती हूँ. Yes, easy. हाँ या अच्छा आई जस्ट कम बैक फॉर अ सेकंड इन अ सेकंड मैं पानी पी के आता हूँ ओके जस्ट गिव मी अ हाँ, मिनट Yes, टेक योर Prashant, टाइम, टेक please, योर टाइम। please consume as much as what you want. यस। Hearing that might go could go for Martinez, Emmy. I don't think so. हम्म। I think Manchester United are looking at the FC Porto goalkeeper Diego. Forgot his name. So Diego, I don't remember his last name. That is the goalkeeper that United are looking to buy, and most probably he will be the United goalkeeper if David doesn't extend his contract. So let's see. Your once Prashant comes back, we'll discuss about transfer rumors. बहुत सारे rumors आए आज Aston के Villa दिन. are planning to sell Coutinho, by the way, huh? या वो तो हमने पहले डिस्कस किया था. बिफोर यू केम हमने वही डिस्कस किया था. And Barcelona यस. will earn 50% of the profit. कितना प्रॉफिट पैसा मिलेगा? ही आई थिंक 15-20 मिनट भाई, ज्यादा नहीं जाएगा. जो भी है भाई, 1 बिलियन का डेट है वो और चुकाना है भाई। Let's see. I think yes, Aston Villa are looking to sell offload Felipe Coutinho in the January transfer हम्म। window. So let's see. Uh, MJ says Di Maria or Ozil, two different players. MJ, one was a traditional winger and one is a more of a number 10. But yes, I liked Ozil a lot. मुझे बहुत सही लगता था Ozil. His creativity was Played superb. for a wrong team. Played for a wrong team though. Sorry, played for a wrong team. I'm बोल saying सकते he हैं, played बोल for a सकते wrong हैं. team. Yeah. बोल सकते हैं. Yeah, we could say that. But yes, he was really passing the World Cup vision जो था वो बहुत ही fantastic था. Some of his passes Very good. when he played for Arsenal, he was brilliant, हाँ। fantastic. So not sure about the wrong team, right team, but हाँ मुझे तो बहुत out of if you I ask me. always preferred like that one player that I always liked. अगर ये he would have played with what do you call Iniesta and Xavi, एक खत्म था वो टीम। Ozil. Ozil was a very commanding player ना। बॉल उसको बॉल दो, Yeah, he can बहुत do अच्छा था. wonders. उसका Yeah. टचेस बहुत सही था. उसका Yeah. First awareness touch of was like players around brilliant. him. Yeah. Awareness of players around him. He knew where the striker was. He knew the striker's position. He could just Yep. not see the striker and still pass the ball to him. That's how good he was. So That's yeah, true. with Ozil, though, one of my favorite players, Mr. Ozil. Sad that his career had to end that way. He was not selected for Arsenal team. He continued to be in the squad for 6 months, but couldn't play a single minute. So it was sad ending to the Arsenal career. But then yes, overall on peak पे बहुत ही fantastic player था. In fact, Hmm. even Di Maria was brilliant. He was the part of that team which won the Champions League, the Real Madrid team. Where they had Ancelotti as a Yeah. manager. That's when the streak of Champions League started back in 2014. Yeah. So yes, Yeah. he played really well for PSG as well. Only his 1 year stint with Manchester United. That's the only time that didn't work. Otherwise, overall, his career was also fantastic. Di Maria, won That's the true. La Liga, won the League One title. So won multiple trophies, won the uh, Champions League as well with Real Madrid. So he's won everything, and at the end of his career, he won the World Cup. So fantastic career for another brilliant player. But yes, if you would look at the trophy wise, maybe Di Maria had more trophies. But personally, my Hmm. favorite was Mesut Ozil out of the two. Yeah. And incredible Mbappe and Haaland together nearly have 90 goals this season. Yeah, it is indeed incredible. It is indeed incredible. But I think Mbappe needs to go to a different league and challenge himself because he's not going to. It's going to be same thing. It's going to be very easy scoring goals in League One for him. He needs to go to either La Liga or Premier League and challenge himself because there is not a much of a challenge in the League One, French league. So
I I hope he moves to a different club in summer transfer window. I'm not expecting that kind of transfer in January, but yes, in summer he Yeah, moves to Real Madrid or a Premier League club. Let's see which team ends up signing him. But yes, he needs to challenge himself. He needs to move out of that league because it's yeah, becoming a cakewalk for him to score in every game. हर गेम में वो स्कोर कर रहा yeah. है because of the उतना कॉम्पिटिटिव नहीं है सारे टीम्स मे बी वन और टू टीम्स लियोन है लिल है मे बी Hmm. नाइनटेस कपल ऑफ टीम्स हियर एंड देयर अपार्ट फ्रॉम दैट 14-15 टीम तो बहुत ही मतलब पीएसजी के लेवल से बहुत नीचे है बहुत पीछे है एंड इट्स अ केक वॉक फॉर देम टू स्कोर गोल्स एंड विन दोस गेम्स सो आई थिंक ही नीड्स टू That's चैलेंज true. हिमसेल्फ Messi alone had 91 in 2012. Yeah, he did. That was one of the most memorable years for Lionel Messi. 91 goals in That's the true. calendar year for Messi. अगेन भाई नेक्स्ट गेम को क्या बोलते हो आर्सेनल वर्सेस ये वेस्ट हैम योर प्रेडिक्शंस This time वही it's at Emirates, no? So I think 1-0 या 2-0 to Arsenal या 2-1. they should make another award for Messi and give Ballon d'Or to second best player. There है ना, they're actually making, they're giving him the super Ballon d'Or ना बोल रहे हैं. सुपर बैलेंड और हाँ मैंने भी सुना है नॉट श्योर हाउ बट यार ये सब इतना नहीं ज्यादा नहीं करना चाहिए यार ये तो फिर बहुत ही No, they've जबरदस्त already given to this guy ना, क्या नाम है इसका, Di Stefano को दिया था last, the super Ballon हाँ d'Or. डेफ स्टेफानो को करेक्ट डेफ Hmm. स्टेफानो वाज द लास्ट वन Yeah. Arteta ball is back and 3-1 to Arteta yeah I think so Let's Aston see. Villa should sorry Arsenal should win that game I think lineup आज आ गया होगा right no another half an hour to go for the lineup but yes Arsenal will be without Gabriel Jesus, but I think Eddie Nketiah will do the job. Shouldn't be a problem. The lineups are not yet out. मेरे को लगता है एमी मार्टिनेज छोड़ देगा आस्टन विला. Maybe in summer, not now in January. Yeah. Summer में he will go to अगर रेलीगेट a हो गया bigger तो club. डेफिनेटली निकलेगा. रेलीगेट I होगा don't तो think they will be डेफिनेटली निकलेगा. relegate तो नहीं होंगे वो. I don't think relegate होंगे वो. Right now they are on क्या position पे? Aston Villa 16. 12th position पे. So I don't think 12 पे है क्या? Aston Villa will get relegated 12th पे. Chances Southampton का बहुत ज्यादा है. Nottingham Forest another team. And then maybe Everton और Wolves out of the two, one other to the two. But Southampton हम्म. Forest का तो बहुत ज्यादा चांस लग रहा है relegate होने का. हम्म. प्रशांत चला गया क्या? 3-1 Arteta. नेटवर्क. No, he's coming. He's coming. He should join. Low-key don't want to see Barca 2-2 with Espanyol and then here we are rebuilding. क्या अवे मैच है क्या? Are Barcelona playing Espanyol next? Agreed, हाँ, bhai? 6:30. हाँ, 6:30 बजे शाम को, 31st को. Okay. 31st. Okay. हाँ. So La Liga is हम्म. returning 5 days later. But Yes. yes, Yes. a good contest. In the past, Espanyol have troubled Barcelona a lot. We've known that. So it's not going to be easy for Barcelona. But for the first time under Xavi, he has his full team available. There, he's not even missing out one single player due to injuries and suspension. Every player will be there, including Araujo is back. Every other player is back for Xavi. So it will be an interesting one. आगे कुछ games डिफिकल्ट नहीं होनी चाहिए उनके लिए दे शुड इजीली विन दोस गेम्स You बट know, they've यस not beaten Barcelona in 11 years, by the way, Espanyol. दे हैवंट बीटन Not बार्सिलोना 11, 13. ओके 13 years. 13 years. 13 years ओके से they have ओके not beaten इंटरेस्टिंग Barcelona. फैक्ट या Yeah. या देयर बेटर राइवल्स इट्स अ डार्बी गेम हम्म. कैटालोनिया Yeah. डार्बी और लास्ट पता है कौन जीता था उनको? पोचिटिनो. Pochettino yes I remember Pochettino before he moved to हम्म. Southampton La Yeah. Liga make sure RNNY New is Year. ruined sorry I didn't क्या 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 अरे मतलब है बोल इसका रहा है थोड़ा न्यू ईयर्स इवनिंग, न्यू ईयर्स ईव. New Year our New Year. Yeah, our New Year's Eve is ruined. Yes. But yes, मेरे को लग रहा है जीत जाएगा, बट नॉट एग्जैक्टली, आई hmm, मीन नॉट कन्विंसिंग hmm, विद व्हाट यू कॉल hmm, व्हेन यू हैव लेवेंडोस्की इन योर साइड ना. hmm, hmm, correct.
Okay. The game is about to begin anytime. हम्म आपका फेवरेट वर्ल्ड कप मोमेंट कौन सा था? This World Cup. या This World Cup. कौन सा था? Let me jog back my memory. Uh, Felix to Chelsea. Yes, yes. Once Prashant comes, we'll discuss about that as well. Yes, Felix to Chelsea. Favorite World Cup moment was um, which was what? I thought the Portugal Morocco. Morocco beating Portugal. That was one of my favorite moments. And it was not like the Greece जिस तरह से यूरो जीते थे उस तरह से खेले थे मोरक्को वर प्लेइंग रियली वेल वैसा नहीं कि गोल मार के वो लोग सिटिंग बैक whenever they had a chance to attack they were attacking so that was one of the best moments of the World Cup and of course the final game fantastic final one of the top one of the best finals we've had in a very long time so yeah two of my favorite moments the final game and of course Morocco beating Portugal Messi renewing at Paris. Yes, yes, we've heard about that as well. Messi renewing his लाइक contract at PSG. या Second half has started. shouldn't come back to Barcelona मेरे हिसाब से तो doesn't make sense to come back to Barcelona. Because I want That him to Messi like lads scared to yeah play Real Zaragoza now. या Yeah, सब तो Azim कर bhai, लिया है sorry you're बेचारे saying. ने. Hmm. मैं बोल रहा था सब तो कर लिया है. Why would he come back to Barcelona and start because he's not like 21 or 22 na. He's 35. Correct. I agree with you on that. I agree Yeah, with you on should that. play his like final years in a club where he's winning na something. Chance here and Aston Villa pulled one back. I think it's offside. Should be offside. Yes, it is. Ollie Watkins offside. Nicely taken goal, but oh, slight offside. Nicely done by Matip to keep him offside. How can we afford him? Exactly my point. Exactly my point. Barcelona should not, go for Leo Messi. Should rather prefer signing a young player who can be, their future. And they need someone in the middle of the park if Busquets goes, and they need a wing back. These two positions priority for Barcelona. Someone in the center of the park, a defensive midfielder, and a wing back. Especially a right back is the most priority, as we discussed in the last video. उसके पिछले सारे भी नहीं पे हुए अभी तक उसको प्रशांत इज बैक उसको कौन सा फर्क पड़ता है यार. Yeah. no we were talking Uh, about Leo Messi signing a new हाँ, contract so agreeing by saying it doesn't make any sense for Messi to come back to Barcelona it doesn't. He's right. मतलब वैसे भी see he has a very good example now कि these dream reunions don't always work specifically yeah when the club so हाँ ठीक है मतलब maybe as an ambassador or something down the line but Yeah, for the moment he should actually go on and explore his career और वैसे भी yeah, he has spent enough time at Barca like exactly. throughout his career Yeah, तो बहुत कर लिया he भाई, does बहुत कर not लिया. हाँ अभी वो अगर निकल ही गया तो अच्छे से काफी सारे he should Yeah, play for as many clubs as possible. To be honest, yeah, Paris, although वो Paris लोग बोल रहे it's a new club, new league and everything, but Paris is the best second option. मतलब अगर उसे कहीं move करना था, so the easiest option to move from Barca would have been Paris, even not just from a club perspective, but even from a city to city perspective, because yeah, Paris and Hmm. Barcelona have very, they are culturally very similar. They have a lot of cultural connections as well. So yeah, उसको वहां पे उतना ये नहीं लगा होगा लाइक नया सिटी वाला जो वाइब वगैरह है जो मूव करके जो फुल जो ये होता है वो उसको वहां पे उस हिसाब से नहीं लगा होगा लाइक फॉर एग्जांपल अगर वो बार्सिलोना से म्यूनिक जाता या मैनचेस्टर जाता ठीक है तो वो mm, उसको एक्चुअली में लगता है कि भाई मैं नए लीग में आया हूँ जबकि यहाँ पे तो क्या yeah. है एक तो वो पीएसजी में विच आर अ टीम विच इज ऑलरेडी डोमिनेटिंग द लीग तो कुछ उतना फर्क नहीं पड़ा so That, he yeah, if he has Amshika, to challenge himself he has to still go somewhere. I will agree with Amsh's point.
बारसा बारसा ही पनौती ही था उसके पनौती लिए। थी। बारसा बारसा छोड़ छोड़ते के ही सब सब कुछ। ट्रॉफी जीतने लग गया। अब देखते हैं चैंपियंस लीग जीतता है या नहीं, बट हाँ But वो भी जीत सकता guys, have you ever noticed this time? है। क्या? The best players from Barcelona has never won the World Cup except for Romario. रिवाल्डो हैज वन। Xavi, Iniesta, Xavi, हाँ Iniesta won the World Cup. No, no, the best player, the superstar player. तो Okay. जावी I think नेस्टा Iniesta तो superstar थे Yeah, यार. but सुपरस्टार there are थे like So they यार। different played with between. No, no, Messi. no, no, no. When you talk about like superstar players, ना जैसे Messi हो गया, you had Ronaldinho on that spot, but Ronaldinho was already a winner with Yeah, PSG, by the ना? when he joined So Barcelona, he when was he, already a winner. हाँ, Correct. he was already a yeah, winner, हाँ। Hmm. So yeah. अच्छा, So Barca no, and Paris are except for culturally, sorry, sorry Agrim, please yeah. finish your point. I'll read the comment later. That's what I'm saying. Like Romario को छोड़ के आज तक कोई Barcelona like superstar has never won the World Cup. हाँ, even Proper R9 didn't superstar has win when he was at Barca, right? He no won when he was with Inter, at Inter. correct? Yeah, हाँ, yeah. right. So हाँ, maybe. I mean, even look, Uh, Diego Maradona, when he left Barcelona, then he won hmm, the World Cup when he was at Napoli. हाँ, right. He won when he मतलब was there's at something bad about Barcelona. हाँ, maybe you never know. अच्छा, Yeah. ये just to respond to MK's comments. uh, तो I am not talking about only the riots. Riots तो है, but वो वाला जो एंगल है वो भी यू कैन से इट इज नॉट इनकरेक्ट, मतलब दोनों जगह पे वो सिचुएशन काफी सिमिलर है राइट्स वगैरह को लेके। बट माय पॉइंट बीइंग हियर दैट इवन हिस्टोरिकली अगर तुम देखोगे कैटलान लैंग्वेज जो है, एंड Hmm. अग्रीम बीइंग अ बार्सिलोना फैन आई थिंक ही विल बी एबल टू सेकंड दिस Yeah, के हाँ yeah, ultras तो हैं उनके. कैटल हाँ What a run by कैटलोनिया का Salah. Just watch. What a run by Salah. हाँ Fantastic. I thought But they're that would already go in. banned, ना? I Huh. think Paris के ultras have never been banned. उनके हाँ, yeah, no, ultras I'm always not come. talking about the ultras agreement, like दोनों जो cities है, like geographically culturally पेरिस एंड Hmm. बार्सिलोना में बहुत similarities है आर्किटेक्चर Yeah, वाइज, yeah, और वो सब तरीके से। So what a lot yeah. of people don't actually know, maybe even y'all might not know कि जो Eiffel Tower which is currently very iconic, right, for Paris, it was at one point offered to Barcelona. That's Was a Okay. offered to Barcelona. हाँ, yes. So Hmm. the जब पेरिस को वो ऑफर किया, like when they were about to make it in Paris, they were like हम लोग को नहीं चाहिए, this will spoil our city's architecture, बार्सिलोना को दे दो। बार्सिलोना ने बोला हमें हमें भी नहीं चाहिए, तो फिर वो लोग ने पेरिस में ही घुमा फिरा के सब करवा दिया। So anyway, For sure. इतना हाँ hmm. But anyway, that one what you call piece of monument doesn't change like anything, na, about a football what do you call city's fortune. हाँ हाँ, I'm not talking about the fortune, I'm just talking about the similarities that the Yeah, history and everything that they share. So yeah, but हाँ अच्छा, because Paris has never been a what do you call a revolutionary club, na, unlike sorry, Barcelona. which one? हाँ, पेरिस, yeah, they have Yeah, not been, yeah, and until yeah, PSG तो मतलब उन लोग का कुछ था भी नहीं। Actually yeah. before That no PSG they existence. had another club which was Paris FC, Yeah, which was Paris like the FC. main वो अभी club। हाँ they still have Paris FC. हाँ, they still have it but they are not doing that Yeah, well। अच्छा, एमशे yeah. बोल रहा है वो अमीर आदमी पनवेल में भी अपना वाइब बना सकता है। कौन? कौन एग्जैक्टली किसकी I बात think कर रहा उसकी है? बात कर रहे हैं. हाँ Is he talking about the architecture guy? नहीं, गाउडी, गाउडी को कहाँ मेंशन किया हमने? Okay. So guys, एनीवे I हाँ think yeah, I wanted to talk about transfers. A lot of हाँ news has come out. So first, I think let's speak about João Felix. Is now today linked to Chelsea. Chelsea want to take him on loan and then with an option to buy. या So Chelsea are in desperate need of a striker. So are United and Arsenal as well. Well, I हम्म think he's most likely go to Arsenal, but now Chelsea now in the mix, so that will be another one. United तो मुझे लगता नहीं आएगा. United I think focused on Cody Gakpo. I think that हम्म will be the signing Man United will make. And Prashant, me and Agrim spoke about Gakpo. Sorry, João Felix. आपको क्या लगता है? João Felix will go to Arsenal or Chelsea or will stay at Atletico Madrid? And हाँ will he be able to, uh, adapt to Premier League's physicality and high pressing and high intensity game?
थोड़ा टाइम तो लगेगा. He will need some time to adjust to the physicality, no matter how good he is. Um, but my point would be that out of the three names that you mentioned, सबसे ज़्यादा the most efficient in the most efficient club in terms of signing players as of now, in my opinion, is Chelsea. Like Hmm. in terms of not necessarily as a team, but in terms of the way they are signing up players, like they have already signed Nkunku, from what I know. So that is something that they are quite good at. जबकि Hmm. आर्सेनल का थोड़ा बहुत their signings are not that मतलब efficient, उतना fast नहीं है उन लोग का भी process. और यूनाइटेड का तो अपने को पता ही है, we have spoken enough about them already. So um, yeah, I think in considering that factor, I think he will actually end up at Chelsea. That's a very real possibility. And if he does come to Chelsea, I think maybe he would at least take 2 games to adjust to the Premier League. At least 2 games, because Okay. हाँ, because उसका खुद का जो he has like a low, he's a thin player, right? He has a low center of gravity. So actually City would have been more suitable. I just मतलब वैसे for a player like him with his physique. But if he does come to Chelsea, he will adjust, but it will take him a little longer. And God knows Okay. Graham Potter कैसे उसको use करेगा. हाँ, tell me. गुड पॉइंट, गुड पॉइंट प्रशांत, आई फील द सेम वे. मुझे लगता है 2 गेम नहीं, ज्यादा लगेंगे, 4 या 5 गेम लगेंगे, बट यस मिनिमम 2 गेम्स तो लगेगा एडजस्ट करने के लिए. ऑन द Yeah, मनी, exactly. Prashant, and I think I thought Arsenal are favorites, were favorites to sign him until yesterday, but now that Chelsea are in the mix, maybe because Chelsea have the money, Chelsea need a striker. And like MC pointed out, Chelsea have two options: CR7 Oba Lukaku or Nkunku Felix Oba. I think Nkunku is definitely done, so he will be a Chelsea player next season, and Aubameyang will be there. And if they can get Felix, it will be a good front three. I think they will let Yeah, go of Ziyech and Pulisic, the two players that are looking to move out of Chelsea, Ziyech yeah. and Pulisic. But yes, and Kuku, Felix, Oba, good, a good future for Chelsea. Maybe Oba will leave in a year or two, but Nkunku and Felix will be our top forwards in the upcoming years. So let's see. Hmm. Nkunku तो बहुत ही fantastic signing है Chelsea ने किया है. He's more of reminds more of a Griezmann style player who can play as a forward or and a number 10 as well. अच्छा, okay. So So talking about other transfers, Prashant, your thoughts on this Cody Gakpo guy? Looks like Manchester United will end up signing him. He wants to play for United. He's got the same agent as Eric Ten Hag, and United Hmm. are looking to close the deal. Do you think he will be a success at United, or he will end up being another Memphis Depay? No, he will not be another Memphis Depay, simply because when Memphis Depay was signed by United, he was still an unknown quantity. Uh, Mhm. as in, he did not have that reputation. He just had the Eredivisie record to back him up. Uh, Gakpo is someone that everyone has seen. So Ten Hag would be, Ten Hag would know that he has had a bit of a more exposure at a world stage. Although World Cup may not necessarily always be the correct place to judge someone, but Gakpo's record overall, not just even for the national team, even for PSV, has been good. So it's in conjunction. Whereas for Mm. Depay, the case was that he just had like one It or was two good very seasons. similar. No. It was very similar. It was very similar. I remember Depay. He had that World Cup of 2014 with him, where he was a young player who No, went but into he the was not. finals, and then But he yeah, was he not was. in the. But in 2014, he was not. He was not the star of the Dutch team. Yes, because they already had Robin and Van Persie. Snyder. Yeah, Netherlands in but this World Cup Snyder. didn't have anyone like that. So, and yeah, but also, if you look at the stats, Memphis mhm, Depay had 25, 26 goal contribution. He was a top scorer in Eredivisie before United arrived at Manchester United. The previous Yeah. season, he was a top scorer in Eredivisie. I right. I agree to your point that he will not be a goal for Aston Villa. Is that counted? Yes, Okay. it's counted. Okay. So Scored by Aston Ollie Villa have Watkins. Villa are doing well in the second Yeah, half. They playing very got well. off to a good Second half, they're Yeah. playing start. really well. As Yes, we are discussing all of this, Aston Villa are actually they have done pretty well in the second half. They have come out all guns nice blazing, header. which is good.
so they are not holding back anymore. And maybe because they are already 2 goals down, they can just go for it. So yeah, okay, I see the goal now. uh, it's scored by, I believe, Tyron Mings, is it? No, Ollie But Watkins. Oliver Ollie Watkins, yeah. Watkins. Yeah, So the striker. but a good goal, a good header. So yeah, coming back to the point about Gakpo, Divya. So uh, and the worst thing about Depay was that he was a young player, and when he joined United, he joined Van Gaal's United. Ten Hag Hmm. is definitely a better manager. Uh, you Yeah, know, and I agree with you, so Prashant. Also, I wanted to bring in this point because when you look at both these players playing, Memphis was a very young player who was trying to mm, take on a lot of defenders, trying too many dribbles. Gakpo is not that. When you watch Gakpo play, he's very mature player at this age. He plays very maturely. His passing is fantastic. His goal scoring is brilliant. He can cross the ball. He's got overall attributes. Whereas Memphis mm, Depay at that stage, although he had similar, stats as Cody Gakpo, but he mm, didn't have a mature head on his shoulder. He was trying too many things, trying to take on yeah, players, doing stupid things. Cody Gakpo, if you look at him play, is very matured overall, and that's what separates these two players. So I agree with you on yeah. that, Prashant. He's not. He's going to be a better player than Depay. Yes, continue. Sorry to interrupt you. Yeah, and additionally, I would also say that Memphis, when once he did actually end up at United, with a higher Hmm. wage and all of that, he got distracted with a lot of the antics of the field. Like, he did not do anything Correct. bad as such, but it's just that he was living the good life. He was living it up already, and people use. I remember people used to say that even back then, "Okay, he's living as if he has already made it at United." He had not made it at Yes. United, Yes. right? So Correct. Correct. Hmm. that was like a very basically an attitude problem, you can say. He lost his focus with all the glitz and Hmm. glamour of the field because of the money that he had, rather than continuing to focus on the game itself. So that is where he lost. Gakpo, I mean, you can't of course predict. We cannot predict anything at this point about Gakpo, but he seems to be. I don't know. He just has that vibe, and at PSV also, he has not. Um, we have not heard any news about him of that sort, where Correct, wherein he correct is of the field antics. yeah, of the field antics. So yeah, hopefully he does turn out to be better. And again, my according to me, the major factor is the fact that he will not be playing for a coach like Van Gaal. If a coach like Van Gaal can still get him to have a good World Cup, Ten Hag can do wonders with him. Yeah, I agree with you on that. And better player. Overall, he's more mature. That's what matters the most than Yeah, Memphis Depay. Who's winning the league? MSH says. I think Man City, clear favorites. People will say Arsenal, Hmm. but I think Man City have got it covered. yeah, They will Man win City, it. no doubt. They got that squad depth in them. To go long to 38 games. The 38 game Yeah, league. Arsenal already missing a striker, and then if they have more injuries with more games coming in, it'll be difficult for them to keep that consistency. Overall, Arsenal have played fantastically this season. If they had the squad depth, maybe they could have gone on till the last game. But I think Man City will win it eventually. They will go ahead of them. They're still 5 points behind them, but I think they're clear favorites. Arsenal will have to fight off. And like I said earlier, it's not even half of the season over, just 14, 15 games into the league. So yes, my favorite right now, Man City easily to win this league. Prashant or Agrim, do you have your views are different than mine. Please let me know. For winning the league, Yeah, nobody's touching Man City. easily, yeah, easily. same. I think Harvey It's Elliott like a and dead Naby and Keita buried. are joining. It's like a dead and buried debate, that conversation Yeah. at this point. I don't see anything changing there. You know, with because Man City, and because of the resources that they have, it does. I mean, I do get worried sometimes that uh, Premier League is heading to becoming similar to Serie A or Bundesliga or Liga, where Hmm. the same team will be winning the league every year, and it won't even be unpredictable anymore. So we can still debate कि हाँ भाई Premier League में इतने सब upsets वगैरह होते हैं, हाँ, but then Man City are still winning it.
ये सीजन Yeah. और लास्ट सीजन दे आर विनिंग इट वेरी इजीली। दूसरे They've been, पोजीशंस के yeah, लिए, easily. हाँ, दूसरे पोजीशंस के लिए देयर इज अ गुड फाइट, बट मैन सिटी आर विनिंग इट एकदम आराम से, मतलब 15-20 पॉइंट से जीत रहा है भाई। सो नॉट गुड फॉर द लीग ओवरऑल इफ दैट डज हैपन, बट देखते हैं, लाइक थोड़ा बहुत भी अगर कुछ चैलेंज उनको मिलता है इट विल बी गुड, बट डोंट फोरसी दैट एट दिस पॉइंट। सो Aston अच्छा, Villa pressing for the second रेलीगेशन goal. बता दो, अभी क्या लग रहा है रेलीगेट अरे कौन होगा? मैं relegation तो I think Nottingham Forest, Southampton, हम्म, and maybe Everton. Wolves. Wolves. एवर्टन Yeah. चाहता हूँ, एवर्टन। Not Everton नहीं होगा शायद. They will just go through. I think Nottingham Forest और ये तो पक्का है. Southampton कौन? definitely. साउथहैम्पटन? Southampton yes. अरे बॉटम पे 20th पोजीशन पे अभी वो लोग. Southampton अच्छा, आज भी हार गए वो लोग. हम्म. वो लोग ने सैक कर दिया ना वो लोग के वो मैनेजर को। हासन न्यूटल हाँ. हाँ, राल्फ हासन हासन न्यूटन को। न्यूटल. हाँ, और कौन आया है, किसको लाया वो लोग? Who have they bought in? They have got in. Let me check. I forgot his name. Southampton. They lost to Brighton today, 3-1. That too हाँ, at Saint Mary's. The new अच्छा, manager is Roberto Di Zerbo. So that's the right manager. Nathan Jones करके कोई है. अच्छा, Nathan Jones नेथन करके है जोन्स, ओके। manager. Yeah. Brighton पता are नहीं, doing नाम really नहीं well by सुना। the way. हाँ, Brighton तो एंड बहुत ही सुपर खेल रहा है. 7th पोजीशन पे वो लोग. और नया मैनेजर वाह, बहुत ही फैंटास्टिक है. रॉबर्ट डे नीरो ना? रॉबर्ट डी जर्बी. डी जर्बी. रॉबर्ट अबे डिनीरो। रॉबर्ट डेनिरो तो एक्टर है वहाँ. वहाँ प्रशांत तू कब से रॉबर्ट दे कर रहा है, मैं बोला ये क्या बोलता है, देखो तो सही। आई एम प्रीटी श्योर रॉबर्टो डी जर्बी. रॉबर्टो डी लेट मी सी बाजियो। उसका, लेट रॉबर्टो मी डी सी उसका बाजियो नाम। अरे क्या प्लेयर था यार वो. हम्म। मैं अभी नाम देख So ही लूंगा इसका। आई एम क्यूरियस नाउ Thiago हु इज द Alcantara मैनेजर। and Oxlade-Chamberlain are coming off, and Naby रोबर्टो Keita डी and Harvey जर्बी, यस। Elliott. So Roberto De Italian manager. Zerbi is the correct name. Yeah, Italiano manager. Hmm. So हाँ, ब्राइटन अच्छा कर रहा है, विच इज गुड। Hmm. बाकी ये क्या बोलते हैं, बट ये बात तो है कि मतलब अगर ये बोलता है स्टेट्स का, जो स्टेट साइड्स है, स्टेट ओन्ड साइड्स है, उन लोग को Hmm. ये एडवांटेज तो है ही, लाइक फंड्स का। तो देखो पीएसजी का तो हुआ, वो तो चलो एक्सपेक्टेड था। अभी प्रीमियर लीग में चलो मैन सिटी है, मे बी न्यूकासल उनको चैलेंज करेगा, बट जो एक्चुअल ऑर्गेनिक क्लब्स है उनका क्या होगा, दैट इज अ वेरी इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू डिबेट अबाउट, इन माय ओपिनियन। Yeah. अभी Yeah. अगर Yeah. यूनाइटेड का भी कौन ओनर आता है वो भी देखने जैसा है। हाँ, मुझे यूनाइटेड लगता अ है ये लॉट ऑफ, you know Prashant, I think we haven't had a discussion about this, right? The next owner. I think I had a discussion with Agri in my last video. So I wanted to ask you, do you prefer an American owner, a British owner, or those Middle Eastern guys? I'll tell you my preference. हाँ। तेरे क्या लगता है क्या क्या कौन होना सो चाहिए for the betterment फ्यूचर के लिए? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यूनाइटेड के लिए कैसे बोलूं, देखो अगर the valuation that United have, right, it हम्म. is realistically it's only the matlab it is very, if there is someone who is able to afford it, then that would be Middle Eastern guys, because वो लोग के पास ही ऐसा पैसा है। I have heard that like I mean I had read somewhere that अभी अबू धाबी का सिटी है, सऊदी का ये न्यूकासल है, so now the Dubai guys want in on this and Emirates. they are Correct, looking to correct. buy Yeah, yeah. United. हम्म. So हाँ, so वो लोग, अगर वो लोग आते हैं they might be doing something, but the thing is that United needs investment. अगर अमेरिकन ओनर्स या ब्रिटिश ओनर वगैरह कोई भी आता है, और इवन दी मतलब जो रूम, मतलब एक टाइम पे रूमर था कि इंडियन ओनर्स आएंगे, मतलब वो सिर्फ इंडिया में ही वो रूमर था वैसे, मतलब हाँ, I बट know. के अंबानी आएगा या अडानी आएगा, अडानी का तो मीम ही था, बट
अंबानी का यूनाइटेड, मतलब यूनाइटेड वाले चैनल्स पे भी मैंने देखा है दैट सम ऑफ देम वर सीरियसली कंसिडरिंग हिज नेम, कि डिस्कशन काफी हुआ था अंबानी के नाम से फॉर सम रीजन। सो कुछ ना कुछ वहां पे रूमर रहा हम्म, होगा, बट इवन फॉर अ गाय लाइक अंबानी, वो लोग के लिए apart from the $6 billion which they will be investing for the purchase, they will still also have to invest further into the club, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में डालना, जो इधर डालना उधर डालना। सो 6 बिलियन वो, ऊपर का 5-6 बिलियन अलग से, उसके बाद जाके उसके रिटर्न आना चालू होगा। सो ये अगर ऐसा ही फंडा है इन लोग का, तो हाउ इज इट सपोज टू बी गुड के अमेरिकन ओनर्स वगैरह को आए, बिकॉज इफ दे कम इन, दे आर प्राइमरीली गोइंग टू कम इन फॉर प्रॉफिट। मिडिल ईस्टर्न आएंगे ओनर्स, दे विल बी कमिंग इन विद द पर्पस ऑफ सॉफ्ट पावर। सो उन लोग को पैसा फेंकने में प्रॉब्लम नहीं होगा, जैसे अब्रामोविच को पैसा फेंकने में प्रॉब्लम नहीं हुआ, जैसे ये सिटी वगैरह के ओनर्स को पैसा फेंकने में प्रॉब्लम नहीं हो रहा। सो वो टर्म ऑन, in terms purely of the financial boost जो यूनाइटेड को चाहिए, मिडिल ईस्टर्न ओनर्स आर वेरी गुड। बट देन वही लोग यही बोलेंगे कि ह्यूमन राइट्स ब्ला ब्ला ब्ला। वेल देखो, अभी अगर दो जन तो है ऑलरेडी, एक तीसरा आ जाएगा, क्या ही बिगड़ जाएगा। हम्म, सो प्योरली फाइनेंशियल टर्म्स, I would say कि हाँ भाई, अगर मिडिल ईस्टर्न ओनर्स है, दे वुड बी द बेस्ट, बट यू नेवर नो, बिकॉज वो लोग भी कभी कभार दे टर्न आउट। there have been times when there have been a few clubs, smaller clubs owned by smaller Middle Eastern owners, which have not had good experience with them, but obviously हम्म। यूनाइटेड के लिए कोई ऐसा छोटा मोटा ओनर तो आएगा नहीं। So Now, yeah. Prashant, if you look at the history, these Middle Eastern guys, the thing I सोच ये जो है वो animal, sorry, human rights and all that. Let's keep that aside. ये सब कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है, सब लोग ऐसे ही होते हैं. But if you हाँ look at their history, these guys, they are not, they are very smart, in any business, not just football, in any business that they run, they're very smart. They will hire the right people to run the business. So if a Emirates guy or a Middle Eastern guy buys Manchester United, they will hire the right people to run. So if they will, yes. ऐसा नहीं कि एक lawyer और एक investment banker transfer run कर रहा है, नहीं. हाँ They will look into financials. A football sporting guy will, someone like Edwin Mendes, or I'm just taking a name. I'm not saying Edwin Mendes, हाँ will हाँ literally, but someone like a sporting guy who knows about football, who knows about the game, yeah, will be in charge of sporting decisions. So that's what I like absolutely. about these Middle Eastern guys. They will hire the right people. They want to succeed. उनके लिए हाँ बिजनेस सक्सीड कर रहा है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट गेटिंग द फाइनेंसेस, बट ऑल्सो जो बिजनेस जो है उसका नाम अच्छा बने. एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड इज नॉट लाइक हाँ मैन सिटी और योर अदर पेरिस सेंट जर्मन. ये खरीदने से हम्म पहले ऑलरेडी एक ब्रांड है यूनाइटेड का. जैसे मैं हाँ अग्रिम भाई को उस दिन एग्जैक्टली, बोल रहा था, इट्स अ कोई रेडीमेड भी एक ब्रांड या। नॉन फुटबॉलिंग पर्सन भी है, उसको फुटबॉल के बारे में पूछोगे कौन से क्लब का नाम मालूम है, उनके मुंह पे तीन चार नाम ही होंगे, या तो मैनचेस्टर यूनाइटेड होगा या फिर बार्सिलोना होगा. ये सारे नाम है. एक तो क्लब इटसेल्फ में एक ब्रांड है. तो अगर यस ये एक मिडिल ईस्टर्न गाय खरीदेगा, he will hire the right people and हम्म success is almost guaranteed under them. They will, या they just have to invest and they will hire the right people to get the returns. So एग्जैक्टली। that's सो why I like the idea of having these Middle Eastern owners. yeah, exactly, so that was my point as well, okay, the reason they would hire the right people, Divya, is because their prime purpose of buying the club would not be profit, it would be soft power, and they would be, I mean, whatever the reason is, sports washing. But वो लोग पैसा फेंकेंगे, they will not think about throwing money, right? If American owners या ऐसा कोई आए, they will be a little bit more skeptical in terms of those, like अभी Correct, चेल्सी का correct. ही देख लो, चेल्सी फिर का वो लोग देखो। वापस, वो मैं उसकी तरह ही वो मेजर लीग सॉकर की, क्या सॉरी मेजर लीग सॉकर बोल रहा हूँ, अमेरिकन फुटबॉल का लीग है, उसकी तरह ट्रीट हाँ करते हैं वो लोग. दे हाँ डोंट एग्जैक्टली। सो अंडरस्टैंड द गेम. या. हाँ, अभी चेल्सी का एग्जांपल ही देख सकते हैं हम लोग, लाइक बहुत हम्म. लोग, बिकॉज the sale of Manchester United is being handled by the same group which handled Chelsea's सेम sale, ग्रुप. which is the रेनेरी. Rain Group. Rain Group, yeah. रेन ग्रुप, सॉरी So रेन ग्रुप, रेनरी बोल रहा हूँ हाँ मैं. हाँ, सो रेन ग्रुप करके है, सो दोज गाइस, मतलब सो अभी चेल्सी का कैसे हुआ, वो ओनर आया भाई, चलो ठीक है, उन्होंने साइनिंग्स फटाफट कर डाले व्हेन दे स्टार्टेड टू मेक साइनिंग्स, बट ओनर ने क्या किया, सबसे पहले धनाधन सब लोगों को, जो पुराना स्ट्रक्चर था सबको हटा दिया, तो फिर थोड़े टाइम बाद थॉमस टूचल को भी हटा दिया, पहले बोला हम्म, कि उसको रखना है, एंड दे आर नॉट डूइंग वेरी वेल,
ये सीजन के हिसाब से तो दे आर नॉट डूइंग वेरी वेल, चलो आगे जाके दे माइट डू वेल, बट एट दिस पॉइंट दे आर स्ट्रगलिंग। सो उन लोग में भी थोड़ा बहुत ये है। और जो बातें हमने सुनी है वो लोग के ओनर के बारे में टॉड, क्या हम्म। टॉड बोली, राइट, टॉड बोली के बारे में कि वो करेक्ट करेक्ट करेक्ट। he wanted Thomas Tuchel to play 4-4-3. Yeah. That is the thing that I have read. तो How can मतलब an owner doesn't have any knowledge about the game wants to, हाँ, run the show? And this is एग्जैक्टली, exactly, Yeah. हाँ एग्जैक्टली you अभी। know, सो ये तो set सेम up for चीज हुआ failure, ना, setting up for failure. सेटिंग, हाँ, Hmm. प्रिसाइसली। सो ये चीज तो वही हुई ना जो ग्लेजर्स का हुआ, लाइक ग्लेजर Hmm. का कैसा हुआ था, व्हाट हैपेंड विद ग्लेजर्स, लाइक देयर वाज, आई मीन द रूम, द saying was that they were watching a match, and they were asking the United guys, okay, which of these two teams is ours, are they the ones wearing white jersey or the red jersey, ऐसा हुआ था। सो They don't उन know लोगों को भी about the इतना offside कंपेयर, rule. हाँ, हाँ, because it's soccer, right? So it's not even football for them. Soccer, So soccer. soccer. Anyway, um, so the coming back to the main point, so ऐसे अमेरिकन ओनर्स काम नहीं करेंगे फिलहाल यूनाइटेड के लिए। कोई एकदम तगड़ा पैसे वाला होगा तो ही, इनफैक्ट यूएस के कंपैरिजन में तो आई वुड एक्चुअली प्रेफर समवन लाइक अंबानी टू टेक ओवर, क्योंकि अंबानी भाई एफिशिएंट तो है, उसका भी ट्रैक Yeah. रिकॉर्ड तो है। ये अंबानी Yeah. या That's अडानी true. वगैरह रहेंगे, दे विल वंस दे बाय, दे हैव अ गुड ट्रैक रिकॉर्ड कि भाई What वो a लोग miss. ऐसे, हाँ, क्या, अच्छा, हाँ, बट Wha- क्या मिस दे विल किया है, हैव दैट, इतना बड़ा मिस. they have a good track record of even in sports, like अंबानी का स्पोर्ट्स में भी अच्छा रिकॉर्ड है। सो द करेक्ट. यूनाइटेड चैनल्स, मैंने जो यूनाइटेड चैनल्स में जो लेजिट यूके की जो यूनाइटेड चैनल्स है उसमें मैंने हम्म. डिस्कशन देखे थे, एंड दे वर डिस्कसिंग अबाउट अंबानी। तो उसमें भी पीपल वर लाइक, अंबानी का तो मुंबई के साथ बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है, ही ब्लडी ओन्स द इंटायर इंडियन लीग। सो मतलब ऐसा वैसा ओनर नहीं है, एक बंदे का तो खुद पूरा लीग है, ये एक और टीम मैंने ऐड पता है करती है। सो मैंने आई एम पता है नॉट क्या सुना था? लाइक सपोर्टिंग हिम, बट जस्ट सेइंग, हाँ, क्या बोल रहा था? सबसे बड़ा तो अंबानी का ये मैंने तारीफ पता है क्या सुना था? क्या? मोदी का राइट हैंड है वो। हाँ, हाँ, वही, अच्छा, हाँ, बोलते इसको कोई फुटबॉल टीम मत दो। हाँ, वो उसी ये रीजन से, हाँ, अबे क्या पागल लोग हैं यार सही में। हाँ, वही। तो मतलब वो जो भी उसके एफिलिएशंस हो, हाउ इज दैट एनीवे बेटर देन या मतलब क्या ही फर्क पड़ता है अगर शेख्स जो है, जो सऊदी वगैरह के शेख्स है, दे कैन ओन अ हाँ क्लब इन द प्रीमियर लीग, तो उसका हाँ क्या ही है। सो हाँ, जब वो लोग ह्यूमन एनीवे, राइट वायलेशन कर रहे थे तब कुछ नहीं है। हाँ, एनीवे, ये सो तो सही हो रहा है आर्सेनल एनीवे। वॉच अलोंग. अब पूछ रहे हैं हमसे. हाँ, यस, इसके बाद एब्सोल्युटली है, वी आर डूइंग द आर्सेनल. हाँ इसके बाद वी आर कर रहे डूइंग हैं द ना। आर्सेनल वॉच अलोंग एज वेल. आज तो बहुत कुछ है हाँ, बात आर्सेनल का करने के लिए. लाइनअप तो आ गया ना। तो आज ओह माय हम्म, लाइनअप आ गया है. विल एनकेटिया डिस्कस इट इन हाँ, मिनट्स. या. दे आर गोइंग 4-2-3-1, 4-2-3-1 4 चल 2 रहा है। 3 फोर 1. टू So थ्री it's वन So it's Ramsdale, goalkeeper, Tierney, Gabriel, Saliba, White, back four. Oh, I'm surprised William Saliba is there. He was not fit, but I think he's fit to start the game. They've got Xhaka and Partey, the two sixes and eights. And then they've got the middle three of Martinelli, Odegaard, Saka, and they've got Nketiah. So उनका जो traditional lineup है वही है, except for one change. Gabriel Jesus की जगह पे Nketiah खेलेगा. And Nketiah is a decent striker. So I think Arsenal are in for a good game at Emirates. For West Ham, या you've got Fabianski, goalkeeper, back four of Kufal, Keher, Dawson, Creswell. You've got Rice and Suchak in the midfield. You've got Paqueta, Bowen, and Benrama. And then Antonio is the number nine. So Arsenal, I don't expect any shocks or any surprises in this game. Arsenal will win this game 3 nil or 2 nil. Any either of you guys expecting any surprises? वेल, इट्स लंदन डार्बी, तो थोड़ा मतलब अपेरेंटली लंदन डार्बीज आर क्वाइट अनप्रेडिक्टेबल, पता नहीं, आई मीन प्रीमियर लीग में तो इतने सारे लंदन के क्लब्स हैं, सो मुझे वो लंदन डार्बी का वो फैक्टर उतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता, बट वेस्ट हैम ठीक ठाक है यार, लाइक अच्छा टीम है, दे माइट यू नो दे माइट ट्रबल आर्सेनल, एग्जैक्टली हरा एकदम नहीं वॉक पाते ओवर हैं। तो नहीं होगा। ज- हाँ, इनका इनका हेड टू हेड इज लाइक वेरी स्ट्रांग। किसका, आर्सेनल का? या
The last time West Ham beat Arsenal was how long? I have not seen. It's been 2019. हाँ 3 साल हो गए मतलब. They've But been uh, ये एक सेकंड, ये मैच कहाँ, इट्स एट द एमिरेट्स राइट, यू सेड. yeah. Emirates, yeah, Emirates. That's why I said हाँ advantage हाँ, Arsenal. then I हाँ, don't then think I doubt, there's yeah, going to be an issue. Yeah, आराम then से I doubt. जीतेंगे, आराम से. Hmm. हाँ, मुश्किल है फिर. एक बार ओलंपिक्स, ये ओलंपिक स्टेडियम में होता तो होता था, बट नॉट हियर. That's true. But Darwin Núñez कितना मिस करेगा यार? उसने अभी सिटर मिस किया है. Threw on the keeper and he missed a sitter. For turning भाई out इसको to be Fernando Torres. Hmm. मेरे को लग रहा है उसको ना यार एटलीस्ट टॉरेस वाज क्लिनिकल ना फॉर एटलीस्ट 3 सीजंस व्हेन ही केम इनिशियली. नहीं नहीं, Torres for Chelsea I'm talking about, not Torres for Liverpool. हाँ या हाँ हाँ, वो तब एग्जैक्टली, तक तो फॉर खत्म ही हो लिवरपूल गया ही था वाज यार. गुड. यार तब तक तो खत्म ही हो नहीं गया वो था हाँ, प्री हाँ, सीजन. मूव करने के बाद खत्म हुआ वो. तब तक तो ठीक ठाक Hmm. था, लिवरपूल में भी वो आधा सीजन ठीक ठाक ही खेला था. हम्म. But again, Chelsea is a graveyard for strikers, right? Sir या Lukaku who did not succeed at Chelsea, मतलब क्या क्या ही बोलेंगे अब. आई थिंक Sir Lukaku. पॉसिबली दिस गाय कुड हैव डन वेल अगर पता है if Hernan Crespo would have stayed at Chelsea for a long Correct, time. correct. I think Hernan Crespo, Yes. हाँ, he would have he, done. he would have done well. He could have done well. He was a proven striker. उसको चांस ही नहीं दिया. हाँ, चांस ही नहीं दिया. और एसी मिलान में भेज दिया था लोन पे. तो या भाई फिर उधर वापस जाके बुलाया. चैंपियंस लीग फिर फाइनल हार वापस गया. सेकंड 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 स्पेल भी बुलाया था ना उसको ईपीएल में. हाँ, सेकंड सेकंड स्पेल भी, स्पेल में भी हाँ चलती है. हाँ. Then he went back to And I Inter. think Liverpool have scored. Harvey Elliott, हाँ, it's his game over now. Brilliant goal and poor defending from Aston Villa. They couldn't ओके resist the counter attack. ओके. So मेरे इसमें जस्ट अभी थ्रो इन हुआ. So now they are okay. So the cross has just been put in. Darwin Núñez has the ball. He puts it back in. Or and okay, now Harvey Elliott finishes it. Yes. Okay. So तू नूनेस का बोल रहा था ना, ये भाई ने थोड़ा कुछ तो काम किया आज, डार्विन नूनेस ने. बट हाँ, he didn't score, but ठीक है, असिस्ट तो दिया उसने. Okay, so I think this is game set and match Liverpool. I don't think we have Yeah. any surprises here. यहाँ पे तो uh, अच्छा. काफी. हाँ, No, that's not Javier. It's Stefan Bachketish. sorry, who is it? Stefan Bachketish. Ketich. ऐसे कुछ नाम है उसका. अच्छा, okay, Not let Javier me Elliott. read it. अच्छा, okay, let me read it. मैं बताता हूँ कैसे pronounce करते हैं. Let Yes, me give yes, it a yes. thought. Stefan. Hmm. So हाँ, बट अच्छा गोल मारा. लाइक गोली लेने जा रहा था, he was about to collect it, he took it away from him and then did the finish. और and the finish was also through the defender's legs. Yeah. So उसको भी That's deflect nice. हो गया. Lucky, slightly lucky, but ठीक है, good finish. So okay, I have not read his seen his name yet. Okay, it's coming to now. So yeah, किसी ने by पता कमेंट Chetich, by Chetich. ये हाँ. किसी ने लिखा है Darwin Nunez is such a good finisher. He will definitely finish Liverpool. कौन लिखा है? भाई साहब. हमारे क्या मैच में लिखा क्या? अरे नहीं 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 मैं इधर ये फेसबुक पे कमेंट्स पढ़ रहा हूँ. अच्छा अच्छा, हाँ, ओके. ये क्या लिख रहा है? अडानी बाइंग यूनाइटेड, योगी डिमोलिशिंग मैगवायर्स हाउस बिकॉज ही लेट एम्बापे स्कोर अ हैट्रिक इन 7 मिनट्स. अबे मैगवायर का क्यों? ओटामेंडी का घर तोड़े ना. ओटामेंडी उसको घुसने दिया था. हाँ वही. हाँ, ओटामेंडी ने दिया था भाई, मगवायर. बट हाँ, चल ठीक है. हम्म. बोलते नूनियस 1000 चांस एंड 900 गोल किक. हाँ, भाई क्या लोग हैं भाई, ऐसे ट्रोल करते हैं. Okay, Chelsea are looking to see close another transfer, and this is most likely to be in January. France centre back Benoit Badiashile from Monaco. It's oh around yeah, 35 to I've 40 read about million. him. Yes, Yes, I've so read about him. it's a reliable source, Fabrizio Romano. So मुझे बहुत अच्छा लगता था डिफेंडर, लेफ्ट सेंटर बैक है, लेफ्ट फुट सेंटर बैक है. बट देन इफ
Chelsea sign him, I don't think they will go on to sign Josko Gvardiol. So Josko Gvardiol, can move to Real Madrid or Barcelona or some other club. But yes, I thought till yesterday Guardiola was the favorite for Chelsea, but now they signed Benoit Badiashile. So I don't think they will sign two centre backs and pay that kind of money. But yes, Benoit Badiashile looks a good player. I've liked him as followed his career in the last 3 years. जब he was linked to United under Solskjaer तब से मैं फॉलो कर रहा हूँ. अप्स एंड डाउन हुए देखो. बट बहुत ही टैलेंटेड सेंटर बैक है ये बेनवा बाराशिल जो मोनाको का है ना. हम्म, I've been following his career since he was linked to United under Solskjaer. जब we signed Maguire, तभी he was the one of center back linked young center back. तभी कुछ 18-19 years का ही था. तो मैंने उसको अपने फीफा के करियर मोड में भी लिया था. वो आता है ना एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट आता है ना एक्साइटिंग Exciting प्रोस्पेक्ट. prospect. हाँ Yeah, yeah. वैसे था. तो यस Uh, तो अच्छा प्लेयर है. थोड़ा if he is groomed very well under a good manager, he can turn yeah. out to be a really good center back. But again, बहुत स्ट्रांग है और बॉल प्लेइंग सेंटर बैक. ही इज रियली गुड ऑन द बॉल एज वेल. अच्छा बॉल के साथ अच्छा खेलता है लाइक लिसांड्रो मार्टिनेज. अच्छा अच्छा. प्लेयर ऑन द बॉल. So Okay. let's see Well, and how that move turns out to be. फीफा के करियर मोड वाले प्रेडिक्शंस जो होते हैं वो जो नहीं प्रेडिक्ट मैं करते फीफा हैं करियर मोड they are not. ओवरऑल मैंने उसका मोनाको का टीम का परफॉर्मेंस भी देखा है. अप्स एंड अच्छा डाउन अच्छा. है बट नहीं नहीं, आई एम जस्ट बहुत सेइंग कि टैलेंटेड है. हाँ नहीं, बट फीफा के करियर मोड पे सिर्फ उसको जज नहीं करूंगा, ऐसा बोल रहा हूँ. बट हाँ, ऑब्वियसली नहीं, अभी अगर इतने सारे क्लब से वो लिंक है तो ही मस्ट बी अ गुड प्लेयर. क्योंकि फीफा के करियर मोड में तो मेरे साथ तो ऐसा होता था, मैं हमेशा वेलबेक और योवेटिच को साइन करता था एक टाइम पे. योवेटिच. एंड हाँ आई रिमेम्बर योवेटिच बहुत गोल मारता था हाँ, फीफा करियर मोड में. योवेटिच और योवेटिच वेलबेक भी, वेलबेक एंडरसन भी, या एंडरसन भी, एंडरसन. सब 90 प्लस जाते थे उसमें. इवन लुकाकू. हाँ फीफा में बहुत सही खेलता था. हाँ, एग्जैक्टली. और वही. लेकिन असली लाइफ में क्या है लुकाकू? खुद को ड्रिबल हाँ, करेगा. लकाका. एग्जैक्टली. लक्का का. लकाका. भाई So क्या मीम बन Felix गया है वो. is another. I think Jao Felix is a hot prospect in this January transfer window. बहुत सारे क्लिप लिंक्ड है और एटलेटिको मैड्रिड डोंट वांट हिम. का सिमियोनी का और उसका बिल्कुल भी नहीं जम रहा है. तो हरम बॉल ये खिलाओगे तो ऐसे. बहुत क्रिएटिव प्लेयर है बहुत जाओ फिलिक्स. ही हाँ, वांट्स टू बी इन्वॉल्व इन द अटैक सर. यहाँ पे तो अटैक करने का मौका ही नहीं मिलता है. यार ये रोनाल्डो का मूव ये परमानेंट हो गया क्या? अल नासर नहीं का. अभी तक तो नहीं हुआ. नॉट They are येट saying नॉट Al येट Nassr had नॉट येट. scheduled a medical for शेड्यूल Cristiano मेडिकल Ronaldo फॉर and क्रिस्टियानो रोनाल्डो करेक्ट. अरे वो बहुत ही मतलब चिंतित सेकेंड टियर सोर्स है. बहुत ही थर्ड क्लास सोर्स है वो. तो अनलेस एक अच्छा सोर्स जैसे कोई डेविड ऑनस्टीन या फेब्रिशियो रोमानो ना बताए तो हम बिलीव नहीं कर सकते. बट लेट्स सी. नहीं, बट रोमानो ने भी बोला था ना कि इट इज ऑलमोस्ट डन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. उसने नहीं खुद, नहीं नहीं. आई बिलीव. अल नसर हैज ऑफर्ड. अल नसर ऑफर किया वैसे बोला था उसने. ही नेवर सेड दैट इट्स डन He डील. has अल accepted. नसर हैड Yeah. ऑफर्ड. Hmm. Nunez versus Haaland has gone Has terribly been wrong. Absolutely, it's gone very terribly कोई wrong. डिबेट नहीं है. And ये कोई डिबेट नहीं था. debate हाँ, it's debate gone नहीं था. terribly wrong only for Nunes, not for हाँ. Haaland. न्यूनीज पता है क्या था? He Nunez reminds me of coming Andy off. Carroll. हाँ, yeah, Andy exactly. Carroll. Look भी वैसे ही है. Andy Carroll. वैसा है, वही Look मैं भी बोल. वैसे ही है. बाल भी लंबे है, हरकत भी हाँ वैसे ही है. And हाँ, probably मेरे को exactly. I won't be like surprised if Liverpool sells him off next the following season. हाँ, he will go to नहीं 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 Newcastle. नहीं. ये देखो और एक सीजन तो रहेगा वो. और एक सीजन तो रहेगा वो. इसके बाद और एक सीजन रहेगा. मे बी आफ्टर दैट दे मे सेल हिम. बट राइट नाउ तो वो यार इतने एक कोई इजी सिटर्स मिस करता है क्या यार? If you're a 85 million pound striker. नहीं हाँ होता है वही. कभी कभी. आई आई ऑनेस्टली थिंक दैट ये नर्वसनेस है. वंस ही स्टार्ट स्कोरिंग गोल्स ही विल नॉट मिस दोस हिटर्स. अभी थोड़ा अरे बट नर्वसनेस है नर्वसनेस तो अभी प्रेशर क्या भी है थोड़ा. नर्वसनेस, इतना टाइम तो हो गया उसको. यार वही मैं तो नहीं बट सोच रहा हूँ ना, लाइक हाँ अबे यार साउथ अमेरिकन प्लेयर्स को इतना टाइम नहीं जब एक लगता यार कि 85 लाइक अडेप्ट. जब एक 85 मिलियन सेंटर बैक दूसरे टीम को गोल स्कोर करके दे सकता है तो ट्राइकर से तो थोड़े दो मिस होंगे ही ना 6 महीने में. 6 महीने बट भी नहीं एटलीस्ट हुए वो अभी. खेलता तो था ईपीएल में. ये तो हाँ खेलता भी नहीं है.
हाँ एग्जैक्टली। और वो जो 85 मिलियन वाला सेंटर बैक है वो इंग्लैंड के लिए अच्छा परफॉर्म कर लेता है, हाँ यूनाइटेड के लिए नहीं करता। क्योंकि वो क्योंकि वो इंग्लैंड का सेंट क्योंकि बिकॉज इंग्लैंड का गेम ही वैसा है, उसके आगे दो डिफेंसिव मिडफील्डर प्रोटेक्टिंग करने के लिए। मैनचेस्टर में हाँ कौन था? फ्रेड एंड मैकटोमिनी थे आगे, और इंग्लैंड के लिए कौन था? हाँ डेक्लन राइस एंड कैल्विन फिलिप्स। हाँ तो अभी तो फर्क दिख रहा है क्वालिटी में, अगर हाँ ये वो तो है। मतलब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्या प्रोटेक्शन है मतलब। अबे पेप यार यहाँ पेप पे कौन और है? ये अपने हमारा मैक फ्रेड। हाँ पेप और अब ये आई थिंक इंटर अभी एरिक्सन है ना, अब एरिक्सन और कैसेमिरो मिले अब अभी क्या जाके। नाम है इससे भाई पेप ओपन इंटरव्यू में तो बोलता है कैल्विन फिलिप्स मोटा हो गया है। हाँ हाँ, बॉडी शेम करा अबे उसको। क्या अबे क्या आदमी है यार पेप। हाँ बट सही है, आई थिंक इज नॉट हाँ तो सही से बोल रहा है, फिट नहीं है, फिट कौन सा नहीं है गलत वो, बोल रहा है। सही है जो हाँ दिस नॉट फिट तो बोलेगा ना गलत मोटा है। नहीं बोला। होता है यार, ये सब नहीं बोलना चाहिए भाई। भाई तुम क्या फुटबॉलर है क्या है। हम्म, नहीं सच्ची तो शिट बोल रहा एंडी है, वो कैरोल, यू बात आर है। जस्ट अ शिट एंडी कैरोल, एमसी बोल रहे हैं। हाँ डार्विन यूनेस के महंगा है एंडी कैरल, महंगा अबे 87 यार एंडी यही कैरोल मिलियन मैं या। बोल रहा हूँ ना, यही अगर ये जब सुआरेज को खरीदा था लिवरपूल, व्हाट अ हम्म साइनिंग ही वाज। एक्चुअली बस सुआरेस का तो चमक गया बात ही था भाई अलग वो। था, वो तो हाँ स्टार्टिंग से ही वो छा मतलब गया था। डिस्पाइट हिज लाइक एंटिक्स बट द क्वालिटी हैड वाज फिनोमिनल हम्म भाई। सुआरेज चमक गया था भाई हाँ विद इन दैट 2-3 गेम। हाँ वो तो है। हम्म बट उसने लाइक अपार्ट फ्रॉम द बाइटिंग स्टफ लिवरपूल के लिए तो भाई अच्छा खासा खेला, या अपार्ट फ्रॉम दैट वन बाइटिंग बाइट। स्टफ। या भाई अगर स्टीवन जेरार्ड wouldn't have slipped, he would have even won a Premier League. या नहीं बट he वो would सिंगल have। हैंडेडली गेम्स, मैं बोल रहा हूँ ना दैट लिवरपूल स्क्वाड वाज सो मीडियोकर ना, दे कुड हैव एक्चुअली नहीं नहीं वन नहीं, द लीग। अच्छे अच्छे प्लेयर्स थे, they had good players, they had Raheem नहीं यार Sterling, they had हाँ अबे राइस Daniel स्टर्लिंग वाज Sturridge, वेरी यंग यार, uh, 17-18 हाँ था ना, ही वाज और Daniel Sturridge अपने 17-18। पीक पे था, अब पीक पे था अपने हाँ Daniel Sturridge। एग्जैक्टली। वो अच्छा स्टरिज था। बेचारा। they had Coutinho, they had Felipe Coutinho who was again a very good player that time. नहीं They also अरे had कोटिन्हो हाँ नहीं बट था। ही वाज had नॉट वर्ल्ड क्लास ना। नहीं वही कोटिन्हो मैं हाँ, बोल रहा वाजंट हूँ, of दे देयर। course वर नो था। वर्ल्ड क्लास। he एक was he सेकंड, was सुआरेज वाज he ऑल was कौन he डैनियल was कोटिन्हो स्टर्लिंग वाज in नॉट अ that। पार्ट ऑफ कोटिन्हो ऑफ लिवरपूल तभी वो टाइम पे Yes, नहीं yes, था। he था of course था, ये चेक कर ले, he was। ही वो तो क्लॉप के आने के बाद साइन हुआ, लाइक अराउंड दैट नहीं टाइम। नहीं भाई, नहीं 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 द सी नहीं नहीं नहीं, जो 2013 में सीजन पहले। में साइन वो किया लोग था। हाँ बट द नहीं सीजन नहीं वेयर नहीं। दे 2013 में लॉस्ट। साइन किया। 13 में साइन किया था। हाँ अच्छा of ओके। course I remember that, अंडर ब्रेंडन बट रॉजर्स वो ने इसको साइन किया था। वही मैं बोल रहा था बट दे वर नॉट लाइक वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स लाइक व्हेन यू कंपेयर हिम विद लाइक सुआरेज ना। सुआरेज वाज हाँ लाइक हाँ, क्रिएटिंग सुआरेज की गेम क्वालिटी गेम। अलग था, बट हाँ they had decent players, they had very good players। पेप ने हाँ शायद वड़ा पाव शर्मा को नहीं देखा है। वड़ा पाव वड़ा शर्मा को तो पाव। उतना जरूरत भी नहीं पड़ता ना शेप में रहने का। ऋषभ सुआरेज पंत हैड द अनदर कटिंग वन। एज। हाँ ऋषभ पंत वही। क्रिकेटर्स सुआरेज को वो हैड द अच्छा, कटिंग एज। क्रिकेटर्स को वो अच्छा है कि वो लोग थोड़ा पीठ भी आ गया तो भी खेल सकता है। सब विराट कोहली नहीं होते ना। हाँ हाँ वही, सब विराट कोहली नहीं होते। हम्म, मेरे को गंदा लग रहा है यार, ये बंदा नहीं है ना लुइस डियाज, इतना अच्छा प्लेयर था हाँ लास्ट सीजन हाँ लिवरपूल के लिए। हाँ अभी ये सीजन ही इज इंजर्ड। हाँ वही, थोड़ी प्रशांत, बहुत उसकी तूने शक्ल नोटिस किया? हाँ तूने नोटिस किया है राल्फ रागनिक ने जो भी प्लेयर सजेस्ट किए थे, सब के सब स्टार्स है। लुइस स्टार है, डियाज, सब साइन हो गया। फिर हाँ वो जूलियन एल्वारेज, हाँ क्रिस्टोफर एनजो एनकुंकू, फर्नांडिस, एनजो फर्नांडिस भी सजेस्ट किया जॉस्को था। जॉस्को गॉर्डियोल। गार्डियोल हाँ सारे के सारे प्लेयर्स दे आर टर्निंग आउट टू बी स्टार्स, एंड यूनाइटेड रॉयली हाँ इग्नोर्ड हिम, रॉयली उसको इग्नोर किया यूनाइटेड ने। एंजो फर्नांडिस क्या लग रहा है कहाँ जाएगा, व्हाट डू यू थिंक। मैड्रिड, मैड्रिड नहीं 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 अर्जेंटाइन के नहीं, लिए मैड्रिड ही। आई थिंक आई मीन नहीं ऐसा लिवरपूल, जरूरी नहीं है। लिवरपूल, आई नहीं थिंक लिवरपूल। मेरे को लग रहा है सिटी आई लेगा। डोंट सी। सिटी लेगा, सिटी या सिटी फिर ले सकता है। पीएसजी। सिटी या फिर पीएसजी आइदर ऑफ देम। हाँ सो हाँ, PSG आई another one, PSG हाँ need a पीएस midfielder, yes, yes। Even Liverpool want him, so if Liverpool can't हाँ get Jude Bellingham,
they will go for Enzo Fernandez. They have that money. Hmm. They've kept the Hmm. money. They've 250 million. They have to spend 250 million for like two हाँ midfielders, they man. want to spend around 150 200 million on a player because last season उन्होंने spend नहीं किया on midfielder. So they have that money. Yeah, They are also remember they are also looking for a new owner. उनका clubs Yeah, भी on sale है. Correct. So on sale. Yep. again, so they will also look to buy either Depending on who Bellingham the new or owner is. yeah, correct. So yeah, but if Bellingham goes to to Real Madrid, then ये Fede Valverde का क्या रहेगा फिर? Then Fede Valverde has to sit, or क्या he has होगा to be कुछ नहीं होएगा भाई उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है दे sold प्ले out, विद फोर मैन मिडफील्डर sell out. और They have to sell him वैल्वर्डे तो out. फ्रंट नहीं वैल्वर्डे तो फ्रंट थ्री में खेलता है ये चैंपियंस लीग गेम अगर याद है तुझे फाइनल का दे हैड फ्रंट थ्री ऑफ Hmm. बेंजेमा विनीशियस एंड वैल्वर्डे और मिडफील्ड में क्रूज मॉडरिच और कैसेमीरो था Yeah, तो वैल्वर्डे ऐसे भी आगे खेल रहा था फ्रंट थ्री में खेल but रहा था अभी तो हुआ है ना, Okay. शोमिनी कामाविंगा. चौमेनी है हाँ बट मॉडरिच और क्रूज रिटायर होंगे ना भाई मॉडरिच और क्रूज हाँ, रिटायर होंगे exactly. मॉड्रिच तो अभी मेरे ख्याल से एक और हैव सीजन खेलेगा, बोल रहा है ना. ही विल प्ले वन मोर सीजन फॉर रियल. तो क्रूज जाएगा तो हाँ, दे नीड लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा ही है उनको बेलिंगम दो प्लेयर जाएंगे दो मिडफील्डर जाएंगे एक तो चाहिए ना टॉप क्लास दे ऑलरेडी साइंड कैमाविंगा चौमेनी बट दे नीड या, another two midfielders तो ये साइन करेंगे दैट्स वो ट्रू. बेलिंगम को साइन करेंगे लिवरपूल विन हियर द गेम इज ओवर साला वैन हम्म. डाइक एंड पाहेटिच प्रशांत वेरी Perisic. एबल टू by फाइंड आउट द प्रोनाउंसिएशन Bajecic. पाहेटिच By Sketic. Bajcetic. अच्छा, let me just Google it. You know, मजा आएगा. And Google is also suggesting me Bajcecic's pronunciation. सामने से ही आ गया. प्रशांत अनदर थिंग आई वांटेड टू स्पीक टू यू अबाउट मैंने हम्म. अग्रिम भाई से ये बात किया था लास्ट वीडियो में we speak about Bellingham we speak about Enzo Fernandez in the next transfer window we also speak about Frankie de Jong but there's another midfielder who will be linked to a lot of clubs and his name is Declan Rice where do you think Okay. he will end up moving Declan Rice Man City Man United or Chelsea Okay, I will just answer your question in a bit, but I have uh, actually Googled how to pronounce his name. So yes, the pronunciation which I gave was correct. It's pronounced as Bajcetic. By Stefan Baez Chelsea Bajcetic. Yeah, अरे Bajcetic. बाप Yes, the C because is so the like J Ch. is silent. The Yeah, J is okay silent Sketic. basically. By Yeah, Sketic. the J is silent. So the J is your basically. Yeah, So by yeah. Sketic. Anyway, coming back to your question, Divya. Um, Declan Rice, where he will end up. I think being in the Premier League, unless where can he join? I mean, he will have a lot of options. मतलब भाई के पास already exposure है Premier League का, so I'm not really sure if he will come to United. If he does leave West Ham, he will probably go to Liverpool or City पे. City तो अभी लेगा नहीं उसको. City को जरूरत नहीं है. Chelsea. So if हाँ My first gut Chelsea. Chelsea fan है. पूरा हाँ family चेल्सी फैन Chelsea है, का मैं वही season ticket बोलने वाला holder था. है. Yes, Chelsea are going to lose Kante. Jorginho and yes, Kovacic are not getting younger. They are also about 30. yes. Ideal midfield signing. मेसन माउंट भी English उसके साथ. manager को English player. हाँ, हाँ, और मेसन माउंट के साथ ऑलरेडी वो खेल चुका है. मतलब हम्म, डेक्लन राइस वैसे भी चेल्सी के यूथ रैंक्स में खेल चुका है. सो ही इज गुड खेल फ्रेंड्स चुका विद है. मेसन Correct. माउंट एंड एवरीथिंग. सो वो सारे जो है वो मतलब ऑप्शंस है. अच्छा, सो एमशे भाई और की बहुत ही पनवेल में लाइट फैंटास्टिक चली प्लेयर है. गई है. हाँ, लाइट चली गई. पनवेल की मतलब लाइट चली गई है. वसूली भाई को बोलो, या हम्म, फिर वसूली भाई को पैसा बोल नहीं दिया होगा एमशे भाई आपने. वसूली भाई को बोलो अडानी का पैसा दे. हाँ, अडानी से पैसा वसूल कर ले और यहाँ पे हाँ, हाँ. लाइट चालू कर दे. Anyway, so Declan Rice should go to Chelsea. I mean, that is even the gut feeling that I have. मतलब my हम्म, question is कि my point is कि यूनाइटेड का इतना लिंक है, यूनाइटेड तो नहीं आने वाला वो. Yeah, लिवरपूल का बीच में लिंक था, बट आई डोंट थिंक लिवरपूल नीड अ प्लेयर लाइक हिम एट दिस पॉइंट. yeah. सो अगर प्रीमियर लीग में वो कहीं जा रहा है, सो इट्स चेल्सी. इट्स गॉट बी चेल्सी.
एंड अगेन चेल्सी या यूथ रैंक का जो सिटी हो ऑलरेडी सकता है, है ना, सिटी नहीं सिटी भी हो लेगा सकता उसको, है। सिटी को जरूरत नहीं है वैसे प्लेयर की। सिटी का गेम अभी पूरा They've सॉर्ट हो already गया है। signed Calvin Phillips. हाँ Already signed एंड Calvin Phillips. अगर Calvin Phillips fitness एग्जैक्टली हाँ regain करता है तो I think he can succeed. हाँ एग्जैक्टली। They have सो Rodri, they have Gundogan. दे हैव इनफ ऑप्शंस देयर, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। अग्रीम भाई, लंदन में अगर लाइट मैं जाती है क्या? लंदन में जाती है क्या? नहीं भाई, ऐसा कभी तो देखा नहीं है मैंने, लाइट तो जाती अच्छा, नहीं है लोड शेडिंग नहीं होता उधर? ना, ना। हाँ वही। एनर्जी क्राइसिस है फिलहाल, बट आई हाँ डोंट नो हाउ दे गोइंग टू लाइक कोप अप, बिकॉज स्काई अच्छा रॉकेटिंग इन्फ्लेशन है अभी यूके में। हाँ वही। लंदन आ, लंदन में महानगर हाँ परेशान। महानगर पालिका। ऋषि भैया क्या गोल खिलाते हैं वो देखते हैं। पालिका। हाँ ऋषि सुनक। एनीवे, हाँ ऋषि सुनक। एनीवे सो हम लोग क्या बात कर रहे थे, डेक्लन राइस का हुआ। हम्म। सो हम्म। हाँ सो बट ये वही। नेक्स्ट ट्रांसफर विंडो मिडफील्ड बैटल होगा, राइट? जूड बेलिंगम, एंजो फर्नांडिस, डेक्लन राइस, फ्रैंकी डियोंग, तो हाँ फ्रैंकी de Jong अभी मुझे भी लग रहा है कि वो रहेगा ही, लाइक ही विल स्टे एट बार्सा। मुझे भी आई नहीं, आई अब मेरे आल्सो को नहीं फील। लगता है। आई थिंक मेरे को लग रहा है भी लाइक नोबडी विल गो फॉर फ्रैंकी डेविड आफ्टर व्हाट द वेस्ट वर्ल्ड ऑफ कप टाइम है, परफॉर्मेंस हैज बीन। वेस्ट ऑफ टाइम हाँ है, एक तो वो वेस्ट ऑफ खुद टाइम। इतना बोल रहा है ही वांट्स टू स्टे एट बार्सा, अभी वो खुद ही इतना बोल रहा है, इतना मतलब इतने डिटर्मिनेशन के साथ बोल रहा है कि अभी मुझे बारसा में ही रहना, तो अभी क्या करें हम? मतलब यू कांट चेंज दैट। एक बार बारसा बस मतलब भले ही उसको बेचना चाहे, बट अगर उसको ही नहीं जाना तो हो गया ना, बात खत्म। फ्री में खेल रहा है, खेलने को तैयार था हॉटेस्ट बेचारा, जब पैसे नहीं मिल प्रोस्पेक्ट रहे अभी थे यही तभी। है, बेलिंगम एंड एंजो फर्नांडिस। हाँ यस, हम्म। बेलिंगम एंड एनजो फर्नांडिस यस। सो बेलिंगम का तो मैं सुनते जा रहा हूँ कि भाई ही इज कमिंग टू मैड्रिड, राइट? ही इज गोइंग टू मैड्रिड। काफी सारे ये सब स्ट्रॉन्ग टाइम लग लिंक्स रहा हैं। है मेरे को यार, ही इज नॉट दैट मैड्रिड टाइप ऑफ प्लेयर, बिकॉज यार आई हाँ डोंट थिंक यार आफ्टर व्हाट आई, नहीं आई डोंट सी हिम लाइक गोइंग टू मैड्रिड, बिकॉज एक तो यार इंग्लिश प्लेयर है, ही विल प्रेफर स्टेइंग इन द प्रीमियर लीग, दैट्स व्हाट आई फील। ओके। Nobody wants नहीं to आई spoil थिंक their career. Nobody wants to spoil their career like Michael Owen ना. माइकल ओवन की बात अलग है, बट देख वो पहले माइकल ओवन का जनरेशन भी पूरा अलग था डूड। अभी कैसा है कि आजकल के इफ आई मीन देख, फॉर समवन लाइक बेलिंगम ही वुड से कि भाई देख आई सक्सीडेड इन जर्मनी, व्हाई कांट आई सक्सीड इन स्पेन? या ही कैन वेरी वेल ये से दैट, बात है। बिकॉज अभी का जो जनरेशन है इंग्लिश प्लेयर्स का, दे आर Language एक्चुअली barrier है सबसे बड़ा. I don't नहीं think so. उतना I नहीं, आई think, डोंट थिंक सो। think what I feel is he will go to Liverpool right now, and then later, after 4 or 5 years, he'll move to a Spanish club, maybe Barcelona or Real Madrid. Heard United are in depth as well. Yes, United तो हाँ बहुत दैट इज सालों वेल से डेट में है. डॉक्यूमेंटेड। हाँ तो well जब से documented. क्लब ये जब से क्लब को ग्लेजर्स ने खरीदा है डेप्थ वो पे तो डेट खरीदा नहीं उन्होंने. है। हाँ उन्होंने खुद का पैसा डाला ही नहीं है। मतलब हम्म. ये स्कीम ना भाई, ये स्कीम भाई बहुत खतरनाक की है जो उन्होंने की है। हम लोग कितना भी गालियां दे ग्लेजर्स को, फॉर देम इट इज अ वेरी प्रॉफिटेबल डील। मतलब भाई 25 दिन में पैसा डबल. पैसा ही पैसा। हाँ तो भाई डबल से भी ज्यादा, 17 साल में उनका पैसा डबल से भी ज्यादा हो गया, राइट? लाइक उन्होंने कुछ टेक्निकली उन्होंने पैसा डाला ही नहीं है कुछ, राइट? और That's उनको true. जब भी अभी एक क्लब वो लोग बेचेंगे, इवन आफ्टर रिमूविंग द डेट दे आर स्टिल मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 5 बिलियन, राइट? That's जो true. 1 बिलियन Yeah. पाउंड्स का डेट है वो इंक्लूड करके 6 बिलियन का वैल्यूएशन है। सो फॉर That's देम इट true. इज अ वेरी गुड डील। सो वही वैसा सीन। So हाँ United have been in debt ever since it was bought out. So वो तो that is not even news, Yeah. वैसा So चीज। Jude Bellingham to Liverpool, Declan Rice to Chelsea, and Enzo Fernandez to Real Madrid. United. नहीं यार, United. यूनाइटेड नहीं साइन करेगा. And 120 खरीद मिलियन सकता है आई डोंट. because of this guy ना, क्या है, Lisandro Martinez. हैं? यार लिसांड्रो मार्टिनेज का क्या आई है इसमें? आई थिंक लिसांड्रो Brazilian ना. मार्टिनेज का यूनाइटेड क्या विल आई थिंक यूनाइटेड विल वेस्ट अनदर ट्रांसफर विंडो ऑन फ्रैंकी डियोंग. पूरा एक है? वापस और एक विंडो वेस्ट करेगा That is actually, और yeah, ऑप्शन. that's a very realistic assessment, yes. ये possible है, And he that's will मेरे को very पता है end क्या up लग रहा staying है, at मेरे को Barcelona. मेरे को पता है क्या लग रहा है अभी,
they won't go for Frankie De Jong. Ten Hag will go and possibly try getting this guy Gravenberg. नहीं, ग्रावनबर्ग तो एक Gravenberch. ही सीजन है ये, अभी तो जस्ट ज्वाइन किया. बायर्न वोंट लेट हिम गो इजीली. यूनाइटेड विल गेट गैकपो. यस ब्रो, आई दैट आई एग्री ऑन. जनवरी में Gakpo तो गैकपो आ जरूर आएगा जाएगा. मैनचेस्टर, आएगा बिकॉज दे गोइंग टू. Gakpo will Gravenberg come. खिला आई भी नहीं है थिंक ना वैसे. ग्रावनबर्ग ज्यादा खेला नहीं है, बट आई थिंक Hmm. United will look to sign Bellingham. They will miserably fail, but I think they will. Eric Ten Hag will want to sign him. He's a fan of him, but I think he's destined to go to either Liverpool or Real Madrid. But yes, try तो जरूर करेंगे Bellingham के लिए, which they will difficult बहुत लग रहा है मुझे. And even Frankie De Jong के लिए भी try करेंगे, but I think it's very important that United get a good number 8 now. Now that they don't have a number 8, Eriksen is 31 now. तो और कितना साल खेलेगा, वी नॉट श्योर. इज मोर ऑफ ए नंबर 10 देन नंबर 8. तो यूनाइटेड को एक जरूरत है एक नंबर 8 की. राइट नाउ वी ओनली हैव वन ऑफ देम, व्हिच इज फ्रेड. हाँ तुम Casemiro. लोग का मिडफील्ड भी विल बी लाइक वेरी व्हाट डू यू कॉल क्या बोलते हैं वेरी स्लो. I think like after 4 years, I think how करेक्ट. old is this guy? You said Ericsson is 31, na? 30-31 Eh, कुछ है. 30-31. Yeah, Casemiro is also is in his 30s. yeah. Fred is in his And कैसेमिरो third, 30s. 30. third Bruno तो will be 4 साल में 32. तो Yeah. 4 साल में तो 4 ट्रांसफर विंडोज भी आएंगे, तब तक नए मिडफील्डर्स भी आएंगे. बट Mm, राइट नाउ द नेक्स्ट सीजन यूनाइटेड विल नीड अ गुड नंबर 8, अ गुड नंबर 8 राइट yeah, नाउ. जनवरी में तो आई थिंक दे विल फोकस ऑन गेटिंग अ striker and a right back, but summer transfer window should be focused on getting a midfielder. Very important. Three of them will be available: Bellingham, Enzo Fernandez, and Declan Rice. Interesting to see which, because सिर्फ यूनाइटेड नहीं, चेल्सी को भी मिडफील्ड चाहिए, लिवरपूल को भी मिडफील्डर चाहिए. यूनाइटेड आर वेरी गुड. कैसेमिरो, एरिक्सन, राशि, लिचा. Yes, for now Licha. they're very good in that midfield, but वो they will Licha. need लिचा लिसांड्रो कौन? मार्टिनेज भाई. ऐसा मत अच्छा, कर. बट वो तो, अरे वो तो सीडीएम है ना. अरे सीडीएम तो वो तो डिफेंडर है. ही कैन नहीं, प्ले बट वो सीडीएम. वैसा ओवरऑल इज सेइंग दैट अच्छे अच्छे प्लेयर्स अच्छा, यूनाइटेड के पास. कैसेमिरो, हाँ एरिक नॉट वैसा. एरिक्सन, राशि एंड लेवा मैकालिस्टर लेगा वर्सेस क्या मैगवायर. यूनाइटेड? यूनाइटेड कौन क्या मैकालिस्टर ले लेगा? सकता है. मैकालिस्टर. मैकैलिस्टर. आई थिंक यूनाइटेड विल गो फॉर द ब्राइटन गाय, नॉट मैकैलिस्टर, द अदर वन, द इक्वाडोरियन. कौन है वो मिडफील्डर? इक्वाडोरियन, Hmm. आई फॉरगॉट हिज Yeah. नेम. दे वर लिंक्ड टू हिम, बाय करने वाले थे, बट देन दे डिडंट लेट हिम बाय. फॉरगॉट कसेडो. हिज नेम. क्या नाम है उसका? कसेडो ऐसा कुछ नाम है. कसेडो, कसेडो मोइसेस बोल रहे कसेडो. थे. यस यस Hmm. यस, मोइसेस कसेडो. आई थिंक यूनाइटेड विल गो फॉर हिम in the upcoming transfer window. January नहीं, summer ब्राइटन में, का. maybe. Brighton अच्छा, का Moise ब्राइटन वाला. Caicedo. हाँ वो He's भी good. He's बंदा good. अच्छा. He's actually good. हम्म, And I think हाँ वो है. even Bayern will offload a midfielder, because Bayern are going to buy that guy, Leipzig से क्या नाम है उसका? Conrad Leimer, Hmm. अच्छा. on a free transfer. They are going to buy him on a free transfer in the summer. So they have a lot of midfielders. They have Goretzka, they have Sabitzer, they have Gravenberch. बहुत सारे midfielder उनके पास. So I think एक को किसको जाने देंगे वो लोग. Not sure which one. Josh मेरे को King, पता है क्यों. that is who United destined. अरे अरे मेरे अरे. को पता है Josh क्यों. King. Igalo signing. आई डोंट. Hmm. मेरे को पता है क्यों लग रहा है बायर्न विल कम इन बिटवीन एंड ट्राई साइनिंग बेलिंगम. नहीं, Bayern हाँ, can't afford. बायर्न Bayern नहीं can't pay जर्मनी में है तो 120 million. किसको भी साइन कर सकते हो. जर्मनी में है तो 120 हाँ, बायर्न मिलियन, का नाम. 120 मिलियन नहीं पे करेगा बायर्न. अरे बायर्न भाई, आर गुड, बट दे वो लोग अंदर अंदर कुछ भी कर सकते हैं. देख, बायर्न और हाँ भाई. यूवेंटस का मुझे पता है. वो लोग अंदर अंदर कुछ भी ये क्या बोलते हैं अपना कुछ भी झोल करके ले लेते हैं. तुमको तुझे या लाइक I am not able to collect any example for Bayern, but अभी जैसे वो लोगों ने लेवेंडोस्की और गोर्जे को वो लोगों ने ले लिया था. They got them on free या transfer, right? ये या लाइप्जिग वाला साइनिंग में उनको फ्री ट्रांसफर पे मिल रहा है. उनको नागल्समैन चाहिए था, मिल गया खड़े खड़े. सो वो उन लोग का उतना होल्ड है. और इटली में तो यूवे का भी वैसा ही था कि बट आई कौन था. डोंट थिंक बेलिंगम जाएगा. बेलिंगम, एमसी का पॉइंट, आई अग्री विद एमसी का. बायर्न विल ट्राई फॉर फ्रैंकी डी जॉन्ग. या फ्रैंक, दैट इज अ अपॉर्चुनिटी. ही मे मूव टू फ्रैंक इफ जावी का आगे 6 महीने में क्या होता है. इफ ही डजंट कंसीडर हिम एज अ पार्ट ऑफ हिज प्लान, then maybe he'll move to Bayern, because Bayern में उसको चैंपियंस लीग खेलने का अपॉर्चुनिटी ज्यादा है कंपेयर टू यूनाइटेड. यूनाइटेड. या यूए मतलब ये गॉट फ्रंट थ्री. लीगल केसेस. हाँ, वो तो ये है. फ्रंट थ्री क्या लीथल रहेगा. लाइक इफ हम्म दे गेट फ्रैंकी डियोंग
and then they Hmm. get Jude Bellingham. So the front three Hmm. will be like Jude Bellingham, Frankie De Jong, and Musiala. खत्म भाई ये टीम. मिडफील्ड मिडफील्ड ना, नहीं नहीं नहीं, आई midfield. डोंट थिंक, पागल है क्या? भाई ये क्या 75, डेडली मिडफील्ड तू कर रहा बोल रहा है है, इसलिए. तू बोल रहा है कि 75 मिलियन फ्रैंकी डियोंग के लिए पे करेंगे और 120 मिलियन बेरिंगम के लिए पे करेंगे? नहीं 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 नहीं, आई डोंट थिंक सो। अरे आई एम प्रकाश जैसे नॉट बोला ना आई, झोल करके वो कर ले ये. नेवर नहीं नो नहीं भाई. आई, इतना भी बड़ा झोल नहीं करेंगे वो लोग कि फ्रैंकी डियोंग और दोनों बट मेरे लेंगे, ख्याल मुझे लगता है से हाँ फ्रैंकी आई डोंट थिंक दे लास्ट फॉर लाइक अभी 75 से दैट प्राइस विल रिड्यूस आई थिंक. हम्म। 75 हाँ, मिलियन थोड़ा ही फ्रैंकी रहेगा. डियोंग आ सकता है, फ्रैंकी डियोंग आ सकता है बायन, बट बेलिंगम विल आइदर गो टू लिवरपूल एंड रियल मैड्रिड, माय गट फीलिंग, आइदर वन ऑफ द क्लब्स। हाँ लिवरपूल का चांस अच्छा ज्यादा है बिकॉज इंग्लिश है, and then हाँ right now he'll move to Liverpool, and then maybe in the future after 4 or 5 years लिवरपूल he'll go to मैड्रिड Real Madrid, but right now Liverpool are the favorites. उसका फैमिली हाँ लिवरपूल फैन है, मेक सेंस सारे के या सारे। या अच्छा हाँ देन इट मेक्स अ लॉट मोर सेंस फिर तो और भी और ज्यादा पता है या नहीं बट if PSG. हाँ बोल sorry ना प्रकाश. Agreem, sorry to cut you, just to answer Mshay's point, his comment, Juve have got legal cases and that is actually for messing up their accounts, for Yeah. not doing so they could for be wrongdoing. sent हाँ to second division, Serie they B could be हाँ again Second time. again again yes again, yes, exactly yeah. और उसमें क्या है दूसरा चीज कि उसमें वो लोग ने यही सब किया था और उसमें एक झोल सो दैट इज व्हाट आई वाज कमिंग टू दिव्या कि उसमें ये लोग ने एक झोल तो यही किया है कि ये वो लोग ने कौन सा साइनिंग किया था वो यूरो में जो इटली का स्टार था वो हु वाज दैट प्लेयर Locatelli. नहीं नहीं लोकाटेली नहीं वो दूसरा अ, एक था ना कैसी है? स्ट्राइकर था उसका किएजा 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 Chiesa, yes, yes, Federico Chiesa, yes. किएजा, Federico हाँ, Chiesa, so उसको वो लोग ने साइन किया फ्रॉम आई थिंक Sampdoria. So सैम्पडोरिया करेक्ट। हाँ उसका कॉन्ट्रैक्ट 1 या 2 साल का ही बचा था और फिर भी वो लोग ने उसको 2 साल के लोन पे साइन किया. सो ऐसे झोल करते हैं यूवे वाले. सो यूवे और बायर्न का ऐसे मैंने देखा है लाइक अगर विद इन देयर कंट्री रहता विद इन डोमेस्टिक कोई ट्रांसफर रहता है तो वो लोग कुछ भी करा के ऐसा कर लेते हैं पुश थ्रू कर लेते हैं उसको. देखो अगर ऐसे करना है ना तो फिर भाई कतार वाला लीग बन जाओ भाई. लीग वन में पैसा भी दो समझा और पूरा लीग ही खरीद लो. डेम्पसी क्या बोल रहा है? अरे डेम्बूज डेम्बूस भी भी खल, 1 ही साल के लिए रिन्यू हुआ है ना डेम्बेले 2 कौन साल का है. डेम्बूस? डेम्बले डेम्बूस उस्मान तो डेम्बले. 2 साल। अच्छा यूएन बारसा स्टार्ट विद धांधलबाजी फॉर, भाई सबसे वाहियात स्वैप था वो, हाँ पूरे हाँ फुटबॉलिंग, पियानिक एंड यस आर्थर, मतलब दोनों के नहीं सबसे वो में भी वाहियात पता है स्वैप क्या था है वो। वो दैट वाज ओनली डन फॉर लाइक सेटलिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट हाँ फॉर 30th एग्जैक्टली जून. नहीं बुक्स हाँ ऑफ अकाउंट मतलब वो वही बात कर रहे हैं ना वो लोग ने धंधेबाजी मतलब यही या ये सब झोल झोल के नाम पे ही किया लाइक लिटरली या जस्ट टू मतलब वो प्लेयर्स को कैसा फील होता होगा कि जस्ट टू मेंटेन अकाउंट्स हम लोग तुझे भेज रहे हैं लाइक तुम लोग क्या ऑफिस में भी कोई तुमको बोले कि हाँ यार हमारा अकाउंट स्टाइल ही नहीं हो रहा है आई एम सेंडिंग यू टू सम अदर कंपनी या फिर अबे टू सम पॉलिन अदर तो भाई डिपार्टमेंट. उतने पैसे में खरीदा था और फिर उतने ही पैसे में वापस बेचा. क्या 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 कौन Paulinho was bought for हाँ 40 million from I हाँ don't know Guangzhou. हाँ हाँ Guangzhou ग्वांगझो या China. ग्वांगझो और वही या उतने ही पैसे में से वापस वही क्लब में बेचा हाँ उसको वापस. वही बेचा सो पोलिनियो का भी वैसा ही सीन था ना पोलिनियो का क्या सीन था दैट दे वांटेड टू मीट दैट क्राइटेरिया वो मिनिमम साउथ अमेरिकन प्लेयर्स या का कुछ क्राइटेरिया था सो वो लोग या के पास 1 या 2 प्लेयर्स बाकी थे सो वो लोग ने 40 मिलियन दे के उसको पहले साइन किया और बाद में वो बेच भी दिया विच इज वही अजीब है सो हाँ यार ये अकाउंटिंग का तो ये लोग का झोल है ही सो बायर्न चल अभी भी बायर्न तो थोड़ा बहुत फाइनेंशियली सॉर्टेड है बट यूवे बारसा और रियल ये तीनों जो क्लब्स है सुपर लीग वाले ये लोग ये झोल करते ही है सब मतलब बट रियल इज कुछ स्टिल भी पॉजिटिव यार. रियल नहीं, का रियल नहीं करते, रियल नहीं, रियल इज वेरी गुड, आई मीन उनका, रियल का हाँ द बुक्स एज ऑफ क्लब अकाउंट इज हैज मैनेज्ड बीन पॉजिटिव. फैंटास्टिकली वेल। हाँ अभी भाई बहुत तो सही है इस भाई। वो लोग साल काफी अच्छा हाँ दे मेड अ पॉजिटिव लाइक क्या बैलेंस ऑफ 106 मिलियन ऐसा कुछ था उनका. हाँ वो अभी मतलब अब वो लोग का मतलब है बट स्टिल लाइक स्पेन में जो है ना वो लोग कर सकते हैं झोल ऐसे सो बारसा का तो मुझे पता ही है बारसा और यूवे का तो झोल चालू ही रहता है सो अब यार तक उनका वो लोग वैसे ही प्रेसिडेंट ही चल रहे हैं इतना क्लाउन है भाई वो तेबास भाई. So कुछ guys, भी बोलता है भाई give वो. me 1 minute, I'll be back in a minute, okay? So you हाँ continue ओके guys. Yeah. या हम्म. नो नो प्रॉब्लम ठीक है सिटी का ट्रांसफर बिजनेस इज फायर
एमशे हमेशा से says. रहा है भाई वो, हाँ हमेशा से रहा हमेशा है भाई, से। जब से वो लोग, जब से ever since they've been taken over भाई, their transfer business has been good. So this is what Divya was referring to, कि Middle Eastern owners रहता है ना, they don't they don't मतलब वो लोग खुद का दिमाग नहीं लगाते क्लब के रनिंग में, they always hire the right people. That is या one thing which they do. So या वो चीज वो लोग हमेशा करते हैं, which is why या all the clubs like ये सिटी का बोल दो, इवन न्यूकासल, पीएसजी का भी, ठीक है पीएसजी में अंटिल नाउ थोड़ा सा वो कल्चर के हिसाब से था कि थोड़ा बहुत उनका सुपरस्टार कल्चर था, बट स्टिल लाइक इन मेनी अदर वेज दे हैव आल्सो ग्रोन लीप्स एंड बाउंड्स, राइट, या कमर्शियली वगैरह जो है, सो हम्म, दे हैव द राइट पीपल इन दोस प्लेसेस, सो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज व्हाई इवन दैट्स ट्रू, सिटी का ट्रांसफर बिजनेस इज फायर। सो भाई वो लोग ने दैट्स तो ट्रू, लिटरली पूरा बार्सिलोना का सेटअप ही खरीद लिया था, है ना, दैट्स ट्रू, ग्रीन? दैट्स ट्रू, या दैट्स ट्रू। सो वही, कौन 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 आया था उधर अपना, जिकी बेजेरिस्टन, एंड हु इज द अदर गाय हु केम विद हिम फ्रॉम बारसा टू सिटी? या टूर है ना, अरे याया टूरे नहीं, मैं फुटबॉलर की बात नहीं कर रहा प्लेयर्स हूँ की मैं, बात पूछा, नहीं, ये पेप के साथ। जिकी जी नहीं, जब व्हेन सिटी बॉट, आई मीन सिटी वर बॉट हाँ, आउट, तो वो लोग ने या एज वो डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल ऋषिकी बेजेरेस्टन को लाया था, या ही वाज या बॉट या इन फॉरगॉट डायरेक्टर द ऑफ नेम्स, बारसा। या हाँ, सो फॉरगॉट एक द और नेम्स। बंदा था जो उसके साथ आया था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, सो दो बंदे थे, तो वो दोनों हम्म, बंदे आए, और उसके बाद मतलब भाई सिटी वर या ऑन देयर वे, मतलब धनाधन साइनिंग्स ही कर रहे हैं उसके बाद से, तो दे नहीं, हैव नॉट लुक बैक। उन लोग का पॉजिटिव पॉइंट केम व्हेन दे साइन पेप। हाँ या सो मेन रीजन, सो वन, पेप को तो वो लोग को साइन करना ही था, बट उसके अलावा लाइक पूरा सेटअप भी करके दिया ना वो लोग ने सब, सो अभी वो लोग का वो पूरा टीम है, सो पेप इज आल्सो हियर बिकॉज दोस गाइज आर हियर, बिकॉज जेकी बेजेरिस्टाइन इज हियर, और उसके साथ वो जो सेकंड गाय इज देयर, वो दोनों है इसलिए वो आया, सो दैट्स व्हाई दे वर एबल टू अट्रैक्ट हिम। बट you understand one thing, like why Pep left Barcelona? व्हाई? ही Because वाज of the टायर्ड, राइट? politics, and no, he was tired with the politics of Barcelona. और बार्सिलोना, और वाज इट बिकॉज ऑफ मोरिन्यो? लाइक No, no, पीपल no, से इट not वाज because बिकॉज ऑफ मोरिन्यो, यार बिकॉज जोसे मोरिनो से कोई डरता है कि मतलब भाई वो टाइम पे इतना था, नहीं, वो टाइम पे nobody, तो दोनों का, मतलब वो पेप टाइम पे तो पेप एक्चुअल में had वो राइवलरी बहुत ये थी। out class, वही बोला ना, पेप had outclassed Mourinho so many times in that period of like 2 years ना, out of like five or आउटक्लास, six games, हाँ, he beat आउटक्लास what do you तो, call Mourinho, हाँ, बट देन ही स्टिल out, बीट हिम ना इन कप कंपटीशन में, तो जोसे हैड द थिंग, जोसे ने हाँ, बेटर किया था कप कंपटीशन दो ही में। तो मैच जीता ना पेप, हाँ, वो पेप और उसका जो बट काउंटर हुआ था वो लोग का जो झगड़ा उसमें, हुआ था, लाइक व्हेन हाँ, वो दैट क्या, इज जब फाइन उसने वो यार, फेमस स्टेटमेंट मारा था दैट इन दिस होता है यार, press conference room he is the boss, he is the fucking boss, वो so तो you ठीक go है, and दैट इज, वो रेंटिंग वेंटिंग करना ठीक है, बट मैं बोला लाइक टैक्टिकली बीटिंग मोरिनो वाजंट इजी ना, बट फॉर पेप वाज इजी। हाँ, मतलब विद दैट मैड्रिड साइड उसने, बट ही स्टिल वन द लीग ना, एक बार तो जीता था मोरिन्यो, राइट, एक लीग जीता था, या तो दैट इज ये स्टिल, एमशे हाँ, सही बोल रहा है, पेप गॉट डिप्रेस्ड विद बार्सा's रिप्लेस विद पॉलिटिक्स, बार्सा's पॉलिटिक्स, हाँ, या इट वाज विजिबल बिकॉज, इन हिज लास्ट इंटरव्यू, हाँ, हाँ, बिकॉज इतना फ्रीडम नहीं रहता था ना बार्सिलोना फॉर लाइक मैनेजर्स टू do their thing freely. हाँ, At least उसको, या why do you think like he has managed to like do well with City? City हाँ, has बिकॉज the ultimate freedom to do anything he feels like. सिटी इज लाइक, सिटी वांटेड हिम टू मोल्ड द क्लब इन हिज इमेज, और उसने वही किया सिटी में, दे मैं वही बोल लिटरली रहा हूँ लाइक ना, if, टोल्ड हिम कि भाई, हाँ, इट्स लाइक पेप इज एन आर्टिस्ट, और मतलब वही, ये तुम्हारा कैनवस है, डू व्हाट यू वांट, दैट yeah, इज लिटरली लाइक दैट, yeah. मतलब But सिटी वही में मैं तो बोल रहा हूँ ना, लिटरली if उसने वही किया। Pep would have stayed at Barcelona, no, I mean like I don't think like Real, yeah, possibly like Atletico would have beaten Barcelona anytime soon. वो तो मतलब Pep would have made that league व्हाट यू कॉल मोनोपोली, वैसे ही तो मोनोपोली था, और अच्छी तरीके से बार्सिलोना वुड हैव डोमिनेटेड इफ पेप वुड हैव स्टेड। इफ पेप वुड हैव स्टेड, या या एमशे बोल रहे हो मॉस्किटो विल हैव टू पे फॉर देयर सिंस, दे डिड, एमशे, दे डिड, या मार दिया मैंने उसको,
जल गया, वो जल के राख हो गया। एनीवे, सो हाँ, लपोर्टा था या रोसेल, आई थिंक। लाइक इन पेप्स लास्ट सीजन लपोर्टा जस्ट Hmm. निकला था और रोसेल आया था, राइट? Hmm. Yeah. सो दैट टाइम पे, वो टाइम पे जस्ट रोसेल, सैंड्रो रोसेल हैड जस्ट कम इन, और ऑब्वियसली That's तभी how that downfall started, na? started, yeah, exactly, Poor that is how poor the downfall decision. started. That's how the poor decision making started, na? Yeah, and after that they shifted to their policy to sign superstars, जिसके बाद नेमार Yeah. आया, लुइस सुआरेज आया, Yeah. वो सब थे। सो Yeah. तो वो पॉलिसी उसके बाद हुआ, तो हाँ। एनीवे, सो वो चीज हुई, बट सी अभी वो सिटी में, एक तो उसने 2 साल अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर दिया, मतलब ही, आई मीन, पता नहीं, आई एक्चुअली फियर कि भाई सिटी और ये लिवरपूल, ये दीज टू गाइज विल एक्चुअली स्टे फॉर लॉन्गर। बीच में ऐसा क्लॉप का, लिवरपूल का थोड़ा ऐसा रूमर्स था कि डॉर्टमंड में उसका, डॉर्टमंड में ही वाज आल्सो सैक्ड इन हिज 6th सीजन, जो लिवरपूल में Hmm. उसका सीजन है, बट नाउ दैट दे आर आल्सो स्लोली गेटिंग बैक ऑन ट्रैक, आई Yeah. डाउट क्लॉप विल लीव। Yeah. Nah. Nah. सो पेप एंड क्लॉप दोनों, बोथ आर लाइकली टू स्टे। Hmm. Yeah. हाँ 2026 तक कर दिया ना Guardiola. हाँ, या उसने एक्सटेंड कर दिया, यस। 10 साल सो रह जाएगा ना, मतलब like he will be the first manager for City who has stayed for a long term. 10 years, या 10 साल हो गया, Yeah. यस, एग्जैक्टली। 2016 में Hmm. उसने ज्वाइन किया था, राइट? Yeah. सो हाँ, पेप रहेगा और 4-5 साल, या दैट विल बी अ लॉन्ग टाइम, हाँ, मतलब काफी I would लंबा चौड़ा expect him टाइम। to come back to Barcelona. नहीं यार, नॉट विद द फाइनेंशियल सिचुएशन देयर। वो तब तक I think Barcelona will be able to manage. तब अरे तक कैसे? I बट वो तो तभी का तभी देख लेंगे, बट देन हाउ विल दे सर्वाइव टिल दैट पॉइंट, दैट इटसेल्फ इज द बिग क्वेश्चन ना। hmm. Like, how will देखते they हैं ना, let's survive? see. They have to. Barca's concern is more in the present term. मतलब they have already bet all of their, I mean, everything they could. They have already bet on their future, right? सारे stakes वगैरह वो levers pull करके they have already bet on their नहीं नहीं, entire बट वही future. बोला ना, On लापोर्टा, what basis? नहीं लापोर्टा हाँ, probably, if he wants to go for the second term running na, he will get probably like this guy sacked Xavi, and possibly get this guy step back to Barcelona. but This पेप will के be the लिए पैसा political. चाहिए, पेप के लिए पैसा वो चाहिए तो ऐसे ही होगा। प्लेयर है, ऐसे ही आ जाएगा. He'll come for like less money. हम्म, नहीं, एक सेकंड, पापा बॉटम भी था रुसेल के बोर्ड में, या तो वो तो था रुसेल के बोर्ड में, पर पेप रहेगा 4-5 साल, हाँ, ऑलरेडी स्पोकन अबाउट इट। नहीं, बट मुझे नहीं लगता कि, हाँ, सी एमशे इज आल्सो सेइंग द सेम थिंग कि भाई ही इज नॉट कमिंग बैक, आई थिंक इट्स नॉट ऑल गुड विद लपोर्टा। नहीं, नहीं, बट लपोर्ट, मेरे को लगता है आई एम वो नॉट श्योर ट्राई कि ट्राई तो लपोर्टा का क्या करेगा. सीन है, बट ही, आई डोंट सी हिम कमिंग बैक। दिव्या हैज कम बैक, पेप का पता नहीं। वेलकम बैक दिव्या। वी आर डिस्कसिंग कि पेप वापस आएगा या नहीं बारसा में। Divya, you're muted by the way. Yes, yes, I heard all दिव्या, the conversation. हाँ, I heard all of the अच्छा, conversation, and yes, I agree with you guys. Pep, I don't think he's going to come back to the Barcelona club. What I think will happen in next 4 to 5 years is Pep will eventually become the manager of Spain national team, Spanish national team. That's what I feel. My feeling that may happen once he leaves Man City. That is more likely to happen than he Pep going to Barcelona back. So, but never say never. You know, we've seen reunions and comebacks Yeah. in football. You know, a lot of times they've happened. You know, Paul Pogba doing two comebacks, one with United and again with Juventus. We've seen Thiago Silva, not Thiago Silva. I'm sorry. What was the guy's name? The Dani Brazilian Alves, centre back. No, Dani no, Alves the wing curly back। hair. The curly, yeah, अच्छा, Dani ये Alves, one अपना of them. डेविड लुइस, डेविड लुइस। David Luiz, yes. So we've seen those things happening. I don't think he would create the same magic with Barca. नहीं Maybe, नहीं यार, maybe ऐसा not. कुछ नहीं. Messi and Pep are not coming back. Yeah. मेसी तो नहीं आ रहा, बट आई थिंक आई स्टिल हैव होप्स फॉर पेप. नहीं, आई डोंट थिंक ही विल कम बैक ईदर। But again, like I said, never say never. We've seen crazy things happen in football, हाँ, and this is so just a normal dream for every Mche Barca says fan. Pep So is Catalonia, he will not manage Spain. Uh,
Could be. I mean that's a very interesting point because Yeah, yeah, Yeah. when he says interesting. Pep is Catalonia, like he's not talking about him being Catalan. Like, जो for example Luis Enrique जैसा नहीं है उसका case. Like Pep is Mm, hardcore pro Catalan. He literally Yeah. supports their movement. तो उस Yeah. हिसाब mm, से आई थिंक अभिषेक सिंह कि इसलिए वो स्पेन को मैनेज नहीं करेगा एंड दैट इज व्हाई Hmm. इवन लाइक he Pep has been linked with Brazil more than Spain like Yeah. up till this point अगर पेप का नाम इंटरनेशनली किसी से लिंक होता है तो वो ब्राजील से होता है सो इट्स प्रोबब्ली यार मैं बिकॉज तो ऑफ क्या बोलता हूँ यार ब्राजील को छोड़ो भाई लाइक आफ्टर स्कलोनी पेप शुड मैनेज अर्जेंटीना या आई थिंक हाँ भाई he can हाँ नहीं मतलब नहीं he can but I don't think he मैं will बोलूँ go पता है there क्यों बिकॉज दे एक्चुअली they actually deserve a better coach. I mean, Scaloni has done a and phenomenal job within हाँ like 3 years, but to हाँ take that to that next level, I think taking that Argentina job will be a better thing for हाँ Pep. so basically the thing with Argentina is that Argentina has those Pep type of players. Both Argentina and Brazil, Yeah, they both have those Pep type players. yeah, So, जहाँ पे वो ये सिटी में जुलियन अल्वारेज वगैरह को ढूंढ के उसको निकालना पड़ता है और सेकंड yeah. फिडल खिला रहा है उसको वहां पे उसको वैसे प्लेयर्स मिल ही जाएंगे बिकॉज अर्जेंटीना में तो पूरा पूल विल बी एट हिज डिस्पोजल सो Hmm. इट विल बी काइंड mm. ऑफ इजी फॉर हिम सो Guys, one हाँ more question for you all. हम्म, One more question. yeah, Do you guys think Garnacho is that Argentinian player? Like, do you get that vibe from him? that Argentinian player as in I mean, do you get that Argentinian vibes from him? I don't see Argentinian vibes from him. yeah, Argentinian vibe तो That's है. because he plays in. That's because he plays in the Premier League. That's why Yeah, maybe. No, exactly. no, हाँ, no, because he's born and brought up in Spain. Na? He's not a proper Yeah, born yeah. and bred in He's bought more. Argentina. That's right. He हाँ, looks more of a Spanish player than Argentine. Yeah, That I agree with yeah, Agrim because bhai. But mm, because he didn't even celebrate it with like that Argentinian what do you call it? Because you know even if like lot of Argentinians have that pride, na sense of pride when they win mm. like a national trophy or something. But I didn't see anything with like even for like Emiliano Buendia, इसमें भी नहीं था यार. They didn't celebrate it. None of them Because celebrated. they were not I don't know. selected. Maybe Maybe Twitter पे यार ट्वीट but किया होगा उन्होंने something छोटा हाँ, मोटा सेलिब्रेट किया होगा. But since they were हाँ, not with the team, maybe इतना उनका दिखा नहीं. So hmm, yeah, exactly. So yeah, the Imship game Putra, is even in about to start. Argentina, even in By Argentina, the they way, considered Messi to be Catalonian more than Argentine. Okay, just before that, since the game is about to start, let me run through Arsenal's lineup. White, Saliba, Gabriel, Kieran Tierney, 4-3-3, Bukayo Saka, Martinelli, and Eddie Nketiah in the front three. And West Ham ka lineup bhi aa raha hai abhi. So they are going with a 4-5-1 or maybe a 4-4-1-1. So Vladimir Kufal, Dawson, Kerr, Cresswell, Bowen, Suchek, Paqueta, Declan Rice, and Benrahma. Mikhail Antonio up front. So Paredes those are give the that vibe lineups. नहीं यार. क्या? Paredes actually Paredes Vanega De Paul they give that Argentinian vibe. है उनमें yeah, भाई. they do, They they have do. that passion. They have that अच्छा. passion. मतलब परेडेस पैरादेसी नहीं है. Yes. It's Videsi. हाँ, It's he is Videsi. विदेशी. Anyway, so Ronnie didn't let his wife celebrate. भाई वो तो अभी उन लोग का इंटरनल इश्यू होगा ना, हम क्या कर सकते हैं उसमें. है ना. पियर्स मॉर्गन को पता होगा शायद, पियर्स मॉर्गन से हाँ. पूछवाते हैं. अरे भाई हाँ अच्छा हुआ मुझे पियर्स मॉर्गन का तुझे याद है भाई. अच्छा हाँ प्रशांत बोलो. डू यू नो अबाउट दिस गाय हाँ. टॉक स्पोर्ट्स का साइमन जॉर्डन. हिमशे का कमेंट. Yeah. हाँ, या आई नो अबाउट हिम. इसका ये कमेंट बहुत अच्छा है. थैंक यू. यस, प्रशांत लुकिंग लाइक इन एफ कमेंटेड. आई नो दिस टोटली गिव्स दैट वाइब. ये पीछे सर्किट है, मोन्जा का सर्किट है. मोन्जा इटली में बैठा हूँ मैं एंड सामने स्क्रीन है, सो मैं टीवी में से वॉच अलोंग कर रहा हूँ. जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन. या प्लीज कंटिन्यू दिव्या. Yeah. So did you hear him for the first time? I think Simon Jordan most of the time speaks bullshit, but for the Hmm. first साइमन time जॉर्डन when तो he अभी spoke टॉक स्पोर्ट के about साथ है ना वो. आई थिंक इज विद टॉक स्पोर्ट correct. So और when स्काई स्पोर्ट. there was video where Piers Morgan came live
on talk for sport. Talksport, and हाँ. Simon Jordan actually questioned him. When Simon Jordan अच्छा. questioned him, he started getting angry. He started telling him, "You're talking bullshit. You're talking nonsense. You're talking this, talking that." What Simon Jordan questioned him is, "I agree with your interview. I completely agree. You're a good interviewer. What I don't agree with you is you never challenged Ronaldo's statement. So whatever Ronaldo was saying, you never counter questioned him. You never challenged his statements. You never said that what you're saying is, but so and so is the thing. You just sat there and watched him speak against United, and then yes, nodded your head. There was no sense of challenge in your questioning. Interview. So he really got angry, and I thought for the first time Simon Jordan made sense, and then Makes this sense. guy got angry, and then said you're speaking nonsense. And did you had a chance to go through that interview? I mean, between No, Simon Jordan no. and yeah. So नहीं, I have not got a I chance to don't see it. I No. don't generally like watching talk sports, but हाँ, that was one United. interview. That was one conversation I really liked, and for the first time I thought Simon Jordan made sense. हाँ, People think that he was trying to bully Piers Morgan, but then he was making sense in what he was speaking. हाँ, He said, "I agree with you. A lot of things, what Ronaldo said was right. Everything said and done. You never ever for a minute in that interview challenge Ronaldo's statement when you are taking an interview, okay, when it's an interview as high Hmm. magnitude and high level, or someone is saying something, you got to challenge him, right? With the facts that you see Yes, on Twitter, with the facts that's that you've true. seen in the past, nothing of that was accepted. You just sat there and were happy to smile and laugh and kiss Ronaldo's ass. He didn't use that word, but it हाँ, but seemed more that's or what he like said. that. Correct. Yeah. 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 हाँ. So, Mahalakshmi Circuit. Mahalakshmi Circuit. Yeah, yeah. uh, saw bits हाँ, on Twitter. yeah. Saw bits on Twitter. Yes. So, Yeah, he's I talking have not about the seen that interview. Yeah. interview. Yeah. Hmm. So I have Yeah. not seen that interview, but Simon Jordan I know speaks shit. मतलब talk sport is like मतलब साइमन जॉर्डन तो ठीक है बट दे हैड दैट वन मोर गाय जो स्काई स्पोर्ट्स का होस्ट था एंड देन ही Jim जंप्ड ओवर White. टू जिम वाइट Jim हाँ White. हाँ ही इज लाइक वेरी गुड बट साइमन जॉर्डन तो टट्टी है भाई ही जस्ट मतलब वही he literally just hypes things up and just criticize. He's basically Talksport is the British version of ESPN. Let me put it that way. And हाँ so इसलिए मैंने वो देखा नहीं है but I will definitely check it out because it is मतलब Piers Morgan versus him would be quite a quite a spectacle I would say. So हाँ मैंने वो तो तो नहीं सर देखा वो फोड़ने इंटरव्यू. के बराबर है। वो तो सर फोड़ने के बराबर है। हाँ एक्चुअली वही कौन पियर्स किसका सर मॉर्गन फोड़ेगा के. हम्म, हाँ सॉरी कंटिन्यू क्या. नहीं मैं बोल रहा था कौन किसका सर फोड़ेगा वो देखने में मजा आएगा। साइमन जॉर्डन हाँ फोड़ेगा एक्चुअली पियर्स या मॉर्गन क्रेग फोड़ेगा. बर्ली फोड़ेगा अपना सर। हाँ क्रेग बर्ली हाँ वो भी है. सही है. Okay, so the game has started by the way. Arsenal have kicked off. Yeah. West Ham have kicked off the game. Um, and as I'm watching the match, West Ham are attacking. They are in the final third, or Arsenal have won the ball back, and they have just won a foul. So yeah, the game has started. It is at Emirates. So Arsenal, as we mentioned, Arsenal are more likely to win this one, according to me. अबे यार ये क्या नाम है इसका आदिल रामी भाई मतलब ही हैज द ऑडेसिटी मतलब to come and speak about Dibu Martinez. Well, Eh? he's saying that like he shouldn't be awarded the Golden Glove. यार तू तो साले खेला भी नहीं था. You were just bought by what do you call Deschamps to just keep you on the bench. एक गेम नहीं खेला पता Deschamps उसको 2018 के वर्ल्ड कप में. Still he won the World Cup. Hmm. अरे Bhai, but Adil Rami is the Adil luckiest guy in the world. he हाँ, is. तो पता है he's उसका as वो. lucky as Yes. Giroud. But Giroud at least नहीं this नहीं World Cup at least he नहीं 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 performed. नहीं 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 भाई नहीं 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 Giroud deserves भाई. Giroud नहीं is नहीं मैं बोल very रहा हूँ underrated. this no no I'm not saying कि he didn't हाँ deserve or what but मैं बोल रहा हूँ the how unlucky Giroud was ना in that last World Cup zero अच्छा हाँ shots वैसे. on target zero shots हाँ on वो target हिसाब से. हाँ नहीं बट नहीं, मैं ये मैं आदिल रामी क्यों लकी बोल रहा हूँ क्योंकि
वो किसका हस्बैंड था मालूम है ना? किसका? किसका था? पैमेला एंडरसन ना। हैं? यस, एंड ये क्या? पैमेला एंडरसन सेड, हाँ, हाँ अरे तेरे को पता नहीं, मैं तेरे को एक नहीं, आर्टिकल भेजता हूँ व्हाट्सएप पे, देख अरे ये पढ़ तू पैमला एंडरसन प्रशांत। का तो एक ही I'm- फेमस याद है मेरे को, एक ही फेमस नहीं हस्बैंड था अभी भाई, उसका। रीड दिस, आई जस्ट सेंड यू समथिंग ऑन व्हाट्सएप, रीड इट हाँ, ओके, प्रशांत। लेट मी रीड इट, ओके, जस्ट वाचिंग इट, लेट मी ओपन इट, ठीक है, लेट मी ओपन इट एंड रीड इट, हाँ, गिव मी अ सेकंड। हाँ, क्या डाल रहे हैं ये? used to have, oh my god, 12 times a night, क्या हैवान आदमी है ये। नो नो वंडर इसमें ये फोटो जो तूने भेजी है, मतलब जो लिंक भेजी है उसमें पैमला इज ऑलरेडी लुकिंग, शी इज लुकिंग ड्रेन्ड आउट, ऑब्वियसली, मतलब एक रात में 12 टाइम कौन करता है भाई, हैवान आदमी है ये। अरे आदिल रामी, ये तो आदिल रामी करता है। हाँ, अरे ये तो कुछ नहीं है, ये भाई ने, मतलब इसका जो मैंने जो सीन सुना था दैट वाज लाइक, ये भाई, आई थिंक ही वाज एट मार्से, ठीक है, मार्से, सॉरी, इट्स सो हिलेरियस, मुझे सोच के भी हंसी आती है। सो ही वाज प्लेइंग फॉर मार्से, ठीक है, ही सेड के भाई, कुछ तो उसने रीजन दिया कि भाई मेरा ये कोई तो बीमार है, या ऐसा कुछ उसने रीजन दिया कि आई एम नॉट एबल टू ट्रेन टुडे, ठीक है, ये बहाना देके भाई वो अपना केबीसी टाइप के शो पे चले गए। ऑब्वियसली सबको पता चल गया कि भाई ये केबीसी में ही है, ऑफ मतलब कोर्स। केबीसी टाइप का वहाँ का जो शो है वो, तो उसमें चला गया, फिर मार्से ने उसका कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंड कर दिया। अच्छी बात है ना, व्हाई वुड हाँ, यू आई लाई ना, रिमेम्बर दिस। अरे बट या व्हाई हाँ वुड यू बट लाई टू योर अरे या बट एम्प्लॉयर ऐसा ना। ये झूठ बोल के कौन ये करेगा, मतलब तुम केबीसी जा रहे हो, भाई कोई अच्छा सा ये रीजन तो दे दो कुछ ना भाई। नहीं, डिड यू हाँ, गाइस नो अबाउट दिस वन? सब लोग कॉल्स दिस गाय अ वाइफ बीटर, अपनी ये पैमला को यूज्ड टू इट। भाई क्या डोमेस्टिक क्या? वायलेंस का केस था भाई, इस पे डोमेस्टिक वायलेंस का केस था। हाँ, इस पे डोमेस्टिक वायलेंस का केस था, पैमेला एंडरसन ने किया था। अरे यार पागल आदमी है एमशे भाई। बोल रहा है, 12 टाइम्स, मेरा तो अभी तक खाता भी नहीं खुला है। अरे अरे रे 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 साला, भाई, अरे रे बेचारे। खोलेगा, डोंट वरी, डोंट वरी, संयम रखो, सबका खाता खुलेगा। संयम रखो बस। अरे हाँ, प्रशांत, ये एनी, देख, डू सो यू आई हैव एम, एनी अपडेट? हाँ, बोल बोल। हाँ सॉरी, क्या बोल रहा है, अपडेट क्या? नहीं नहीं, बोलना बोलना, मैं पूछता हूँ बाद में, तू क्या बोल रहा था? तो हाँ, तो यू कैन शेयर योर स्क्रीन राइट दिव्या, मैं तुझे, आई या एम या सेंडिंग यू अ लिंक ऑन व्हाट्सएप, यू कैन ओके ओपन इट अप इफ यू वांट, ओके, ओके, ठीक है। होल्ड ऑन। So this is the link जो मैं बोल रहा हूँ regarding what I have just spoken. So just ज़्यादा मत पढ़, just open it up and share it with our viewers. Uh, ओके, हाँ, इट्स so isn't opening up or something. Hold on, I'll just copy this. हाँ, so okay, he did not go on KBC, मतलब reality show था, but it was not KBC. Uh, let me just read it out. Adil Rami sacked by Marseille after mud wrestling on reality TV show when he claimed he was injured to skip training in aftermath of split with Pamela Anderson. मुझे बोलता वर्जिन बात कर। Virgin Bhaskar. वर्जिन भास्कर। हाँ भाई, मड रेसलिंग भाई, केबीसी तो चलो फिर भी नहीं था, मड रेसलिंग रियलिटी शो में जाके भाई ने मड रेसलिंग किया है, एंड ही क्लेम दैट ही इज इंजर्ड। हद है ना भाई। ऑल्दो इट्स अंडरस्टैंडेबल कि भाई जो बंदा दिन में, मतलब एक रात में 12 बार कर रहा है, उसके बाद उसको ब्रेकअप के थ्रू कैसे कोप मतलब कर रहा क्या होगा, तो सोच के, ऐसी मतलब ये हरकतें कर रहा होगा। डिसीजन क्या सोच के ले गया था ना, मतलब व्हाट वाज ही प्लानिंग टू इवन थिंक ऑफ लाइक टेकिंग आदिल रमी टू द वर्ल्ड कप, मतलब ही वाज सो ब्लडी यूजलेस। क्या ही या पता, या नो आइडिया। एक बार अबे विलियम गैलस मतवेडी में खेल रहा भी था वो यार, ज्यादा, हाँ, मतवेडी खेल रहा माधुरी, था यार वर्ल्ड कप में। मतवेडी हाँ वाज मैटुडी वाज नॉट गुड। इवन अ मैटुडी, हाँ मैटुडी तो बट तभी अच्छा खेल रहा था, मैटुडी वाज अ गुड हाँ, प्लेयर दैट टाइम। वही वो टाइम पे अभी माधुरी तो फिर भी बात, ठीक था। वो डिसेंट था, हाँ। हाँ, नहीं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तभी तो गैलस भी था ना, विलियम गैलस भी नहीं, था गैलस राइट। गैलस, नहीं था, नहीं 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 नहीं। गैलस तो कहाँ ऑलरेडी से रहेगा? रिटायर्ड ना यार। हाँ, नहीं गैर नहीं, कब का कांटे रिटायर था सॉरी, हुआ? ना, हाँ, नहीं, सो आई कांटे। थिंक व्हाट, सॉरी, हाँ, कांते था नहीं, व्हाट आई वाज सेइंग इज William Gallas is like the next person after Adil Rami. Like he was as useless as William Gallas was. You know, like
सबसे लकी मेरे हिसाब से, तुम लोग बोल रहे थे ना कि ही इज लकी, आई थिंक विलियम गैलस इज लकी कि भाई तीनों लंदन क्लब्स के लिए खेल चुका है वो, और भाई में कुछ उतना था नहीं। उसका या नाम पता है क्या था? द इनक्रेडिबल सल्क। सो हाँ, अच्छा, कीपिंग अप विद द इकार्डियंस, यस। यार ये क्या, ये रियलिटी शो ये बनना चाहिए। ये भी प्लेयर पता है, ये भी प्लेयर मतलब इकार्डी वाज लाइक सो व्हाट यू कॉल टैलेंटेड, करियर ही खराब किया इसने अपना खुद का। औरत का चक्कर अग्रिम भैया, औरत का चक्कर। ऐसे कितने प्लेयर्स हैं? अच्छा ये, हाँ, ये क्या शेयर कर रहा है? लुई लिवर लुई वैन गाल्स लिवरपूल आर्मी। Liverpool players trying to get Nunes to score a goal. अरे ये वीडियो मुझे याद है, ये मैंने देखा था। आई डोंट नो एग्जैक्टली वो क्या है, बट नहीं, रूनी का बेटा इज ट्राइंग टू टेक द बॉल, गोल जा रहा नहीं है, डिफिकल्टी से, मतलब लात मार मार के भेजा है। सो दिस इज व्हाट ही इज रेफरिंग टू। सेम सेम हाँ सेम वे लिवरपूल प्लेयर्स आर हेल्पिंग न्यूनेस टू स्कोर द गोल, जैसे रूनी उसके बेटे को हेल्प कर रहा है ना, एंड देन स्टिल हाँ, डजंट वांट टू स्कोर द गोल। स्टिल डजंट वांट टू स्कोर द गोल, हाँ एग्जैक्टली। तो वैसे नहीं, बट ये ओरिजिनल वीडियो भी मैंने देखा था, सो आई रिमेम्बर सीइंग इट। ये ना मार ही नहीं रहा, ही इज गोइंग नियर द गोल बट जस्ट नॉट स्कोरिंग इट। हाँ, वो तो है। अब एनीवे, सो हाँ देख दिव्या, ये जर्सी अभी तो पहना ना ये एंगल से, ओके, हाँ। लाइक अभी जो एंगल में मैं देख रहा हूँ, इट्स लाइक मतलब ऐसा लग रहा है चादर ओढ़ा है तूने। ऐसा ना, ऐसा। हाँ हाँ, लाइक वो, मतलब दैट इज हाउ पीपल रिमेम्बर दैट नाइजीरियन जर्सी ना, उसका वो पैटर्न ही ऐसा है। यस सो हाँ यस यस या यस। हाँ, so keeping up with the Icardians. By the way, a lot of people don't know, मतलब इकार्डी का तो वैसे भी नाम खराब ही है, बट नेमार का जो फैमिली है ना, दैट इज दे आर आल्सो वेरी, मतलब काफी मचाते हैं वो लोग भी। हैव यू हर्ड अबाउट हिम? मतलब उसके फैमिली का नहीं, सुना है तुम लोग में से किसी ने? उसकी हाँ सिस्टर के बारे में सुना है, जब भी उसकी सिस्टर का बर्थडे होता है, नेमार इंजर्ड हाँ, वो होके तो ब्राजील चला जाता हाँ है। ब्राजील चले जाता है, हाँ वो तो है ही। हम्म। बट लाइक उन लोग के सारे फोटोज जो है ना, लाइक फैमिली फोटोज, दे आर ऑल वेरी, बोलता है ना, वेरी सजेस्टिव। मतलब दे आर नॉट या काइंड, मतलब उसके जो बहन और उसकी माँ के साथ जो फोटोज है, दे आर नॉट द टाइप ऑफ पोजेस जो तू अपने माँ और बहन के साथ खींचेगा। एंड ये एक्चुअली एक फुटबॉल कम्युनिटीज में मीम है। सो मतलब मैं एक एफएनजी करके एक चैनल है, उसके मैं एपिसोड देखता हूँ, लाइक हर वीकली उसका एपिसोड आता है, तो उसमें वो नेमार की जब भी बात करता है ना, तो ही ब्रिंग्स अ पोस्टर लाइक हाउ आई पाइप्ड योर मदर। वो पॉपअप आ जाता है, बिकॉज उसका रिकॉर्ड वैसा है। और नेमार की जो माँ है, अभी तो मुझे पता नहीं, बट एट अ पॉइंट वो एक बंदे को डेट कर रही थी जो नेमार से भी छोटा था। बट उसके साथ भी फिर so, वो हो गया ना, उसका भी क्या हो गया? काट के निकल गया वो बंदा, निकल उसकी गया? हाँ, उसकी मम्मी को काट के निकल गया। काट के निकल गया? चाहिए मुझे पता नहीं क्या हुआ फिर, तुम बता सकते हो पता है तो। आई डोंट नो, लाइक आई बाय द वे थिंक छोड़ दिया ना। बाय द वे just a quick update. Arsene Wenger is at the Everett Stadium. He's come हम्म, attending the first game since leaving the club in 2018. ओह वाओ, गुड फॉर हिम। So Wenger's at Emirates. वाओ। और व्हाट डू यू किसके थिंक हाथ ऑफ में सोफा फिंगर्स था? आइडिया ऑफ बायएनुअल वर्ल्ड कप? एमशे, दिव्या, अग्रीम? वाहियात, एकदम एकदम यूजलेस आइडिया है। आई हम्म, मीन यार स्पॉइलिंग फीफा को फुटबॉल, पैसे मतलब कमाने का तरीका मिल फुटबॉलर्स की गया है। तो, अरे भाई वो फुटबॉलर्स को भाई थोड़ा आराम तो चाहिए। तो कितना गेम खिलाओगे उनको, पागल हो जाएंगे वो लोग। हम्म, ये या फिर किसी लीग भी कौन से प्लेयर का स्टार्ट दो था साल वो? में एक बार रखो। हाँ एक्चुअली एक बार ऐसा एक बार, ये एक बार थोड़ा सेंसिबल है कसम से। शायद उनको ऐसा ही करना पड़े कि लीग को 2 साल में एक बार रखो, बाद में जो हम्म, दूसरे सारे इतने सारे भर भर के कॉम्पिटिशन है 1 साल में कर दो, बिकॉज हाँ
डाउन द लाइन अभी फीफा ना धीरे धीरे यही देखेगा, दैट इज व्हाट दे विल लुक टू डू कि भाई हाँ, प्रॉफिट देखेगा अपना। हाँ अभी यूएफए इतना कमा रहा है तो हम लोग क्यों पीछे रहे। एंड ऑब्वियसली फीफा का एक्चुअली प्लान जो है ना, अगर ऑल्दो ऐसा नहीं है कि वो लोग दूध के धुले है, बट बेसिकली उनका जो आइडिया है, अगर वो जो सब एक्सपैंड करेंगे, बाय एनुअल वर्ल्ड कप तो भूल जाओ, आई डोंट वांट दैट, दैट इज अ कंप्लीट नो। बट और ये वर्ल्ड कप के बाद जो टाइप का ये वर्ल्ड कप हुआ, उसके बाद दैट एक्चुअली रीइंफोर्सेस द आइडिया कि भाई 4 साल में वर्ल्ड कप होता है, दैट इज गुड, यू नो, इट रिमेन्स स्पेशल। सो या वो है। बट क्लब वर्ल्ड कप मे बी बाय एनुअल हो सकता है, दैट मेक्स सेंस। सो क्लब वर्ल्ड कप अगर होता है एक्सपैंडेड, सो लेट्स से वो लोग लीग को निकाल दे, they just have the knockout tournaments, you know, या league cup, FA cup, champions league, और उसके बाद में club world cup, makes या a lot of sense। but वो भी नहीं होगा because लीग भी, वो लीग का पैसा भी कितना आता है क्लब्स को सबको, so they are not going to miss out on that, तो वो शायद होगा नहीं। वापस वही तो बोल रहा हूँ, वापस ब्रिंग बैक द इंटर टोटो कप। इंटर टोटो कप, इंटर I remember that, but मतलब मुझे वो नाम पता है, but I forgot what it was, क्या था वो। यार वही था, इट वाज क्लब वर्ल्ड कप ओनली। Yeah, it was नहीं indeed a club World Cup. हाँ नहीं, इंटर टोटो कप वो था, वो तो टोयोटा कप था, क्लब वर्ल्ड कप जो था वो। इंटर No, no, टोटो कप तो ये Inter Club यूएफा का was था, not Inter UEFA यूएफा का का। था, correct, correct. हाँ इंटर टोटो कप Hmm. यूएफा का था। हाँ, सॉरी सॉरी। एंड उसमें ऐसा था कि उसमें कोई विनर नहीं था, अच्छा, इट वाज लाइक इंटर कुछ टॉप। कॉन्टिनेंटल कप, इट वाज इंटर कॉन्टिनेंटल कप। हाँ तो वो तो ये इंटर था ना, वही तो, वो टोयोटा का था, दैट वाज द टोयोटा कप। सो वो इंटर कॉन्टिनेंटल कप बना, और फिर वो अभी करंट वाला क्लब वर्ल्ड कप बना। हाँ वही तो बोल रहा हूँ मैं, दैट्स व्हाट आई एम Hmm. सेइंग। हाँ सो उसमें तो यही था, बट उसमें तो एक ही मैच होता था, लाइक वन साउथ अमेरिकन वर्सेस यूरोपियन चैंपियंस, बस, है ना। Hmm. Hmm. हाँ वही। उसमें भी बोका जूनियर्स भाई बैंड बजा के गया था रियल मैड्रिड का, आई स्टिल रिमेंबर। रियल मैड्रिड का, एसी मिलान का भी, दे इवन बीट एसी बोका मिलान। जूनियर्स वर लाइक अ वेरी गुड बैलेंस, व्हाट डू यू कॉल, फेयर वेरी गुड। मैड्रिड। या Back then, correct, correct. Very, very good. हाँ Yeah, yeah. वो लोग ने एक बार रियल मैड्रिड को हराया था, द रियल मैड्रिड विच इंक्लूडेड पेले, सॉरी फिगो एंड राउल, जिडान, और उसके बाद नॉट Correct. जिडान, हाँ दे हैड मैकलेले ना। they had Raul and Figo, that I remember। उसके बाद में they even मैकलेले। beat AC Milan which had Shevchenko, Kaká and all of those, वो लोग को पेनल्टीज पे हराया था if I'm not wrong। बट उसमें भी ऐसा ही था कि वो सेलिब्रेशन, मतलब साउथ अमेरिका में क्लब वर्ल्ड कप का हमेशा से इम्पोर्टेंस रहा है, यूरोप वाले दे डोंट रियली केयर अबाउट इट मच। तो अभी भी मतलब जो क्रिटिसिज्म है जो क्लब एक्सपैंडेड क्लब वर्ल्ड कप का, यही है दैट आउटसाइड साउथ अमेरिका उसको कोई देखता ही नहीं है। ऑल्दो आई हैव अ फीलिंग कि एशिया और अफ्रीका में भी अगर क्लब्स इन्वॉल्व होते हैं, धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा। बट Correct. यूरोपियंस को तो Hmm. ऑब्वियसली, अगर जैसे अभी सब टूर्नामेंट्स में मेजोरिटी हो रहा है कि एंड में यूरोपियन क्लब ही अगर डोमिनेट कर रहा है, तो अलग ग्लोबल टूर्नामेंट का शायद मतलब ना हो। Hmm. हाँ अच्छा, ये क्या वो वर्ल्ड बोल रहे कप हैं, था वर्ल्ड इसलिए कप जाने इसलिए दिया, जाने दीजिए, ग्लोरीफाइड फ्रेंडली होता तो गांड मार गान मार देते दे। बेल्जियम। वेरी बेल्जियम। गुड वन, गुड वन, यस वेरी यार गुड। एटलीस्ट अच्छा पता है क्या नाम है इसका, वो क्या नाम है इसका, लुकाकू, ही ब्रोक दैट ग्लास, रिमेंबर? कौन सा? वंस दीस गाइस गॉट आउट ना, क्या नाम है, बेल्जियम, फ्रॉम द अच्छा ग्रुप स्टेज, ऐसा लुकाकू ऐसा कांच तोड़ा था ना। नो आई डोंट रिमेम्बर, जस्ट अ आई सेकंड, आई डोंट जस्ट हैव टू रिमेम्बर कम हम्म बैक। हम्म क्या प्रशांत। हाउ इज ब्राजील नंबर नंबर उनो? एग्जैक्टली। हाउ इज ब्राजील नंबर उनो, समझा नहीं, व्हाट डज ही मीन, अरे क्या पूछ नंबर रहा है। वन, नंबर उनो मतलब नंबर वन। हाँ, the numero uno, okay, okay, Brazil. Right, maybe it's हम्म not just you win the World Cup, it's about overall performance. Brazil सारे इंटरनेशनल फ्रेंडली से बहुत कम मैचेस हारा है, so because of हम्म that, in fact if you look at that, उसमें बेल्जियम भी कुछ टॉप 5 में है। बेल्जियम इनफैक्ट वर्ल्ड कप में तो नॉकआउट स्टेज तक भी नहीं पहुंचा था, बट ओवरऑल उनका या जो है बाकी सब गेम्स में since the last 2 years they are doing really well. So या that's how it is. It's not just on one competition. It's overall how you played for the past year or two. You accumulate points यार on the basis of that, वो and लोग तो गया भाई hmm, पूरा, देयर होल स्क्वाड इज डिप्लीटेड नाउ, वो लोग खत्म हो गया किसका बेल्जियम का स्क्वाड। किसका बेल्जियम बेल्जियम। बेल्जियम का ना, उन they had a very good chance last World Cup in Russia and they squandered it. You know, that was a golden या generation. Now they've all become old, so they don't have any हम्म young upcoming players.
So Uh, again, very difficult for them to now, they can compete try for for. the Euros. They can try for the Euros if they want to, but I Mm, don't think World Cup they will sustain. yeah, even I agree with you on that. So वो sustain नहीं कर पाएंगे, correct? 20 minutes हो गए. Arsenal are dominating the game. Possession wise, the entire ball is with Arsenal. Heard that rumor that Hmm. Belgium players paid from their own pocket so that they can return separately and not in a team flight which was arranged. Yes, और टीम में बहुत सारे rift थे and lot of players went separate way. They don't return together. They didn't return together. That is correct. It is not a rumor. It is actually a fact. So that actually happened, and especially it was there was a lot of rift between De Bruyne, Thibaut Courtois, फिर वर्टोंगन सारे बहुत सारे ये थे. Lukaku was the mediator who was trying to calm down the situation, but बहुत ही ड्रेसिंग रूम में बहुत अनरश था and they were not ready to play in the World Cup because team bonding कुछ था ही नहीं. And Hmm. that actually is not a rumor, it's a fact, MJ. That actually happened. So feel sad for Belgium, but I think next World Cup तक बस 4 साल है. They can get in good talent and the same amount of the Yeah. same kind of players. Maybe they will stand a chance to go into the knockout stages next time. But right now, they're all players are about 31, 32 top players, and they need a fresh start. Belgium. Let's see how that turns out to be. But yes, Arsenal on the other hand have a corner here. Sorry, West Ham have a corner here. Cresswell will take it. West Ham are really good at this dead ball situations. They score a lot of goals from dead ball situations. A nice corner by Cresswell. Brilliantly taken shot. Easily saved by Ramsdale. And now Arsenal with a counter. Brilliantly done. Released Nketiah. He's got two players ahead of him. Nketiah takes a shot. Nicely blocked by Dawson there. Interesting 2 minutes here in the game. न्यूकासल अच्छा खेल रहा है यार ये सीजन. Mm, absolutely भाई. ना सेकंड पे आ गया वो लोग. They're second this season. वही मैं देख रहा था तो अभी. मतलब they're doing fantastically well. बहुत ही सुपर्ब खेल रहे हैं. I mean ओवरऑल उनके पास जैसे कि मैंने बोला उनके कोई स्टार प्लेयर भी नहीं है बट ओवरऑल बट जो टीम जो मैनेजर है उनका है वो बहुत ही बढ़िया है. एंड Yeah. दे फाइंड द राइट प्लेयर्स. सारे के सारे प्लेयर्स राइट प्लेयर्स है. ऐसा कोई प्लेयर जो Yeah. साइन नहीं किया उन्होंने जो मतलब गलत प्लेयर साइन किया हो. दे आर Yeah. फैंटास्टिक प्लेयर्स कैरियन ट्रिपियर, गुई मारेस, फिर उनका सेंटर बैक Yeah. बॉटमैन. दे आर ऑल गुड, रियली गुड Yeah. प्लेयर्स. नॉट वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स बट decent players to play together in a team and perform Yeah. well. That's exactly what you need. As things stand, Newcastle are second behind Arsenal. City will be playing in 2 days' time, so that they will get a chance to go above Newcastle. Meanwhile, Arsenal are still leading with 38 points. Tottenham in fourth place, followed by United and then Liverpool. United are fifth, but United's goal difference is very bad. The goal difference is zero compared to the other teams. We are full goal difference is in double digits. So it's going to be an interesting season. Not sure which Arsenal come close here with Odegaard, but West Ham managed to keep this out. Prashant is back here. Let me add him. Yes. Hey there, thank you for adding me back quickly. Yeah, No, so sorry, you guys are still talking about Belgium, is it? no, we're done. We're done. We're done. Ah, I actually wanted to ask you a question 10 minutes back, but we switched mm, topics. So, ah. I wanted to know from you what is the latest on Juventus? What is the situation on that? I mean, is it bad, or is there a chance you will recover from that situation? Can you explain to me and our viewers what exactly went wrong, has gone wrong at Juventus? So I mean, with regards to the scandal, I mean, we a lot of it's not like a lot of information has been divulged out ever since the initial announcement. So at this point, the
most concrete information that I do have is still the same, which I had like a few days ago, which was that It's a obviously penalty. guys like Sorry to Pavel interrupt you, Nedved. Prashant. Sorry, yeah, Sorry to interrupt. The penalty for West Ham. penalty for West Ham. Okay, that'll Yeah. be Mm. interesting. Hmm. So yeah, coming back Okay. to it. Correct. Continue. Yeah. Yeah, so Andrea Agnelli has left Juventus, and so has Pavel Nedved, and Hmm. it is about accounting fraud. But uh, the the thing is that there was a Juventus representative who did state quite to the press in one of the earlier, like in one or two, like within a day or two after the entire scandal was announced, that this is what we feel is that this might turn out to be worse than culture police scandal. So that Okay. is the feeling that they have. So we'll just have to wait and watch with regards to it, because I don't think there has been much of there has not been any new update. There have not been regular updates with regards to it. So we'll have to wait and watch. But it is understandable. I mean, to be honest, as I mentioned earlier, even like in our other conversations, that it is not surprising for me that this happened with Juventus, because they the kind of deals that they have been making in the market does imply that they're doing a lot of financially shady stuff. Okay, what noise was that? Hello. I I just can had hear you, some. Prashant. Yeah. Okay. Okay. I think there was just some strange noise there for a bit. Anyway, so Okay. my point being that Juventus, the way they've been dealing in the transfer market, that has actually looked. It has been it has looked like the transfer dealings of a club that is trying to Mhm. play its way out of financial ruins, like I mentioned, the Federico Chiesa deal. Rather than buying that Hmm. player out front, they actually bought him for a 2-year loan deal when he only had like about 2 or 3 years left on his contract with his former club. So those are very indicative of a club which is not in a good shape financially. So it was not a surprise, but I don't really have any particular update um on that just West yet. Ham. West Ham Hmm, have scored, by the way, okay, they've from the scored. penalty. Okay, so Ben Rama. on my screen I see Ben Rama is still stepping up. So yeah, so you spoiled that for me, but I'll still watch the penalty. Good penalty, good penalty, Yeah. Nice straight down the hitting. Mhm. Very center. nice. So long center. Yeah. Yeah, Beating Ramsdale. yeah, nice celebration as well. Yeah. Uh, which country is Benrama from? Side Ben Rama. I think he's from those. Let me check. Tunisia or Morocco or somewhere? Morocco or Tunisia? Algeria. 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 Yeah. Yeah, Yeah. okay, yeah. He just his name kind of made me curious. Yeah, good penalty, Hmm. straight down the center. Yeah. So yeah, West Ham are up. See, I was just telling you that West Ham might trouble them a little. Well, they have scored, uh, Hmm. but it's still a good amount of time left. Let's see if Arsenal Hmm. can bounce back on this. But Hmm. yeah, And yes, Arsenal are is there down. a chance? Is there a chance if Juventus get relegated from the scam, Prashant? This financial fraud transactions what they've Yes, done. yes. Hmm. So So there uh, is so there is a chance that these players will be in the market if Juventus get relegated, right? yeah, right. So they will have to obviously sell off the players, and the good thing about the culture pulley, when the culture pulley scandal happened way back in 2006, was Hmm. that the Hmm. scandal was about their about the match fixing, right? Like they were Yeah, correct, influencing referees and things like that. So correct. their accounts and all those things were never brought into question. Therefore, Hmm. once they were, even after they were down in the Serie B, they managed to probably play somehow with their accounts, and they managed to hold on to a lot of their players, like the likes of Del Piero, Pavel Nedved, and Del Piero, uh, Buffon. Yeah, even David Trezeguet was there for some time. They correct, had Didier correct. Deschamps as their coach, even in Serie B. Hmm. Imagine Didier Deschamps, the World Cup winning manager, right? Two-time World Cup Hmm. finalist, Correct, correct. one-time Euro,
finalist. That guy mm, was coaching Juventus in Serie B. Yeah. So you mm, know, obviously, even back then they would have pulled a trick or two with their accounts. But right now, whatever is happening is about their account. So once they are relegated, they won't really be able to do much here, because if they again play with their accounts, the situation might only get worse, because their accounts will be under scrutiny all the time. So that is why the initial statement which I shared with you from one of the mm, from one of the Juventus representatives, that this mm, might actually be worse than Calciopoli, and this is the reason why. Because if they get relegated now, with the financial mm. situation they are in, it will be very very hard for them to come back up. Yeah, correct. I agree. So Newcastle finishing uh, about Chelsea and United. Yeah, possible, yeah. So just one more thing, like I was just going through it, sure. I was just going through the latest news that I have found, and uh, there's no real possible update about the hearing about the investigation. As I've said, like, there's nothing particularly Mm, with regards to the scandal as such that has come out, but their accounts have been released, and the accounts for Juventus are in red, like they are in deep red for this season. So they are still, mhm. in loss. So that makes things harder for them in regards to Okay, everything, in regards to the scandal. Yeah. So okay. yeah. So that's what we know. So 30 minutes Yes. in, Arsenal up by a goal to Arsenal down by a goal to nil against West Ham. Said Panorama has scored the penalty. Uh, what do you make of the game so far? Do you think who do you think has been in ascendancy? Do you think West Ham got a goal, like West Ham scoring was against the run of play, or do you think they were still doing pretty all right? I mean, they were looking very organized. Arsenal are penetrating. Arsenal are asking questions. That's what we always Hmm. expected. But overall, West Hmm. Ham have stood their ground. And if Hmm. you ask me, the Arsenal is definitely looking a better team in terms of the quality and the attack that they have. But West Ham are very organized. Defensively they're organized. They know every player They knows their job, and it was a counter-attack mode which Bowen got a penalty. It was a very poor tackle from Partey. Arsenal again continuing to play there. Mhm. Yeah, so Yeah, I so thought I I thought it can was see against that the they run are of keeping play. their shape. Yeah, Yeah, it was against the run of play. Yeah, so but I agree with you on the part that they look very organized, because even right now, as Arsenal are attacking, I can see that West Ham are remaining in their shape. The correct. formation The is final actually ball, visible. we're not Yeah, able to produce that final ball, the killer final ball. Arsenal, yes, Arsenal, right? You're talking about Arsenal Yeah, not being able Arsenal, to. Yeah. correct. Arsenal, yes, yes. So, Yeah. West Ham are very organized, well organized defensively, and that's what is the strong point of David Moyes' side. They're always organized very well defensively. Every player knows their job. Hmm. They understand each other really well, and that's why David Moyes has been so successful at West Ham. Yeah. Great stream, enjoyed. अपना इधर का कल कॉलेज जाना है. Okay, okay, Good अंशु night. भाई. ठीक है. Good night. I'm sure. बाय Good night, good अभिषेक. night. Bye, bye. मिलते हैं. कल मिलेंगे. चलते Hope चलते. Arteta wins it 3-1. Yeah. हाँ. ओके. वरना आर्टेटा आउट पहली फुर्सत में. हाँ हाँ हाँ. West Ham again counter-attacking here. Got Cresswell, Ben Rama, Cresswell cross. Ooh, free kick now. MC says good night, Drepinaldo, Don Prashant Divya bhai. Good night, bhai. Good night. Good See Good you night. night. Good tomorrow. night. I'm Tomorrow for sure. the United See you stream. tomorrow. Yep. Yeah. By the way, quick update. It's by Fabrizio Romano. If Manchester United end up getting Cody Gakpo, United will let Anthony Elanga leave on loan to Everton. Maybe Everton, they're interested, but that's हाँ, if yeah. they end up getting Cody Gakpo, they will let Elanga leave on loan. Yeah, I've Yeah, read because that. now I read. they've got Garnacho as well.
So yes, they've got a good squad depth. Yeah, I've read about that. Yeah, so Elanga is apparently frustrated with the bit part role that he's getting under Eric Ten Hag, and therefore he will be, he's looking for a loan move. But it's not just Everton. There are quite a few clubs which are in the running for, Correct. getting him on loan. And yeah, yeah, correct, correct, exactly. And Yeah. people make fun of him, but I feel that he contributes a lot, and he's a very hard-working player. He's a type of player who will give everything for the team. May not have the skills, and he's very young. He's not mature, but he's been called on to play, and he's given everything. So maybe not a United player, but then whenever I've seen him play on the pitch, he's given everything. So that's what is good about Anthony Alanga. Mm. Yeah, at least there's not a commitment issue. Talent and everything, skill and everything might, if he is just groomed the right way, it might come along. Hmm. Oh yeah. So Divya, as you can see, I'm trying to, just like your jersey, I'm also trying to imitate that pattern. Uh, uh, anyway, so yeah. uh, so coming back to the match for the moment, hmm. Arsenal have just considered a foul on Mikhail Antonio, and West Ham have a free kick in their own Possession half. is So 64% to Arsenal, 36% to West Ham. yeah, so Arsenal are kind of in the ascendancy there. But yeah, so basically coming back to the Juventus scandal. So yeah, the even like after going through in a all the latest updates once again, it is Hmm. very likely that Juventus will be relegated. Oh, is it? So yeah, because it's an accounting, it's basically accounts falsification. So imagine how big the scandal would have been. Andre Agnelli had to leave his position. So Yeah. there's definitely something cooking there. So yeah, let's see. That means that the Serie A will now be more competitive, which is good. We'll have the Yeah, but Milan clubs as in the it is since Indian the League. last 2 years, Juventus aren't challenging Yeah, for the title. They yeah, aren't they but aren't to the same level. yeah, they And aren't challenging for the who's title. But who's stopping the league? who is Sorry, who's Who's topping the stopping the league? league? I think Napoli, right? Napoli. Napoli is Napoli, on right? top. Yeah, Napoli. and they're Eight points. comfortable. I think. Yeah. Well, Hmm. Napoli are good, and who's the manager? I remember his name. Oh gosh, I forgot his name. They have a good manager. The manager Spalletti, they have, right? Luciano Uh, Spalletti. Luciano Spalletti. Yeah, Luciano Spalletti. So I mean, they are doing very well. Obviously, even in the Champions League, they were giving a run to Liverpool and all those teams as well, yeah. Yes, right? So yes, yes. Yeah. they They are did, doing they did. very well. Yeah, so they are apparently doing very well under him. And yeah, if Napoli win it, I mean, nothing like it. Like Yep. because after Juventus, it has always been the Milan teams, right? They Hmm. who have mostly dominated Serie A. So if it's Napoli, and even after the Milan teams, it's been the Roman teams, um, Roma, Lazio, teams like those. So Yeah. Yeah, it's good that Serie A has in recent seasons, thrown Yeah. up some very good new names. Right now, I mean, Napoli has now become familiar, but even Yeah. before Napoli, we had Fiorentina, we had Atalanta, who were Yeah. amazing, right? So yeah, a lot of new names coming up. Udinese, there were Yeah. Udinese Udinese. who had, Yeah. yeah, they had Di also come Natale. for a, That Di yeah, Natale, I remember. yeah. So even he had come in for some. I mean, even that team was there in the. I think they were there in Europe for a season as well, if I'm not wrong, right? Yes, someone should Udinese actually was there. buy one Italian team. Some sheikh, what do you call, should buy an Italian team. The thing with the Italian buying in Italy is like it's financially very complicated. I think that's why no one is Yeah. buying there Yeah. because If get a chance now, they are probably they very should buy jugado. plan.
You're They very are very jugadu. jugaadu. Yeah. अगर खरीदना But है ना, like imagine, they should, yeah. Mm. Hmm. Yeah. but imagine if Yeah. Juventus gets relegated, the amount of players that will be on the transfer market. If I'm looking at the Yeah. Juventus squad, they got some fantastic players. You've got Correct. uh, Who have they this got? guy Pogba. Danilo, Danilo, Federico Alexandro, Chiesa. yeah, Daniel Rio, Rugani, Paredes, Pogba, Locatelli, Rabiot, Weston McKennie, and then they've got the attackers Dusan Vlahovic, Adruiz, Arkaduiz Milik. They've got Moise Kean, Federico Chiesa. They've got some fantastic players in the squad, and if they Yeah, are but on the They have they market, are this not doing 19. very good, right? Sorry. They have this 19-year-old like gem from Argentina also, na? Matthias Sule. Matthias, Acha, yes, yes, yes. Yeah, okay. supposed to be Well, good not Center on the back. team. Yeah. not aware of him. Matthias De Ligt is still there, right? De Ligt is still No, with. he's No, in no, Oh, Bayern. Delete is he joined Bayern. Bayern. He joined Bayern. Bayern, right? Bayern, yes. Okay, yeah. Bayern. So he Yes, joined yes. Bayern Munich. So no, but the thing is that if these, I mean, these players are good on paper, but Pogba is injured. Hmm. A lot of Hmm. actually, to be honest, their squad they needed replacement anyway. Juventus's Yeah, squad was they anyway did. not, it was not up to the mark. Like in recent Correct. seasons, the kind of investment that they have made, right? Um Hmm. Ronaldo was one, of course, but even the other players that they have, they are all like on the wrong side of 30, and Yeah. that's why Yeah. the return of what Max Allegri has not been much of a success because he had, not only has he had the, like upon return, not only has he got the same squad, but like a similar squad, but he has got the exact same squad. So, but now they are all on the wrong side of 30s, like Yeah. Yeah. players. So they are still depending on Bonucci, right? I believe. Hmm. Correct. Yeah. They just So sold Matthias Delete, you know. yeah, So they had a exactly. young center back. They don't have much of an option in terms of defenders. Drogani has been struggling. He's been rated a lot, but then he's not been able to make his mark in the Serie Yeah. A football. So Yeah, Vlahovic was hyped up a lot, but he has not done much he's so good. far. No, no, he's good. He's I good. mean, He's he's actually good, good. but He's he's good, but hmm. Yeah. he hasn't exactly set the stage on fire simply because he also depends on the service from the rest of the Correct. team, right? Correct. They sold Yeah. Correct. Paulo And he's not Dybala had last season as well. hmm. Sorry, Yeah. he's Correct. not Paulo had what? Dybala went on a free transfer. Yeah, he went on a free Yeah. transfer. And Juventus are Yeah, also out of the Champions League. They are in the Europa League, if you remember. yeah, They are in the exactly, Europa and League. Yes. right, and additionally, uh, like not only that, uh, Hmm. sorry, what was I about to refer to? So yeah, so these, all of these players anyway, they require replacement, right? So they, it's not like their squad is doing very well. Okay, so Hmm. if, like, and additionally, they were also involved in the Super League. So now you understand, if you connect all the dots, you can understand why Correct. Juventus Correct. were one of the Correct. main ones who were pushing for the Super League. So Hmm. Juventus and Barcelona, right? Like they, both of Hmm. them Yeah. are financially in a very bad shape. So they, and Hmm. okay, Madrid, fine. I mean, Madrid are in a good shape financially, okay, but but they are not like in the situation like these guys are. Their squads are still good. The Madrid squad is still very good, right? They are Yeah. getting Hmm. their It is, it players is. replaced at on the right time. Sorry. Yeah, it is. It is very good. Yeah. So they are getting them replaced on at the right time. They are replacing their squad at the right time. Chouameni and those guys, for example. So Madrid are in Yeah. a good shape, but Juventus need new players. Barca need new players. So Super League is now more or less dead anyway. Even more dead than Hmm. it already was. And I mean, I would, we can expect it to be, the Super League conversation to completely go away. At least the Super League that these guys proposed. Maybe FIFA or UEFA will come up with something else, but this is what it is. 43 minutes into the game. We're just about to come close to the end of half time. Arsenal still not able to penetrate. First time very well organized.
Uh, question I had, guys. Now that we have so many good teams in the Europa League, who do you think will win the Europa League? Who are favorites right now? Who are the favorites to win the Europa League? None of the Hmm. big teams. Now the big teams. Yeah, that is the magic of the Europa League. Like even last year, I believe Eintracht Frankfurt won it, right? So it will be Correct, someone like correct. That's right. them. It will be someone like that. Hmm. I don't see one of these big names winning it at Yeah. all by any chance. Because and specifically because they are big names, but on paper they are all those teams are struggling, right? United, Yeah. Barcelona, Juventus. So I don't think any one of them will be winning it. Which other big team is there? I believe Arsenal are still there in the Europa League, if I'm not wrong, Yeah. right? Yes, Arsenal Yeah. are there. I think Arsenal So look to be the favorites Arsenal, right yeah, now. then Arsenal might. I mean, at this point, on basis of form, yes, Arsenal would be the favorites, but you never know. Mm, yeah, you never know. So I'll do a recap which big teams are there still surviving in the competition. There's Ajax, there's Barcelona, Man Hmm. United, there's Salzburg, there's Roma, there is Juventus, there's Monaco, there's Sevilla, PSV Eindhoven, and who else you've Oh, got? did you Yeah, mention Sevilla? yeah, Did you Sevilla, mention correct. Sevilla? Oh, Yeah, they I did are mention the Sevilla. so Sevilla will win the competition. I don't even care No, now but what their Sevilla form just is. sacked the manager. Sevilla Doesn't just matter. sacked the manager. Yeah. Sevilla can sack their whole squad and they will still end up winning the Europa League. They'll win it for the sixth time Yeah, then. Mm, sixth time, right? Because they Yeah. that is They what they win this. do. They they get eliminated from the Champions League. They come third in their group and then they win the Europa League. That's By the way, their thing. they are on 18th position now in La Liga. They're in the Doesn't matter. They relegation will battle. they will get relegated and still win the Europa League because that is just their. I don't know what it is with them, but I have seen them, right. Like we have all seen how they do in the Europa League. They just win it, And again, Yeah. Europa League, of course, it is a knockout format, so maybe because of that, but they have won it in the past, even when they have not done well in the league. So I Hmm. I mean, on those bases, I would say that yeah, I think they should be the favorites to do so. So yeah, I let's just so on just purely on terms of the competition in the record, I would sorry, record in the competition, Sevilla. Otherwise, Arsenal. Like as per the current form, Arsenal. yeah, Those are my even I feel favorites. Arsenal. Yeah. What about you, Agreem? Why do I think I it's gonna be Roma. Jose Mourinho. Huh. Hmm. Interesting. He did the what do you call it? He did the Conference League. He might do the Yeah. what do you call Double. Europa League. Yeah. Yeah. Conference League and And Europa League double. imagine in his next season he wins the Champions League with Roma. Yeah. I know that's the. I mean, That yeah. has I never have happened. actually Actually, I considered that. mean, that has never happened with any manager except for Jose Mourinho. Yeah, he won If you the remember, UEFA Europa back League. when it was UEFA Cup, Yeah, the UEFA yeah, Cup and yeah, Champions League back to back. So yeah, he is the only one to do it. Yeah. yeah, goodness, yeah, So yeah, I mean, it's not unimaginable, but I don't think Roma have that squad. Like, but then again, you never know. Jose, if Jose gets that magic, then yeah. yeah, But the bigger task will be to win the Champions League next season rather than this one. yeah, And the problem, see, the thing with his Porto side was that although they were in the UEFA Cup, what was called as the UEFA Cup back then, they were yeah. still doing well in the league. The current Roma side that he has, they are not even doing very well in the league, right? Let me just check the Serie A. I don't think they have in the top four as well. Like at this point, they are not in Right now, the. Roma, no, they're not in top four. They're definitely not in top four. Yeah, they're seventh. I know that. Yeah, they're seventh. So, Yeah, so They're seventh they might, in the Serie yeah, A. they might try for the what do you call the Europa wholeheartedly. Yeah, exactly. So with the current position that they have, the best they can get is, like on the current form that I see that they have, the best they can do is to qualify for the Europa League. I don't see them qualifying for the top four. So
um, if that is the kind of squad they have, I'm not sure if they will be able to win the Europa League. And Yep. as we speak, There's a that I VR, can there's a see that penalty there is check. a VR check which is going on. Yeah, Yeah, VR check going on. And he's going to go and have a look. Referee, yeah, guy is going to go and have a look at it. First time VAR being used after a long time. yeah. Yeah, Mm, okay. It. I think he is giving the penalty. yeah, I think even I feel that he's going to give the penalty. I mean, Hands in the air. it looks. Yeah, the hand is in the air. It's not like in an unnatural position. Like it's. It is No basically penalty. blocking the shot. No, no penalty. It's not a No penalty. penalty. Oh, No penalty. Yeah. okay. Let me just look at the replay. Oh, it's not hit his hand. That's what it looks like. It Yeah, looks it's like not a it came off his head. head. Yeah, it came off his head. Correct. So yeah, no Arteta is penalty. Correct furious. decision. Yeah, correct Arteta decision is though. furious. Yeah. Correct decision. Correct decision in terms of the VAR though. So West Ham remain in the lead as the first half comes to a close, and yeah, they will be losing their second position, right? Mm-hmm. Sorry. If let me just check the If table. Sorry. no, Um, Arsenal are comfortable. Arsenal are comfortable. Yeah. at Even the if top, yeah, Man they City are. win, even if Man City win day after tomorrow, they'll still be 2 points behind Arsenal. Yeah, That is if Arsenal lose today. Yeah, yeah, but right. Man City has to play Arsenal now, na? Yeah, that is there. So that is for another day to talk about. But right now, Yeah. if Arsenal lose today and if Man City win, they're still going to be Yeah. 2 points behind Arsenal. So, Yeah, Yeah. and right. like you said, Arsenal have to play Man City, but that's our Yeah. talk for another day. Right now, Yeah, so we still they have will 45 remain minutes to top. go. Mm, Yeah, they will yeah. remain top of the league. Oh my God, they have done really well, Arsenal this season. 12 out of 15 wins. Uh, hmm, okay. So yeah, it's half time here. First half is over. Mm. Okay, a quick question for you. Quick question for a United fan and a you Barca fan. If you were to get relegated, Prashant, which players you would want to come over to United from Juventus, and Agrimba, which players do you want to come from Juventus to Barcelona? Hmm. Hmm. I'll just be back. I'll be on the headphones. I'll be listening to conversation. Just give me 1 minute, okay? Mm-hmm. Yeah, but yeah, you So can continue with the answer. Yeah. yeah. So Agrim, would you want to go first? You was. I will just look at the Juventus squad, then give my answer. Acha. Oh, okay. Acha, you are Yeah. looking at their squad. Um, Hmm. I would say Vlahovic should and should be signed, and the other would be uh, this guy. Sorry, who was I talking about? Rabio, the guy whom Hmm. United have been linked with. Hmm. So yeah, so Adrian Rabiot, because he's had a good World Cup. If he can replicate that form domestically with United, that would be good. Hmm. And on the other side, I guess yeah, Vlahovic, because he's a good striker. United are looking for a striker now that Ronaldo is gone, so Vlahovic would be a good replacement. Hmm. Okay. From my side, I'll go for these two youngsters. What's his name? Matthias Sule from Juventus center back, and this guy Enzo Barnechea
again 21 years old. So, might just invest in youth. Ah, okay. So for Barca, yes. Yeah. Hmm. Yeah, makes Also sense. because But Argentinian, right? Argentinians are yeah, so like they will pure settle well. bred. Yeah. Yeah. So do you think Barca will have the money to sign them? They can actually. They won't probably have too much of issue paying like 10 million. They won't be having a very less, what do you call, release clause. Hmm. High, so not Because less, but high. just to quote the great M Shea, बारसा के Hmm. पास गांड धोने के पैसे नहीं है. But मेरे को लगता है within like couple of seasons, Barcelona will come back to like what you call positive spending. Net How? spending आ जाएगा. कैसे? Yeah. But कैसे bro? Like उन लोग को for that to happen they have to Yeah, they perform have to that way as sell. well. No, it's not about performing, but I think they have to sell some of the players. Like eventually, I don't think Memphis is going to stay any which way. And possibly, Hmm. I think that there are, I don't know how much of this news is true, but Ansu Fati is like put on transfer list. Huh, I heard that rumor, yeah. That he has been put Yeah, on transfer list. I don't know if that's true. yeah, yeah. Because I don't think he's like fit to play for Barcelona, Hmm. And and possibly they can sell Ferran Torres and Dembele as well. Dembele to I heard they had put him on Yeah, transfer list before as well. yeah. But So Ferran Torres they can sell them. Ferran Torres to they will sell him. Yeah, So ho gaya if they but they will need to find clubs who can shed out the kind of money that they shedded out. yeah. So मतलब 20-30 million is not bad. मेरे हिसाब से. बट किसका 20-30 million फेरान टोरेस का कितना भरा था वो लोग ने 55, 50 55, 70 55, million. 70 राइट 70 million. हाँ 70 भरा हाँ तो था मतलब तो 40 पकड़ ले. हम्म 40 You कौन know, देगा I think, I think this is what my feeling is. Barcelona will again try to sell Frankie De Jong to generate that money. हम्म. I think they will explore the option because that is the नहीं बट most मेरे को. viable and to I mean हम्म. एक ऐसा option है जहाँ से उनको fund generate हो सकते हैं and they want to sign Bernardo Silva, right? If I am not wrong, still नहीं no, are those links are off now. Bernardo Silva links are off, has been off. They were अच्छा trying to okay. get Benjamin Pavard. Okay. But it doesn't Yeah, make sense यार. Benjamin Pavard बहुत ही मतलब is not good यार. yeah, Xavi wants a fullback who is more attack minded. yeah, Pavard मुझे yeah, लगता है इतना है is okay. I mean, average player who flopped at Bayern. Imagine coming yeah, from not working out in Bundesliga and coming yeah. to La Liga. So it is very unlikely that to work out. But yeah, talking about funds, I don't think unless they sell a player and generate funds, they won't be able to sign players. समर में पता नहीं क्या है कैसा होने वाला है how But are I they going think to manage they might even sell Rafinha also, huh, if required. Rafinha पर is having किसको a very बेचेंगे bad season. किसको बेचेंगे और who will Rafinha, pay that money नहीं बट हाँ Rafinha, रफीनिया कौन से क्लब को बेच who is going to buy रफीनिया Chelsea can buy. Na? Chelsea needs actually the what do you call wingers. Na? और चेल्सी ने और दो अभी ऑलरेडी उन्होंने एनको को साइन कर लिया है Yeah. and Chelsea and do you think Barca wants to offload a player Chelsea will then Hmm. end up paying 60 million मुझे नहीं लगता Yeah, then they will 60 not million have is all the nothing for bargaining Chelsea. chips Yeah, but उनके लिए अच्छा उनके लिए नथिंग रहेगा बट वो लोग 55. क्यों इन्वेस्ट करेंगे when That's what I'm thinking. हाँ That हम्म, money will be somewhere around like 55-60 million तक ही रहेगा. What Barcelona नहीं is नहीं looking मुझे to लगता pay. है उससे भी कम रहेगा बिकॉज सरप्लस टू रिक्वायरमेंट प्लेयर को कोई भी इतना नहीं देता पैसा बिकॉज दे नो बारसा को नहीं चाहिए वो प्लेयर दे वांट टू सेल तुम तेरे पैसा कम ही देगा 50 मिलियन के अंडर ही होगा बट ले लेट्स
wait and watch. Dembele another player they may look to offload because यार Yeah. I think वो को साइन नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए था unnecessary दिया कॉन्ट्रैक्ट because ups and वो तो downs उसके there लिए किया is है, not वो a तो उसके लिए किया है, लाइक hmm, दे वांट टू सेल हिम, hmm, तो लाइक मेरे को लगता है 40 मिलियन में जाएगा डेम्बेले। hmm. 40 million would still be less. The thing is कि ज्यादा है 40 Barca's नहीं क्योंकि अभी आई थिंक इसके बाद उसका एक साल ही बाकी है कॉन्ट्रैक्ट पे with 1 year left on या his contract 40 million हाँ, but very difficult to get that's what I'm saying ना, as in difficult to get तो है ही, but like see compared to what Barca have paid, 40 million is Hmm, like nothing compared to that, right? Or या hmm, so to, like you are talking about balancing the books, right? The balancing of the या accounts. ये how will they manage it? Specifically after this season, ये लोग ने इतने liver pull कर करके they have bought in all that money and they have signed these players. अभी अगर if they या दे had हैव to टू sell शो, them anyway, नहीं हाँ, बट but उनको now if लाइक they दे हैव had to टू sell शो them लाइक anyway, कितना 30, why were they signed at the first place? 30, What was the yeah, idea they can, behind making so many signings? चल वो तो इवन लेवेंडोस्की आई एक डोंट, था, हाँ, they have इवन to still generate लेवेंडोस्की एक like था, 30-40 million for to balance the books, so 30-40 million हम्म, should not be an issue मेरे हिसाब से। हाँ, बट 30-40 million पहले मतलब करंट विंडो में ऐसा होगा कि द काइंड ऑफ प्लेयर्स दे आर बीइंग ऑफर्ड, हम्म आई डोंट थिंक पीपल विल बी विलिंग टू पे दैट अप, मतलब डेम्बेले के exactly लिए my point थर्टी yes फोर्टी मिलियन शायद नहीं देगा कोई, इवन इफ hmm, यू से के फेरन टोरेस वगैरह के लिए भी कोई नहीं देगा, लेट्स से because हाइपोथेटिकली लेवेंडोस्की को भी वो लोग बेचेंगे, hmm, हाइपोथेटिकली हम्म इवन लेवेंडोस्की के लिए कोई 30-40 मिलियन नहीं देगा, सो that's true। मेम्फिस के लिए तो नहीं ही देगा, भूल जाओ, मेम्फिस तो मेम्फिस कॉन्ट्रैक्ट 15, खत्म हो रहा है हाँ, उसका तो कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो खत्म रहा ही है हो रहा है, हाँ, हम्म, वही, एंड दे हम्म आर नॉट ऑफरिंग हिम एन एक्सटेंशन, सो नहीं, yeah अगर वो होता तो भी ही इज अ 15-20 मिल प्लेयर, नॉट yeah 30-40, so they will have to maybe that's sell why I like one said or two players, that's why I said Frankie De Jong option may be हाँ, explored that's why हाँ, maybe I understand that he wants to stay in Barcelona and maybe Barca also wants to keep him but worst come worst scenario वो उनका main ये है I'm not sure what will be the market worth. Will it be 75 million same या फिर कम रहेगा तो पता नहीं इसके बारे में. But I think you know it's someone to watch out. Barcelona are trying to generate more and more funds from that yeah different avenues. उनके कैंप न्यू में अलग अलग मैचेस रख रहे हैं तो देखते हैं क्या होता है. hmm. Also depends like how much the money they get na after like winning La Liga। हम्म, हम्म, hmm. So for that they also have to win La Liga then, yeah they're already on first na, first पे they are already। हाँ, but let's see if they actually win it, पता और नहीं ना, दो सीजन से तो they are not one ना, दो सीजन से they हाँ, are not one। let's see। hmm. So okay, just a moment, ठीक है, तो ये तो हो गया, so Barca is also financially fucked as we have been speaking, so is Juventus, so बचा कौन, I mean Madrid are Barcelona is good, not getting relegated। हाँ, but Barcelona is not getting relegated, yes, good for them, Hmm. Yeah so Ajay, so see, as I'm sitting here watching Hulk, the trailer of Hulk, She-Hulk Attorney at Law, I just thought of an idea. Okay, how would like what is your idea of for the two of you? Okay, what is your idea of an expanded Club World Cup? What do you think that would look like? it's, generating more money, I mean, that's what I Arey, feel। I understand that, but what do you think if it happened? What do you think would it would look like? Yeah, more fatigue, more injuries will Arey, be I'm not. happening। Divya, you answer the question. What do Yeah you yeah think it would look like? I don't know, man. This is really I don't like the idea of that expanded World Cup, and I think Club World Cup. Club World Cup. Yeah, that's what I'm. So I'm not sure because ये फॉर्मेट कब एक्सप्लोर नहीं हुआ है या हमारे पास फीफा क्लब वर्ल्ड कप हुआ है बट ये जो इतना नंबर ऑफ टीम्स कभी नहीं थे yeah Hmm. तो डिपेंड्स ऑन हाउ दे यू नो
present date and what time of the season it's been explored. कभी कौन से part of season में खेलते हैं? Is it played during our season or is it played during the break? Again, not sure how comfortable it will be for players because players need that two month ka gap break, and then you are Hmm. taking away that from them and playing in that span, or maybe you play during the December January time, when Champions League is not there, only other games are not there. Hold on, Hmm. I So, mean, it's a just very give me stupid one thing, minute. but I need to hmm? change my so, headset. Okay. So the reason I was asking you these questions is because I was mm, just trying to figure out, like, so basically what FIFA is looking at is, and the main reason why UEFA and European clubs are, complaining about it is because the question, I mean, the plan that FIFA has is that they will take the last four champions from each of the continents and throw in some other teams from Europe. ठीक है, so mm, like from each continent जो last four जो champions है वो, या फिर either those or either the semi-finalists. ठीक है, तो ऐसा वो लोग, that's how they will shape up the entire tournament. और उसके बाद they will have the same, so they will not have like home and away, मतलब एक mm. पर्टिकुलर लोकेशन में होगा मैचेस, जैसे अभी कतार वर्ल्ड कप हो रहा है वैसे टाइप के एक लोकेशन में होगा. सो वही ये चार ग्रुप रहेंगे या 8 ग्रुप्स, दे विल हैव 8 ग्रुप्स एंड राउंड रॉबिन एंड देन नॉकआउट, जो फॉर्मेट है वही. सो By the माय way, हाँ, there's सॉरी. Liverpool in advanced position to for Cody Gakpo. अच्छा, let's see how that works out. So my point was ke when Hmm. I asked like what do you think it would look like, is के क्या मतलब कैसे कौन कौन से टीम्स रहेंगे, like let's say if it hypothetically happens, what type So of it will teams be. do you expect to see? I mean, are you talking in terms of like continent wise? Like, कैसे पूछ रहे हो? What are you? हाँ, What's your continent wise, question? like overall No, 32 it has teams to है be ना, so Asia. Asia. I'm not saying Asia. Like Europe, Africa, and possibly South America. hmm, Yeah, ये okay, रहेंगे no ज़्यादा से Asian ज़्यादा. teams. I don't think Asian teams को उतना वो देंगे preference. Because Asian teams have recently been competing very well, like club जो current Yeah. club world cup है उसमें Asian teams have actually done very well against African and even South American teams, they have been competing Mm-hmm. with them. Hmm. So Yeah, but वो first club, preference इसलिए देंगे because they have that historical presence. Possibly African teams will get that chance because maybe they want to like include them अभी in hmm, this recent ये हो सकता है. हाँ, तो Possibly ये उसमें भी कर देखो, सकते हैं like ये हाँ क्या, Asian teams को एक criteria दे देंगे like to have a like a playoff sort of a thing. नहीं, सो 32 टीम्स है ना, सो प्लेऑफ वगैरह का क्यों No, no, करेंगे no. अभी नहीं, नहीं, नहीं. उससे 32 उससे टीम्स है. उससे भी पहले भी कर सकते हो ना. If they have won that Asian Champions League or something, तो हाँ, उसके बीच में they can do something like what do you call it, अभी ये कर चैंपियंस लीग सकते हैं है ना. तो चैंपियंस लीग है तो जो उसके विनर्स है उसको तो ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन है. सो आई थिंक हाँ. व्हाट विल हैपन इज कि चैंपियंस लीग विनर्स एंड द फोर सेमीफाइनलिस्ट्स एंड द अदर थ्री सेमीफाइनलिस्ट्स बेसिकली. ठीक है, दैट इज द थिंग दैट आई हैड हर्ड. तो फोर ऑफ देम फ्रॉम एशिया, फोर ऑफ देम फ्रॉम यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका. ठीक हम्म. है, एंड बाद में ओशियाना भी है, सो दे विल मे बी टेक अ हम्म. फ्यू टीम्स फ्रॉम देम एज वेल. ठीक है, so that makes it like about 20 teams. They still have like 12 teams, and those 12 teams they are like likely to choose from Europe. ऐसा कुछ हम्म. है. ठीक है, तो all those scenes are there. तो पहले सीजन में they will invite the remainder of the teams. एक टीम तो ये भी रहेगा जो होस्ट नेशन रहेगा, उसके टीम्स भी रहेंगे. तो आई थिंक शायद उसके भी 4 टीम्स वो लोग ले ले. हम्म. सो हाँ, सो वैसा फंडा. सो दैट इज व्हाट आई एम अवेयर ऑफ एज ऑफ नाउ. सो 20, Let's see. हाँ, but the thing is के if it does expand, मतलब देखो अभी उसमें ज्यादा इंटरेस्ट तो है नहीं, as even Divya said. So it will most, if it does happen, it will not happen in December like it's currently happening. जून जुलाई में होगा, जो वर्ल्ड कप का स्लॉट है तभी. और उसमें
उसमें भी सीन ऐसा होगा दैट क्या बोलते हैं ये I mean if it works out correctly then it will be beneficial for all the clubs, right? मतलब Hmm. we will see teams like Boca Juniors play every weekend, River Plate Hmm. रहेगा, Santos वगैरह, so those teams will be someone that the someone who might benefit, teams like them will benefit, or maybe अगर एशिया के कोई मतलब एशिया में ऐसा कोई बड़ा टीम तो नहीं है जो ग्लोबली रिनाउंड है, बट लेट्स से फॉर एग्जांपल जो जे लीग के टीम्स है विच आर वेल नोन, राइट? एफसी टोक्यो है, और कौन सा है वहाँ का टीम, उरावा रेड्स वगैरह, सो वहाँ के टीम्स को बेनिफिट्स होगा, साउथ कोरियन टीम्स भी है थोड़े बहुत विच आर फेमस, सो उन लोग को वो एक्सपोजर थोड़ा ज़्यादा रेगुलरली मिलेगा, so eventually that will benefit them, so maybe that is what can happen. David on Steam का this Hmm. what do you call tweet. Liverpool is closing to reach an agreement with PSV Eindhoven to sign Cody Gakpo. 37 million. Moving fast if all goes plan for the 23-year-old. Oh, acha. So if he goes to Liverpool, that'll be nice for Liverpool. It'll be a good signing. नहीं but मेरे को पता है क्यों लग रहा है because Liverpool currently needs a striker and Hmm. plus they have like the Champions League games coming up against Real. हाँ, So अच्छा that हाँ, will but be a I'm not yeah that sure. will be I'm not hmm. sure if he'll be able to play in the Champions League because I think He can play. he's No, cup there's tied no with cup PSV, tied. right? No, it doesn't matter. He can change the team and play for another team. अच्छा वो कप हाँ, टाइड रूल्स वाला निकाल दिया ना. अच्छा हाँ, नहीं आई थिंक अगर पीएसवी स्टिल रहता तो शायद वो कप टाइड होता, लाइक इफ पीएसवी वर नॉट, नहीं इफ नहीं नहीं. पीएसवी वर इसको नॉट एलिमिनेट। इसको किया था ना. हाँ, क्या नाम है इसका. लास्ट हालैंड प्लेयर का, प्रॉब्ली दैट. हाँ. हालैंड का ही हालैंड हुआ हाँ. था, हालैंड का। हाँ, हालैंड सो जो प्ले हालैंड फॉर का हुआ डॉर्टमंड ना. था, हाँ ही प्लेड ही फॉर प्ले फॉर डॉर्टमंड डॉर्टमंड. बट उसका जो टीम था सैल्जबर्ग तभी एलिमिनेट हो गया था, दैट इज या व्हाई ही वाज अलाउड टू प्ले फॉर डॉर्टमंड, अदरवाइज ही वोंट हैव बीन अलाउड टू प्ले। सो अगर पीएसवी रहता अभी नॉकआउट में तो इवन गैक्पो वुड हैव नॉट या बीन एबल टू प्ले फॉर हिज न्यू टीम, या वेदर यूनाइटेड और लिवरपूल। बाय द वे सो दिव्या भाई, लिवरपूल टू क्लोजिंग agreement with Cody Gakpo. कांट हियर Mute यू हो दिव्या। दिव्या भाई. दिव्या mute हो. Yeah, I saw that, but I don't think it's a reliable source. So times है, तो नहीं because अभी डेविड थोड़ी देर ऑनस्टीन का पे है. डेविड ऑनस्टीन का है. डेविड ऑनस्टीन का, hold on, let me check. हम्म. लिवरपूल एंड एडवांस टॉक बाय, नहीं, पॉल जॉयस है, डेविड ऑनस्टीन से कोट किया है. Official bid has been submitted. 37 Manchester United have agreed. So uh, the scene is that Liverpool is talking to Eindhoven third हम्म. fees के बारे में 37 million plus add-ons, but the player himself is keen on United. So already हम्म. they have agreed terms. They had agreed terms back in the summer, but I think Liverpool and United and PSV have to agree on a deal, and Liverpool are moving very fast. So Liverpool को bid तो submit कर दिया. I'm not sure if PSV are going to accept it. Once PSV accept it, then they have to convince Cody Gakpo. So it's going to be an interesting one. If United Yeah. end up losing this player to Liverpool, it's going to be very very difficult for United to sign another player of that caliber. ये बहुत, और ये player बहुत अच्छा player है, and Yeah. Liverpool need a player of that caliber as well. You know why? So Why mm, actually? You know why I think Liverpool is going for this player right now, because mm, they are already like in a position where where Luis Diaz is already off for like good three mm, four months, and I think correct. by getting Cody Gakpo right now would make sense. And plus, I think Mm, PSV is playing in what do you call mm, Europa League, na? So that mm, will mm, mm. be a boost for him to sign for a Champions League club and play for a Champions League Correct, team. correct, exactly. Mm. And I mean, totally depends on Cody Gakpo whether he wants to sign for Liverpool or whether he wants to sign for Yeah, United. for United, correct. So this will be an Mm. interesting thing. Let's see. Yeah, this is an interesting. United have messed it up. They could have closed the deal. पहले ही करते थे close. ना, ये बहुत ही Hmm. गंदा आदत है मैनचेस्टर यूनाइटेड का, एंड तक उसको ड्रैग करते रहना चीजों को. लिवरपूल हैज Yeah. अ वेरी गुड हैबिट.
They want to sign a player, they will move fast. फटाफट 48 hours में player sign. I remember Fabinho deal. Fabinho वो लोग ने मतलब मैं rumors सुना सुबह को, अगले दिन तो Fabinho was at Anfield doing the medical. That's how quick Liverpool move for the player. No waste Hmm. of time. अगर I remember the Luis Diaz deal as well. They wanted to do the Hmm. Luis Diaz deal in summer, but then they came to know that some clubs were moving in for him. फटाफट Hmm. साइन कर दिया 2 दिन में. They managed to sign Luis Diaz. That's how quick Liverpool are with the negotiations and everything. And David Ornstein has said if things move in the right direction, we may see Cody Gakpo travel to from Netherlands to Liverpool for medical. Again, this is going to be very difficult for United. And I think Arsenal have scored here. Yes, Hmm. Arsenal They have scored have. a goal. Yes, they Oh, have scored a goal. okay. I think it's Bukayo Saka or Odegaard. I'm not sure. I think it's Odegaard. One more thing Okay, for so Cody Gakpo. One more hmm, thing Hmm. for Cody Gakpo will be like like playing with Van Dijk. Hmm. So yeah, okay, that may Saka scored. Saka scored. be Yes. what Yeah. do you call for him to like join Liverpool. Hmm. Well, I mean, Virgil van Dijk playing with him is fine, but I mean, he has been in talks with United. That is where United have the edge here. Now, Hmm. playing with Virgil van Dijk is like, I mean, he's not Ronaldo, right? He's No, Virgil van obviously Dijk. he's He's not a Ronaldo. defender. But he is like teammate, na? National That's teammate. what. So even United have some Dutch players, right? There's I only mean, one. in this, how Eric who is Ten They that have a one? Dutch manager. They have a They have a Dutch Dutch manager. There's manager. only yeah. Yeah, but no, but I think they have a Dutch player too. Van de Beek. Van de Beek. No, Yeah, they have two Dutch players. Van de Beek is there and Tyrell Malacia. Two yeah. Dutch players. Malasia Hmm. is also there. Yeah, so that is not exactly a reason, na. And I think if I'm not wrong, we signed Malasia from whom? No, it was not PSV. It was another club. Okay. No, it's so different. Yeah, it was another club. Anyway, the point being that I don't think that Virgil van Dijk at this point commands that much of a, becomes that much of an attraction for someone like Akpo to sign, as a signing. Like Yeah. he is a good defender, but I mean, huh, yeah, no, I'm saying he must have influenced him to ask him to join Liverpool. वो मैं बोल रहा हूँ. he हाँ वो हो can, but सकता है because हाँ वो because हो सकता है वर्ल्ड yeah. कप में उसने बोला था कोडी गैक्पो should not move to United. Right now, United हाँ. are not the club that's what I have heard the quote from Virgil van Dijk. Yeah. So again, Yeah, Yeah. yeah. maybe and Liverpool need a forward. They don't have a Yeah. forward. They need Hmm. Sadio Mane's replacement. They haven't signed. Jota is out. So is Luis Diaz. For 2 months. So they will need a player. And I think if United don't act fast, they will end up losing this player. Yeah. But I think मेरे को लग रहा है अभी इसके बाद ना I think Nunez will be kicked off. नहीं यार भाई पागल है क्या? 6 महीने ही हुआ है और आज ही देख निकाल इफ यू देंगे यार. रीड द if you read the tweets नहीं है पागल है क्या? He's contributed so much in the team and 6 महीने में तो तुम 100 मिलियन का प्लेयर लेके 6 महीने में तो निकाल नहीं सकते यार. एक सीजन में भी नहीं. यू हैव टू गिव एटलीस्ट 2 सीजन्स एंड इतना बुरा भी नहीं कर रहा है वो. हाँ ठीक है गोल्स नहीं जा रहे हैं वो बट ही इज गेटिंग इन द राइट पोजिशंस. गोल स्कोरिंग पोजिशंस क्रिएट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहा है. दैट सेकंड थर्ड गोल उसने ही क्रिएट किया था ना क्रॉस. तो आई डोंट थिंक दे विल लेट हिम गो. मे बी फर्मिनियो चला जाएगा. मे बी फर्मिनियो विल गो because 31 है Firmino, so there's a likely chance that he will go. But I don't think Darwin Núñez. Darwin Núñez definitely not because मतलब if इतना you बड़ा इन्वेस्टमेंट है तो हाँ द अमाउंट दैट दे और हैव छोटा इन्वेस्टेड है इन वो छोटा है हाँ वो बहुत यंग है वो. बड़ा दिखता एंड है अभी अपने को बट हाँ है एंड छोटा अभी क्लॉप ने अपने इंटरव्यू में बोला भी. इफ यू रीड क्लॉप्स इंटरव्यू आफ्टर द गेम पोस्ट गेम he said that he will Darwin Núñez contribute a lot. Goals will come. He's not bothered about goals because the way he's playing is contributing to the team, and eventually he's confident that goals will come. So yeah, I think Darwin Núñez will stay at Liverpool at least for another season. उसके बाद maybe, but right now I think his position is not. Firmino may lend. Liverpool may sell Firmino in the summer once Diaz and
Jota are fit to play if they end up buying Cody Gakpo. But yeah, interesting one. Liverpool for Cody Gakpo. I think it's the right club for him if you look at his playing style. Mm, Mm. but yeah, ठीक है देखते हैं अभी क्या है. I definitely wanted him to come to United, but मुझे पता है United कैसा है. They don't act. United are slow. Yeah, they They don't have. keep on dragging. पता नहीं क्या हाँ ये क्या हाथ से नहीं किस निकल रहा है. तरह हाँ क्या किस क्या? तरह का नशा है. पता नहीं क्या कैसा नशा है ये इनका. इनको ड्रैग करने में कोई ट्रिप चढ़ता है लगता है इनको. They keep on हम्म, every deal they do, every They deal they are do. fans of drag, I guess. Yeah. हम्म, और लिवरपूल का एग्जैक्टली ऑपोजिट है. They want a player, they'll move for him, फटाफट sign, end of the story. They will not drag it. I remember the Timo Werner story. Liverpool wanted to sign him, but it didn't work out, so they just walked away from the deal, and he went to yeah. Chelsea. That's Yeah. exactly you should be doing. You either go out and sign the player or walk away from the deal. Why are you keep Uh, dragging it? Yeah, उस जरूरत मामले नहीं तो है. मैं yeah. I Yeah. admire Klopp, you know, like 10 बार he thought about it, and then Hmm. Chelsea got it from what do you call Yeah. what do you call They And got if they like put you in a bid. look at, and like I said earlier, if you look at Luis Diaz deal also, Luis Diaz, Liverpool sign करने वाला था summer में, but now then they knew that goal, Arsenal score the second one. Oh, क्या गोल मारा मार्टिनेली ने. क्या टाइट क्या एंगल था. बात है. फैंटास्टिक अच्छा गोल. मेरे इसमें थ्रो इन चालू है, like at my end. So Martin ठीक है. Ali. Okay, yeah. Now Arsenal have the ball. Saka has won the ball. He is looking for. Okay, he has passed it around. Um okay, number 11. Oh, Martinelli. Yeah, good goal. Very good finish. And yeah, Arsenal. I mean, the way they are playing, they. This is not by fluke that they are at the top. Huh? They are नहीं playing नहीं, very of well. course not, of course not. Hmm. फ्लूक तो कोई हिसाब से नहीं है भाई. हाँ, They're dominating of the opposition. जिस हाँ, तरह से वो खेल रहे हैं वो लोग, exactly. they're on Yeah, another level. exactly. Absolutely. हाँ. So definitely not a So fluke. the kind of names that they have, they don't exactly inspire confidence, right? Like if Correct, you compare the Arsenal lineup to the City lineup, मतलब ये lineup कुछ भी नहीं है. बच्चे हैं correct. mostly सब, but they are still doing so well. Yeah. So good, So now good we're on into the them. game. Arsenal take the lead, and let's see how West Ham react to this. Hmm. Arsene Wenger is smiling. He's very happy. So, Divya, like I was just asking Agreem, and I had asked you as well, Okay. like before you left, that what do you think the club, Hmm. the expanded FIFA Club World Cup would look like? And Yeah, I you asked me some am not. questions. Yeah, so you Yeah. did. Let me answer the question that you put forward. Uh, Sure. it Please go is ahead. Yeah. mostly, it is most likely to happen like in, you know, in June or July. 2025. Like So, yeah, so it will happen like in June or July, like, and it will be happening once in 4 years. That's the plan. It will not be okay. an annual competition. Um, and the plan is like either take the past the last four champions or the four semi-finalists from the last season of each continent. So Okay. yeah, probably they will take like more, maybe some extra teams from Europe and South America, a little less from Africa and Asia, and one or two teams from the host nation in whichever country it is being held, and the remaining teams from Oceania, the Australia, the continent where like the OFC Confederation. Australia are Yeah. now in Asia, Oceana. but Oceana. Oceania, Correct. Yeah. yeah, the Oceania Confederation. So Yeah. But it is that is going to what be it a would look like. one-side tournament. I think the European teams will always dominate this. We. Yeah, that's the thing. They will initially dominate it, no doubt. But Hmm. if the long term view that, I mean, although as I said, I don't agree, I don't think FIFA are saints themselves, but if the long term view if you do take a long term view, then if teams like the Asian and African teams and even South American ones regularly keep getting the exposure, right, to face European teams and अरे put लेकिन 4 साल हाँ में एक बार है, हर साल थोड़ी है. तो हाँ, but फिर कितना भी एक्सपोजर मिलेगा फिर भी.
हाँ वो भी है, बट दैट्स द, अभी देखते हैं ना वो इनिशियली जो उसका करेंगे, लाइक इनिशियल जितना एक बार वो लोग मतलब वो कंपटीशन रखेंगे, उसके बाद से धीरे धीरे होगा. द थिंग इज यूरोपियन टीम्स डोमिनेट करेगी, दैट इज अंडरस्टूड, दैट इज हम्म एक्सपेक्टेड. बट अपार्ट फ्रॉम यूरोपियन टीम्स ना, बाकी सारे, एज मैंने तेरे को जो बार बार पॉइंट आउट किया, दैट एशियन टीम्स, अफ्रीकन टीम्स और साउथ अमेरिकन, दे आर ऑल नाउ वेरी क्लोज. साउथ हम्म अमेरिकन टीम्स को एशियन और अफ्रीकन टीम्स टक्कर देती है एंड बीट भी करती है, राइट. सो अगर वहां तक हो गया, हम्म यू नो, मे बी द नेक्स्ट स्टेप फॉर देम is to, play this. And the, I mean, what intrigues me is कि actually speaking, यूरोपियन क्लब्स का जितना हिस्ट्री है उतना साउथ अमेरिकन क्लब्स का है. सो इफ दे प्ले हम्म इट राइट, हम्म साउथ अमेरिकन टीम्स को बहुत एडवांटेज है, बिकॉज अगर जैसे अपने इधर आयाक्स, रियल मैड्रिड, बोका, बारसा हम्म वगैरह है, साउथ अमेरिका में सैंटोस है, साओ पाउलो है. सैंटोस इज द क्लब पहले प्लेड फॉर बोका जूनियर्स, द क्लब करेक्ट मैराडोना करेक्ट प्लेड फॉर Rosario Central, the club where Messi had initially played for. So ऐसे teams है वहाँ पे, रिवर प्लेट है, सर्जियो एग्वेरो का टीम. हम्म सो ऐसे टीम्स है वहाँ पे, राइट. सो वो भी एक एस्पेक्ट है ना जो फीफा एक्सप्लोर कर रहा है. सो कंसिडरिंग दैट, ठीक है, मतलब लेट्स से उन लोग को भी ज्यादा पैसा मिलने लगा, एंड लेट्स से वो धीरे धीरे शायद एनुअली हो जाए, आई डोंट नो. बट हम्म अगर ये वाला, इफ इट सक्सीड्स, इफ द इनिशियल वन सक्सीड्स, राइट, so you think it is हम्म possible कि वो फ्यूचर में ऐसा होगा, it has any future? Because करंट वाला फॉर्मेट ऑब्वियसली बहुत छोटा हम्म मोटा है, राइट. जो करंट फॉर्मेट है हम्म वो तो बकवास ही है. नहीं, अगर ये 2 साल में या 1 साल में होता तो मैं सोच सकता था रेगुलर हाँ प्लेइंग तो में. बट आई वही, थिंक वंस इन 4 years आई डोंट थिंक we will it will have benefit. it will benefit इतना सब. There will be always a European winner, हम्म. and state owned club especially ज्यादा हाँ. रहेंगे. तो यार I हाँ don't वो think है. it is going to benefit anyone. Let's see. अच्छा. I'll give it a chance, but chance to definitely दूंगा. I want to see how the first one pans out to be. But I am not, to be honest, I'm not a big fan of this. But हम्म. yeah, again, ओके. first World Cup तो definitely देखेंगे कैसा होगा and हाँ. बट हैव यू, how it would लाइक, be. आई मीन, आई एम श्योर तूने देखा तो होगा, लाइक ये जो करंट वाला जो हाँ, of फीफा course, क्लब current वर्ल्ड वाला कप है, तो जो देखा है. करंट फॉर्मेट है, हाँ, इट्स वेरी, correct. सब मतलब, knockout है सब. हाँ, हाँ, सो teams बेसिकली ही बहुत यही कम थी होती ना. है. हाँ, टीम्स बहुत कम Only the होती है एंड, champions, only the हाँ, champions. या, एंड उसका यही है कि आउटसाइड साउथ अमेरिका वो ज्यादा ये इंटरेस्ट नहीं जनरेट कर Hmm. पाता. Correct, सो correct, exactly. वही चीज है. सो दी, एंड इवन फॉर यूरोपियन क्लब्स जो लोग सुपर लीग वगैरह चाह रहे हैं, द नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप, अगर गेम को Hmm. ग्लोबलाइज करना है, इवन इफ दीज क्लब्स वांट टू बी ग्लोबलाइज्ड, the next logical Hmm. step is to be expand beyond. अभी Correct. अगर मैन यूनाइटेड, लिवरपूल फॉर एग्जांपल, या रियल मैड्रिड, बारसा, इफ दे प्ले एवरी, मतलब हर बार वो लोग न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे तो वो मजा नहीं रहेगा मैच में, राइट. नहीं इट जस्ट रहेगा, of बिकम्स अ course. स्पेक्टिकल, उसमें कुछ लॉजिक नहीं है. सो Hmm. इफ दे एक्चुअली, लेट्स से इफ दे आर प्लेइंग इन समवेयर लाइक मोरक्को, राइट, Hmm. मोरक्को Hmm. में, if okay, they might end up eventually playing each other, but before that they have played a Moroccan side, or played some other sides. It makes Hmm. sense, right, logically कि हाँ भाई, Correct, correct. then they are Yes, meeting. yes. तो ठीक है, फिर बाद में सब सारे सेमीफाइनल्स वगैरह यूरोपियन ही हो, फिर Hmm. ठीक है, that means that they are dominating, but वैसे टाइप का. So that is the angle I'm looking at. And Gianni Infantino ने, he Hmm. has said that, he has already said that, उसने प्रपोज तो कर दिया यूरोपियन क्लब्स को, दे आर करंटली नॉट एक्सेप्टिंग इट. बट द रीजन, दिस मुझे, द रीजन आई थिंक इट विल हैपन, और क्लब्स ने यही बोला, द सेम थिंग विच यू सेड, के प्लेयर्स का फिटिंग Hmm. वगैरह देखना है. सो मे बी दे विल रीस्ट्रक्चर Hmm. द एंटायर सीजन, के क्या करेंगे पता नहीं. बट Hmm. उसमें, एज पर व्हाट द न्यूज इज, के क्लब वर्ल्ड कप विल बी वेरी लुक्रेटिव, मतलब पैसा बहुत Hmm. होगा. सो Hmm. रियल मैड्रिड और बारसा By the जैसे क्लब way, तो, हाँ, yeah. आर्सेनल Sorry to स्कोर. interrupt you. By the way, no, Arsenal, no. This There is this PSV. There's a journalist very close to PSV Eindhoven. He हम्म. says that Cody Gakpo is almost a Liverpool player. Transferred ओए. to
from PSP to Lille almost completed. Only few details left. Oh, freak! What an insult for United. Too bad. Yeah, I know. Mm. Very poor, very bad. I think United have opted out from the deal due to financials because they don't have the money. They can't Oh, spend. I think we'll United. we will get a मुझे ऐसा लग रहा है. Deep down I feel that Ten Hag wanted this player. That is for sure. Mm. 110% sure Ten Hag wants the player. But Ah. I think there's a money bit involved. There's a financial fair play का भी कुछ तो है United का. They can't invest that much money in January. Mm. So because of that, they gave up, and then Liverpool have jumped in. That's what my gut feeling is. And United are only looking to sign a loan player like Igalo one. तो Igalo जैसा कोई Oh, player लोन पे साइन करना शुरू कर रहे हैं. oh gosh. Let me see. Let me see. मुझे क्या मिलता. Oh हाँ. Gakpo looks set. He looks The set second, already. that's a second player who's chosen Liverpool over United. First was Darwin Nunes. The second is Gakpo. मेरे को पता है यहाँ पे क्या लग रहा है. आई थिंक the main what Hmm. how should I say this, the main BS over here is what do you call Van Hal. नहीं नहीं मुझे नहीं. There's nothing to do with. It's a goal. It's another goal for Arsenal. Oh, It's 3-1. It's Eddie Nketiah. अच्छा Nketiah has scored. Okay. Hmm. Yeah. So 3-1. मेरे इसमें Odegaard M-Shape. is just about to pass. M-Shape का M's scoreline. हाँ. M-Shape predicted 3-1. Yeah. Yeah. हम्म. तो उसका scoreline आ गया है. वाह. चलो. मेरे को लग रहा है Van Hal must have told them to not join United. नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं. I don't think so. नहीं. This is United not acting fast and the player wanting to make a move in January. And yeah. वैसे तो उस PSV का कोच वैन निस्टल रहा है. वैन निस्टल could have told him join United instead of Liverpool. Hmm. So I think हाँ वही. it's a players. I think it's United have backed off from the deal due to the financials. My gut feeling is, or the player didn't want to wait that long because summer में भी उसने wait किया and then it never happened. Doesn't want to हम्म. waste another transfer window. So maybe that's why he's chosen Liverpool हम्म. because देखो क्या होता है ना कि जब सामने वाला मैनेजर इंटरेस्ट दिखाए तुमको क्लब भी इंटरेस्ट दिखाए they want we convince him that yeah we want you right now we want you to part of this. Yeah. प्लेयर भी कन्विंस यूनाइटेड की तरफ से ऐसा कोई मोटिवेशन नहीं था. दे वांट द प्लेयर बट दे नॉट श्योर और फाइनेंस उनका उनका नॉट श्योर में ही उनके हाथ से कितने सारे प्लेयर गए वो द पास्ट. अगर पास्ट में देखे कितने सारे प्लेयर मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास से गए बिकॉज दे वर नॉट श्योर अबाउट द डील. Hmm. Second player in 6 months after Darwin Nunes now Cody Gakpo. Oh, very मतलब typical but ठीक है यार. I guess Hmm. थोड़े ही दिन बचे हैं ये regime के. Hopefully अच्छे दिन आएंगे. हम्म. और क्या बोले. अच्छे दिन तो मोदी जी भी दिखा रहे थे. अच्छे दिन तो मतलब ठीक है ना. हम्म. इसके कंपैरिजन में तो मतलब ये ग्लेजर्स का जो बात है ग्लेजर्स के कंपैरिजन में तो फिलहाल कुछ भी अच्छे दिन ही होंगे. Feeling actually Chelsea have gutted, joined the race for Joao Felix now. मैं तो बोला ना पहले ही 6 लोन वो मोस्टली चेल्सी साइन करेगी उसको. आई थॉट कल तक मुझे आर्सेनल फेवरेट्स लग रहे थे बट अभी इफ चेल्सी हैव साइंड देम बिकॉज़ चेल्सी डेस्परेटली नीड अ स्ट्राइकर एंड चेल्सी विल थ्रो द मनी. एटलेटिको मैड्रिड वांट 8 मिलियन लोन फी एंड चेल्सी विल गिव. चेल्सी के लिए 8 मिलियन कुछ भी नहीं है. They Yeah. will give that 8 million loan fee and then there will be a option to buy or obligation to buy in summer. That's how it depends on how his agent Jorge Mendes structures the deal. But yeah,
but yeah, वापस ये fans, United fans will be gutted, they'll be angry. Cody Gakpo Mm. ka. Yeah, I, exactly. I, I So can it's see, I can already see all the, rage and anger in Twitter. Hmm. mm. No, that's understandable, but ठीक है यार अभी Hmm. मतलब Hmm. it's not even worth wasting time anymore. मतलब पता ही है, you are used to it. There's, So and now, Prashant, any player that you recollect of United can sign in the January transfer window, any striker, any attacker, you know. gosh. Jao, I'm not going to say, I'm not going to talk about Jao Felix because that's Hmm. definitely between Arsenal and Chelsea. We are not going to sign him हाँ, because again another yeah. 8 million loan fee plus option to buy. I don't think United will go for that deal. So who do you think if we miss out on Gakpo and Felix are the options? Yeah, so this answer is linked to your question about whom I would want from Juventus. I told that to agree that we can maybe go for Dusan Vlahovic. I mean, But like then as Juventus signed him for 60 million. I don't think they will ask for anything less than 50 million. And no, if if we can't pay Juventus are 37 million desperate, for Gak, hmm, but if Juventus are desperate to offload a player, hmm, we hmm, might get a cut price deal if Juventus are getting relegated. But then again, that does not necessarily mean that United will get him for cheap because correct. agar if Vlahovic does become available, there will be other A lot teams of also who clubs, would be other interested, right? clubs as well. Exactly, huh? Exactly, So that's not going to be a exactly. cheap deal even in that aspect. But my Hmm, point being that if my answer is just that you, both your questions, who I would hmm. want from Juventus. Okay, one of the answers was Vlahovic, the other was this guy. Oh gosh, I forgot his name. Anyway, one was Vlahovic, and the other question Chelsea, that you asked, hmm, no, no, not Chiesa or Kessia, no. The other question that you asked, that who else can you think of? So at this point, his name is coming to my mind, and then there is this Napoli guy, the one who was linked with United. Even Osimhen, Victor Osimhen. Victor Osimhen, yeah, Victor Osimhen, That's 100 maybe million. him, 100 million, 100 yeah. million. But they 100 are all million. And expensive. I'm not saying that they're they all are cheap. expensive. I'm just saying Yeah, they yeah. are all expensive. Hmm. I think, you know what I think? You know what will happen? What Here's will happen? my little prediction. Manchester United will sign Memphis Depay on 6 month deal, and then they will end up signing. Then they will go for Victor Osimhen in summer. Hmm. That's what I feel. Possible. Because Yeah, possible. अभी तो makeshift signing ही करेंगे. But I think this window is all about makeshift loan signings like Igalo type signings. So Memphis Depay, maybe Barcelona don't want him. I'm not sure. Uh, because I read somewhere that Barcelona want to let him go. Offload him. So yeah, offered करना है. So 6 months deal sign करेंगे United and then maybe then they will sign Vlahovic or Victor Osimhen in summer. So yeah, but yes, Hmm. it's very poor from United. Letting their top target go to a rival club. Let's see, man. Let's see. Very weird situation. But I mean, let's just hope that at least whoever they sign, it's not another Odion Igalo. Like that has been like it has been like the Hmm. uh, it's been like like symbolic of the Glazers signing patterns, right? Falcao was one of the Hmm. first. Falcao tha. Falcao के लिए we were Correct. excited. हाँ? We were Correct. excited But about it didn't Falcao के work out. Falcao आया Hmm. but didn't work out. And उसके बाद Ibra was also basically a similar signing. It's just that we were lucky that he was available for free. ठीक है उसके बाद Hmm. में Correct. Lukaku को when they did eventually pay for someone it was Lukaku. So that was also not much of a hit. उसके बाद they signed who Lukaku के बाद फिर कौन सा स्ट्राइकर आया था अपना who was the other Igalo striker आया था. जिनका हाँ Igalo. इगालो आया था या इगालो आया so Yeah. मतलब We haven't had a proper number nine. Ronaldo also was not a number nine. So Lukaku was the हाँ last number nine we signed. Igalo was again a makeshift one.
Huh. To be honest, after Robin Van Persie, Manchester have not signed a successful number nine. They've not Yeah. got a top number nine. Lukaku was a hit and miss, so you can't say a successful number nine. You Hmm. know, we don't need to talk about Anthony Martial. How we all know how that's worked out. And Yeah. Ibrahimovic was again when he played really well, but then most of the time he was injured. His injury Yeah. records were not good. His So first yeah, season was good, the one where he won fantastic. the Europa League, but Yeah, after that he correct. was like mostly out. So yeah. Yeah. By the way, So guys, again, the mhm. the ideal for Cody Gakpo is moving fast, and if it all goes as per plan, the forward will travel for the medical as soon as possible. Yeah, Oh, correct. fake man. This is what Divya was talking about again. Look how fast Liverpool are with regards to their Yeah. signing. Ke bhai, they Yeah, got I think. involved, they got the Hmm. agreement done. Now they are just directly talking about the medical. और ये यूनाइटेड है Yeah. बेंचो ये कितने दिनों से बस साइनिंग रूमर्स रूमर्स यही चालू है उन लोग का. ये सारे दैट्स दी मिलके हमको ओनली. पागल बना रहे हैं एमसी के हाँ, बच्चे। ये एफसी ये बिक गवर्नमेंट. गई है। ये हाँ, ये यूनाइटेड बिकी बिक गई नहीं है। है. ये गवर्नमेंट ही है, मतलब बिकी हुई है, मतलब कुछ है ही नहीं, बच्चा ही नहीं है. मादर चौथ के बच्चे. दैट्स व्हाट शी सेज, राइट? सब मिलके But हमें बना रहे हैं. मैंने I've just seen like some glimpse of what do you call Cody Gakpo. Can someone brief me how good is he? He's very good. No, he is He's very very good. bad. He is Very, very bad. very Very direct. bad. He's No, he is very bad. Like very injury prone. Uh, keeps like has a very big ego. Doesn't really pass the ball much. Looks to take on all the players, and he's a very selfish player and dives a lot. Hmm. Yeah. Also prone to getting a lot of yellow cards. Yeah, because he dives a lot. So yeah, that's Cody Gakpo for you. मेरे को पता है क्या लग रहा है like one more thing that you know that must have made Cody Gakpo sign for Liverpool is Hmm. Wijnaldum. नहीं नहीं But ये Wijnaldum this is तो nothing है. to do. This is अरे nothing to do ये with कुछ players. ये क्या This उन is लोग की nothing to दोस्ती निकाल रहा है अग्री. क्या उन लोग की अरे दोस्ती नहीं this is निकाल रहे, not, क्या इसने बोला होगा नहीं उसको नहीं बोला होगा. नहीं नहीं अरे नहीं प्रीवियस क्लब है ना वाइनल्डम का पहले प्रीवियस पहले क्लब है ना वैनगाल अरे लिवरपूल। पहले लेकिन बोलता this is है. nothing to फर्स्ट यू सेड कि वैनगाल ने बोला, फिर बोला कि I no no ये this is वैन nothing डाइक to do बोला. with अरे हो सकता है this यार is आई nothing एम to do जस्ट गिविंग यू दैट हाँ, no पॉसिबिलिटी। no no देयर कैन बी no 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 पॉसिबिलिटी no आल्सो। no that's nothing to do with that I mean ऐसा तो नहीं है. वैसे तो मतलब पीएसवी आइंडहोवन का मैनेजर यूनाइटेड हाँ, का तो एक्स मैं वही प्लेयर बोल है रहा ना. हाँ, तो रू वही बोल वैन रहा ना, तो निस्टेलरॉय ऐसा तो नहीं हाँ हुआ कि वैन निस्टेलरॉय मतलब ऑल ऑफ अ सडन उसको हम्म, यूनाइटेड पे खुन्नस निकालने के लिए वो बोला कि नहीं व्हाट, नहीं यूनाइटेड को खेल के तो लिवरपूल जा. अरे नहीं बोला होगा. नहीं बोला so this होगा, is हम थोड़ी बोल सकते हैं. more to do with you know the club showing that they actually want the player when हाँ, एक्चुअली. when a club shows you या. that intent that they actually want you they value you that's when the player हाँ. builds in more confidence and decides that this is where he wants to go he wants to be a part of a certain project I think या, Man United एग्जैक्टली. haven't made a move Richard Arnold and John Muta are sitting nicely in Manchester enjoying अबे सो रही है, their अबे pina सो रहे हैं क्या coladas. ये लोग? लिटरली सो रहा है हाँ, यूनाइटेड। हाँ, This is लिटरली like a मैन. slap. This is a slap. हाँ, How दिस इज incompetent अ our दिस इज अ हार्ड स्लैप. sporting या. director and technical director are. I'm not sure even what is Darren Fletcher's role. I want to understand what is his role. What does he do at the club? Because when under Ralph Ragnick, लेट he was all ट्रांसफर लेट yeah. ट्रांसफर्स गो फ्रॉम हिज हैंड। No. During Ralph Ragnick's regime, he was there in that dressing room, in that, and he led as a technical director. He led all that, massacre happen. Players fighting among themselves, unrest in dressing room, players not respecting the manager. He let all that happen. So I think that's again another sackable offense. But we get away with that because we are friends and buddies. We are ex-players. We are mates with the people at the top. That's why we get away with it. Very एक्चुअली. sad situation. Very sad situation in Manchester United, and this is and it's going to create another outrage, and fans are not going to forget this. The way we let in इमेजिन Darwin Nunez signing case. दिस See, in Darwin Nunez case, I understand that Darwin Nunez's preference was to go to Liverpool. Now in Cody Gakpo's situation, Romano said day before या yesterday he wants to come to United.
he wants to play for Eric Ten Hag. So that was always there in his mind. Now all of a sudden it's changed in 2 days, which means United have backed off from the deal because they don't have money or they do want to take much more time to Yeah. consider the deal, and that's what has upset Cody Gakpo and his camp. Maybe they don't Hmm. feel that United actually want them. That is the only logical explanation to this because he was all for the last 1 month he was linked strongly to United and talks about getting the deal over the line. Suddenly one day Liverpool signs him, and he was never linked to Liverpool, and all of a sudden they are talking about a possibility of medical in next 48 hours. So that's how things have moved quickly. So Yeah, actually, it is actually very disappointing as a United fan. But ठीक है. See, I mean, I don't even want to waste my energy criticizing this anymore because it is something we are now just used to. So let's just hope that the club gets sold as soon as possible. But here's the thing: even Liverpool is up for sale. But उन लोग का system देख, they already have a hmm, good system of transfers. They identify, they go and get that person, not like United. hmm. So yeah, very Imagine bad. buying this. Imagine buying what do you call Cody Gakpo, and in the summer they get Bellingham. Yeah, it's possible. I mean, No, no, I'm saying Liverpool and मतलब Madrid are क्या double linked. swoop हो जाएगा ना for Liverpool. Hmm. Well, हाँ, Liverpool will buy a top number 8 midfielder. They will Yeah, get either Bellingham or the Argentine Enzo Fernandez. So that is for Enzo sure that Fernandez. they will end up buying either one of them. Yeah. I'm 90% is going to be Bellingham. I know that 90%. But हाँ, Bellingham तो लग ही रहा signing है. signing player of Kodak Akpos caliber for 37 million, stellar deal, stellar deal. Yeah. Which things something that United can't do. They pay, Anthony was worth 60 million. They ended up paying 90 million for him. That's how bad United are. horrible. अभी कौन सा प्लेयर बाकी है अभी यूनाइटेड? Because I think these guys will go for what you call João Felix na Chelsea. Yeah, Chelsea we go for João Felix, and then who else is left? And then we have strikers. If you talk about, we've got Jonathan David from Lille, and Gonçalo Ramos, Yeah, Benfica from striker. Benfica. Oh, yeah. But अभी तो मेरे को नहीं लग रहा Benfica will let Gonzalo Ramos to No, leave. no, in the So summer. I think they समर में will. ही रहेगा. I think मैं बोल रहा हूँ ना एक makeshift center forward side करेंगे. Maybe Memphis Depay or someone like Josh King जो Yeah, मैं ये बोल रहा था एमसी थोड़ी देर पहले. And then in summer go for a top number 9, which yeah. again it's not going to be easy. But yeah, I think it's high time they end up selling the club as early as possible. I can only pray this group that uh, helped the sale of Chelsea can quickly find United a new buyer Hmm. because this way mm, this is clubs. It's complete. I mean, it's not just about one transfer. I mean, overall we've seen that in the past. They have messed up so many Yeah. deals they have messed up. yeah. Every year I So think this they do is it. This last year it was Darwin Nunes. A year before that, who was it? I mean, we messed up another deal. I don't remember. I think it was for a midfielder. Who was it? I don't remember. Prior to that, it was uh, Thiago Alcantara yeah, under Solskjaer. And then You guys who was it? missed out on Fabinho also, na? Fabinho. Yes, yes. They just Fabinho kept was on. He was they scouted him, but they never acted for him. And Yeah. Liverpool bought him. Mourinho wanted I him, na? remember. I remember Fabinho ka deal. Liverpool got linked to him in the afternoon. Next evening, it was confirmed, and अगले दिन morning में he was in Liverpool doing the medical. That's how quick Liverpool were. Yeah. वो दोनों ट्रांसफर बहुत फटाफट किए थे when they got these guys, na? In fact, Fabinho in and fact, in Alisson. fact, Jose Mourinho even wanted Van Dijk, but Yeah. United never acted for him. Yeah. sad story, man. Like this is like so. It has been such a pattern, like with so many Hmm. players. Okay, bhai, it's now. I mean, I don't
as I said, I don't want to talk about it because I've spoken so much about it now. It's like just repeating the same thing over and over again. That's why I said let's just now, नहीं मेरे को let's लग रहा है just सबसे wait. ज्यादा प्रेशर इस पे आएगा टेन हैग पे. If he's not getting the Hmm. result, that will be piling up lot of pressure on Ten Hag. ठीक है ना अभी टेन हाग को सी लकीली फॉर टेन हाग by the time the season ends the club should be sold at least. The club should have new Yeah, owners. एंड yeah. टेन हाग ने ये तो खुद उसने पब्लिक में बोल भी दिया ना टेन हाग ने कि हाँ भाई मतलब मुझे लाइक आई एम एक्साइटेड दैट न्यू ओनर्स विल कम उसने बोला था सो Hmm. दैट्स अ गुड थिंग. Hmm. नहीं मैं ये एक्चुअली फीफा क्लब वर्ल्ड कप वाला जो था ना तो इट वाज इंटरेस्टिंग राइट. सो मैं जस्ट पढ़ रहा था. आई वाज जस्ट ट्राइंग टू सी के कुछ उस पर लेटेस्ट अपडेट है या नहीं है. तो लेटेस्ट अपडेट कुछ नया अपडेट तो नहीं है. वही है कि 32 टीम्स का है वर्ल्ड कप बट अपार्ट फ्रॉम दैट वो लोग ओवर एंड अबव अभी ये कर रहे हैं कि फीफा विमेंस क्लब वर्ल्ड कप भी वो लोग लॉन्च करेंगे. प्लस ऐसा फुटसल का भी Hmm. Yeah. विमेंस Correct. वर्ल्ड. Correct. हाँ Yeah. हाँ. सो दे विल इवन लॉन्च अ फीफा फुटसल विमेंस वर्ल्ड कप. सो ये सब चीजें भी वो लोग लॉन्च करेंगे. सो बेसिकली वही उन लोग को अपना रेवेन्यू बढ़ाना है. सो दैट इज व्हाई दे आर ट्राइंग टू डू ऑल ऑफ दिस. बट एज आई हैव बीन सेइंग मेरे हिसाब से लॉजिकली ग्लोबलाइजेशन के हिसाब से भी लाइक सी ये लोग as everyone becomes more and more money hungry right. What is Hmm. the next logical step? Next logical step यही है कि यूरोप से बाहर लेके जाओ टूर्नामेंट को Yeah, राइट. सो ज्यादा फैंस को चांस मिले देखने का एंड ऑल दैट राइट. दैट्स द होल लॉजिक बिहाइंड इट right. yeah, So the game becomes more accessible, more people watch it, more teams, more and more new teams will also come. मतलब ऐसे या वैसे right. भले ही यूरोपियन टीम्स डोमिनेट करे बट उनके साथ जो कभी ना कभी इवेंचुअली तो अगर ये फॉर्मेट सक्सेसफुल रहता है एंड विद द वे Hmm. द गेम इज प्रोग्रेसिंग इवेंचुअली थोड़े बहुत अफ्रीकन एशियन टीम्स भी तो आ ही जाएंगे. साउथ अमेरिकन टीम्स भी आ ही जाएंगे. सो देखते हैं. आई मीन ऑब्वियसली मैं तो एकदम ही लॉन्ग टर्म व्यू की बात कर रहा हूँ बिकॉज जो करंट फॉर्मेट है उसमें तो कुछ देर इज नो रियल मतलब उतना कुछ एक्साइटमेंट नहीं है. सो आई एम जस्ट लुकिंग एट इट एज हाउ इट वुड वर्क. सो वो चीज है. सो दे आर सेइंग के दे विल रीस्ट्रक्चर द इंटायर कैलेंडर एज वेल 2025 Hmm. से. फुटबॉल का Hmm. कैलेंडर ही वो लोग रीस्ट्रक्चर कर देंगे पूरा. Wow. सो वो सब सही चीजें है. हैं. लेट्स से या Wow. Just we are आई into रिमेम्बर the मैं 90th minute. Yeah. आई रिमेम्बर कि Yeah. Go on. फीफा जब व्हेन आई यूज्ड टू प्ले फीफा ना बहुत टाइम मैं उसमें ऐसा वो Oh, okay. मैनुअल Hold टूर्नामेंट on. जाके Hold on. It's क्या हुआ. official. It's done. Fabrizio क्या Romano just Gakpo. tweeted Cody Oh Gakpo to fuck. Liverpool. Here we go. The deal has been signed between two clubs. Gakpo will travel to England in next days to undergo medical test and then sign the contract. Oh fuck. my भाई days. माँ भाई कसम. साहब यार भाई खत्म ही कर दिया विद इन 10 minutes दिस ट्रांसफर गॉट डन. Hmm. हाँ लिटरली लाइक लिटरली 10 minutes. हम लोग इधर बात कर रहे लाइक हम लोग इधर बैठे हैं. Hmm. हम लोग बात कर रहे Yeah. कि भाई यार यूनाइटेड का ये है वो है. अचानक से लिवरपूल का आया कि दे आर इन पोल पोजीशन और 10 मिनट में मेडिकल और अब तो कंफर्म हियर वी गो भी आ गया रोमानो का. मतलब भाई सीरियसली अमेजिंग अमेजिंग सेटअप. मतलब वो लोग का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है लिवरपूल का. Yeah. Plus सो Klopp. या हाँ Plus क्लॉप तो Klopp. है. या Klopp is a factor, no? क्लॉप इज अ फैक्टर यस. सो अगर Hmm. तू मुझे ये बोलता ना कि क्लॉप की वजह से वो आया आई वुड हैव अग्रीड नॉट वैन डाइक बट नहीं वैन हाल की वजह से भी हो सकता है बिकॉज वैन हाल हैज दैट नहीं प्रॉब्लम भाई, विद. नहीं भाई, नहीं it's not Vanal. It's not इट्स Vanal. नॉट वैन It's गार्ड. like I said, it's about which व्हिच club क्लब showing वांट्स यू intent मोर. to हाँ wants him more and the हाँ showing him the एग्जैक्टली. project and United का हाँ project नहीं रहेगा इतना अच्छा, maybe United ने interest नहीं दिखा रहेगा. यूनाइटेड का they're not प्रोजेक्ट ही showing नहीं है. that intent. हाँ, they are not showing any intentions ना. तो हम्म. जहाँ पे तेरा डिमांड ज्यादा रहेगा, जहाँ पे तेरे को वैल्यू करेंगे, तू वही जाएगा ना. वही जाएगा एग्जैक्टली. हम्म. अभी बता रहे हैं रियल मैड्रिड विल नॉट मेक अ मूव फॉर किलियन एम्बापे इफ द प्लेयर इवन वांट्स टू फोर्स अ मूव. द डोर हैज ये बीन सब क्लोज्ड इन नहीं. फ्रंट ऑफ हिम. कौन बोल रही है?
मार्का. नो आई डोंट थिंक, आई थिंक हम्म, किलियन एम्बापे जाएगा रियल मैड्रिड, आज नहीं तो कल डेफिनेटली जाएगा। वो कभी ना कभी तो मैड्रिड ही जाएगा, बट ही विल गो मेरे को टू तो मजा आ मैड्रिड। जाएगा, मेरे को ज्यादा मजा आ जाएगा वी कम्स टू बारसा. हाँ, ऑब्वियसली बारसा आएगा तो तुझे मजा ही आएगा ना, यू आर अ बारसा फैन। बट Because this, I mean, this has hardly this has ever happened. Like someone has क्या? rejected Madrid and joined Barca. हाँ, वो तो है, वो बात है, बट द थिंग इज के हाँ, मतलब यू कैन मेंशन द फैक्ट के जिस हिसाब से हम्म मैड्रिड को एम्बापे ने लास्ट सीजन खेला, वो एक चीज थी, Yeah, नो डाउट, बट देन एट द सेम टाइम सी, एम्बापे ने तो पब्लिकली बार बार बोला ही है कि भाई मैं जाऊंगा तो मैड्रिड ही जाऊंगा। सो yeah, इवन राइट नाउ जब भी वो लोग ने इसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन साइन किया, वो लोग को खुद को हम्म, पता है, दे आर एक्सेप्टिंग ऑफ द फैक्ट कि इसको ये मैड्रिड आज नहीं तो कल जाएगा, बट जाएगा सिर्फ जाएगा अभी के करेक्ट। लिए रखा है। और ये 2022 का जो ईयर है वो कतर के लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट था करके वो लोगों ने रखा। अभी मतलब बहुत लोग यही क्वेश्चन कर रहे हैं कि अभी 2022 वर्ल्ड कप हो गया तो कतर अगर पीएसजी को बेच भी दे तो इट डजंट मैटर टू देम, बिकॉज वो लोग का मेन थिंग वाज द वर्ल्ड कप, राइट? तो वो एक चीज हो गई yeah. है अब। सो विल दे That's कंटिन्यू true. रनिंग पीएसजी like Man City are doing, or will they actually sell it off? So We that's don't up to know. them now. हाँ, Because पैसा सबसे ज्यादा तो वही ला रहा है. Because Nasser Al कौन? Khelafi तो he is the what do you call UEFA chairman or something ना. हाँ, हम्म, यूएफए नहीं, ईसीए का चेयरमैन है वो, ईसीए हाँ. अच्छा यूरोपियन क्लब एसोसिएशन So he का। must be नाइस bringing a सेव lot of बाय money. रैमस्टेल, क्या क्या? नाइस He सेव क्या must बाय be. बोल रहा? रैमस्टेल। So हाँ, more details on Gakpo deal. Liverpool have signed Cody Gakpo from BN. The deal has been signed between tonight with two. Gakpo will sign long-term deal later this week as the contract is fully agreed. Liverpool will pay 37 million pounds plus add-ons up to 50 million potential package. oh, Wow, वाह, wow. नाइस, वेरी नाइस। As as Arsenal closing in for another 3 points, they have been या, fantastic. And if they don't get, see, if I'll say this, if they don't have injuries, if they don't have suspensions, and if they end up getting a couple of players, I think एक तो ऑलरेडी उन्होंने साइन कर दिया है यूक्रेनियन विंगर म्यूजिक करके, बहुत ही टंग नेम है, Yeah. दैट्स ऑलमोस्ट डन। And if they end up getting Jao Felix, then maybe Arsenal can topple Man City. So I wouldn't count them completely out. Yes, Man City are favorites still, but Arsenal, if they can keep their injuries and suspensions in check and get the desired players required, I'm sure we are in for a very good title run for Arsenal. लेट्स सी। I think that's full time. It's Arsenal या, 3 points. What a comeback! They were down 1-0, and then to score those 3 goals in second half, it is brilliant. गुड गेम बाय आर्सेनल, या, Good game. एग्जैक्टली। सो मतलब ये PSV Eind- PSV Eindhoven have officially confirmed that they have an agreement with Liverpool. अमेजिंग, तो मतलब अभी ब्यूटीफुल। डियोगो जोटा को निकाल देंगे मतलब लिवरपूल. नहीं, फर्मीनियो जाएगा, बोला ना, फर्मीनियो जाएगा। ये उनको दो तो प्लेयर तो अपलोड करना ही पड़ेगा यार उनको. हम्म, नहीं, एक तो माने तो गया समर में, माने गया हम्म, समर में, एंड देन अभी फर्मीनियो जाएगा। एंड देन दे हैव, अभी कौन है उनके पास टॉप फ्रंट थ्री में, 3 पोजीशन के लिए 6 प्लेयर उनके पास, साला, हम्म. डार्विन न्यूनेस, लुइस डियास, जोटा, एंड देन दिस गैक्पो, 5 प्लेयर्स फॉर 3 पोजीशंस, व्हिच इज डिसेंट। उतना तो चाहिए भाई, उतना तो यू हम्म. वांट। एंड देन दे हैव दैट स्ट्राइकर फैबियो कावालियो, छठवा। करवा लिया. Yeah, अनदर so पोर्चुगीज they गाय have या. they have good players. नाइस, चलो अच्छा है यार, और क्या, Hmm. क्या ही करेंगे Hmm. अभी। हवन करेंगे. विल जस्ट टू वेट। हाँ, हवन हवा, करेंगे अभी. इतने सालों से हवन किया तब जाके आज ग्लेजर्स बेचने को Hmm. तैयार हुआ है। अब देखते हैं क्या होगा, तब तक हम कुछ Yeah. भी नहीं कर सकते, तब तक हमें ये जुल्म सहते रहना होगा।
मुझे वो प्रियंका चोपड़ा वाला वो मीम याद आ रहा है, और हमें कितना Hmm. जलील करोगे। We last window we could have had Luis Diaz. This window we could have got Cody Gakpo. Two fantastic players, but we couldn't sign. We were not Hmm. decisive, man. That's where we are. I'm telling you, I'm writing this Hmm. very soon by the before the January transfer window ends. Memphis defied to Manchester, and here we go. That is Hmm. definitely going to happen. I'm telling you this because he's Dutch. Eric Ten Hag doesn't have any other option. He will definitely move for this player. मैं लिख के देता हूँ here we go होने वाला है and United will maybe get a right back on loan. कोई वाहियात सा right back लेंगे and Yeah. they will we will see John Muta and another couple of guys saying our focus has always been on the summer transfer window. We never focus on January transfer window. We want to sign Yeah. Hmm. players. We always this that and all that rubbish. Yeah, exactly. Uh, let's see, man. I'm very disappointed and very depressed to hear Yeah. this. Anyway, it's been Anyways, nice guys, talking to all of nice. you, Yeah. Yeah. to all Mega our watch viewers as along well. successfully Yeah, completed. yes, exactly. This Almost yeah. 5 hours. Tomorrow we have a big game. So I think 1:30 Hmm. United and Nottingham Forest Yep. will be going live for the watch along. Thank you guys for Yes. joining in. Thank you Agrim bhai. Thank you Prashant. Make sure to Yep. Welcome. subscribe to our channel, guys. Smash a like on the video. We'll see you tomorrow. Good night. Take care. Bye. Good night, boys. Bye. Good night. Bye. Good night.